today Chess Olympiad Budapest 2024 एंड आज मैचअप बहुत बहुत तगड़ा होने वाला है। जैसा आप रेटिंग से देख रहे होंगे कि ओपोनेंट के प्लेयर नेम्स के आगे भी 2700 रेटिंग लिखी हुई है। वेलकम साज भाई, वेलकम राकेश भाई। क्या लग रहा है आज भाई, आज क्या वही ट्रेन चलती रहेगी, क्या कोई ब्रेक लग सकता है? हेलो 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 एवरीवन। भाई आज का दिन काफी टफ होने वाला है आई फील, बिकॉज जो अपोजिंग टीम है, ऑन पेपर ऑफ कोर्स दे आर अ बिट वीकर, बट लेकिन आई थिंक ईच प्लेयर इज वेरी 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 डेंजरस। हर बोर्ड पे आई थिंक आज थोड़ा रिस्क होने वाला है। तो इट्स गोना बी अ फन राउंड टू सी। इट्स गोना बी फन टू सी हाउ आवर प्लेयर्स मैच अप, to this I believe underrated team. What do you think, Rakesh bhai? जी बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट फॉर टीम इंडिया सो फार। एंड आप देख सकते हैं, जैसे टिको भाई ने बोला, एक 2700 प्लेयर है और प्रेड के जो बोर्ड वन पे है गुकेश के साथ, वो भी फॉर्मर 2700 प्लेयर रह चुका है, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द कस्प ऑफ 2700। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। एंड देयर यू हैव इट, पेयरिंग्स गुकेश वर्सेस अलेक्जेंडर प्रेडके। अगर आपको याद होगा तो प्रेडके को हराया था विदित ने टू विन द ग्रैंड फिफ्थ इन द लास्ट राउंड। Prag will play Alexis Sarana, Olympic esports gold medalist, and a very, very strong player, migrated from Russia recently. And board 3 and 4 में है सहज के अच्छे दोस्त। तो सहज, can you tell us more about Arjun's opponent, please? Yes, Arjun ka opponent is, I believe, the tallest grandmaster in the world, and he was a former roommate of mine, Alexander Ingic. I think a very very fearless player and very very aggressive player. तो इस बोर्ड पे ना, मतलब I can almost guarantee कि इस बोर्ड पे आज आग लगने वाली है, because we know how aggressive Arjun is, and I can tell you कि Ingic is almost, if not the same, just as aggressive, maybe even more. वाओ, And तो भाई क्रेजी होने वाला है। एंड ऑल्सो बोर्ड 4 पे विदित, सो विदित प्लेइंग अगेन, अर्जुन प्लेइंग अगेन, सो नो रेस्ट फॉर ईदर ऑफ देम। हरी को रेस्ट दिया गया है। एंड ये वेलिमीर जो प्लेयर है, ये भी बड़ी क्रिएटिव प्लेयर है। तो सर्बिया की टीम काफी काफी स्ट्रांग होने वाली है। एंड राकेश भाई, आज हमारे पास वाइट है प्रग और विदित के पास। कल थे गुकेश और अर्जुन एंड बोथ स्ट्रक। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इट इज बाय जीएम साहज ग्रोवर एंड 2 into जीएम साहज ग्रोवर। I mean, you can already see like how tall this guy is. By the way, this picture was taken in, I think, 2015 US में खींची गई थी, inside of some Walmart, and you can already see कि, how tall this guy is. I believe he's the tallest. I think it's between him and Joe, I think, and Nielsen. I think it's between these two players who are the tallest GMs. मैंने कभी उनको साथ में नहीं देखा, तो I can't guarantee who it is. But yeah, very very, it's going to be an exciting match, guys. या इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग चैट। बहुत सही सेट है हम लोग, आज बड़ा मजा आने वाला है। नीरी भाई, ओपन सेक्शन में तो एक खतरनाक मैच होने वाला है। जल्दी से वुमेन सेक्शन भी दिखा दो, क्योंकि वहां भी कंपटीशन स्ट्रॉन्गर हो चुका है। हमने देखा कैसे एक गेम हम कल हारे, एंड आज भी टफ कंपटीशन है। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट मैच ऑन एनी बोर्ड, बट वी डोंट हैव एनी इजी मैचेस एनी मोर एट ऑल। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 100 पॉइंट रफली, ऐसे 120 पॉइंट का डिफरेंस है मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड्स में। एंड जहां जहां ब्लैक है, वहां पे इट वुड टेक्निकली बी इवनली मैच। राकेश भाई, क्या लग रहा है कि मतलब यहाँ पे तो इट्स गेटिंग वेरी क्लोज नाउ? बिल्कुल, जैसे मैंने ओपन सेक्शन में बोला, दिस इज द रियल टेस्ट, लाइक फर्स्ट बिग टेस्ट फॉर द इंडियन वुमेन। एंड बट थोड़े फन फैक्ट्स लेके आए होमवर्क के साथ कि इंडियन टीम लीड्स 4-1 अगेंस्ट फ्रांस एंड 5 ड्रॉ भी हुए इन ओलंपियाड्स ओवरऑल। एंड गुड न्यूज है टिकू भाई कि पिछले ओलंपियाड चेन्नई में इंडिया हैड बीटन फ्रांस, एंड तभी बोर्ड 4 पे तानिया सचदेव जीती थी। वाओ, And that वाओ। is another reason why we see her playing instead of Vantika, I feel, Sahaj. Could be, could be. I think that's a very fair point. I think Tanya is a very solid player. So Black, I think she's more than capable of taking this player. Although I'm not sure I've ever heard of this name before. Is she from France, or does she move from somewhere else, Rakesh bhai? No, she is from France, plays a little bit of rugby also on the side, and Wow. yeah, and mainly plays French leagues and Gibraltar Open तो many times, फ्रेंच and डिफेंस not a very भी खेलती है? professional player.
वो नहीं पता बट नॉट अ वेरी प्रोफेशनल प्लेयर कंपेयर टू द अदर्स. एंड चैट में लोग लिख रहे हैं कि भाई सर्बिया से है कि फ्रांस से. भाई ओपन सेक्शन में है सर्बिया से, वुमेन्स में है फ्रांस में, लेकिन जीतना तो दोनों जगह ही है. अरे बड़ा मजा आने वाला है. देयर यू हैव इट, देयर यू सी इंडेक्स. देखो कितना लंबा है बंदा, व्हाइट अरे शर्ट में बाप रे. जिसने हाथ मिला. Yeah. अच्छा, नाइस. क्योंकि उसके बाद तो बैठा हुआ दिखेगा ना, तो नाइस. I'm नाइस फॉर I'm almost 100% sure that he is the tallest guy in the whole tournament hall. He must be. This guy is like Among almost 6'9", 6'10", something like that. among the players maybe, at least. I think probably among the, but I can't. I in my life I have not seen a person taller than him. Like so, so this is just a chess hall. You know, मैं कह रहा हूँ, outside of chess also I don't think I've seen a person taller than him. You know, so of course I've never met any basketball players, so I can't. Of course, you know, I'm assuming though they are taller, but yeah, I think in तेज भाई आप ग्रेट खली से भी नहीं मिले इसके. हाँ, Great Khali would be taller than him. Yeah, Great Khali would be taller than him. That's Look for at sure. that guy. Look at that guy. How tall is he, man? अभी just left से चल के गया, man. So सहज भाई, any more insights on this former roommate of yours? Sorry, Tikku bhai. You know, I stayed with him for about a year and a half. We actually worked quite a bit together as well. Actually, abhi kabhi also we work from time to time. As I said, you know, he's a very aggressive player. You know, and another thing is he's fearless. Like उसको फर्क नहीं पड़ता सामने मैग्नस बैठा हो, सामने कोई भी बैठा हो. He just plays, you know, he just plays. It's like एकदम ताल की तरह खेलता है. You know, if I could call him the modern ताल, that would be pretty appropriate. क्योंकि many times, you know, जब ये sacrifice की बात होती है ना, they also sometimes can be a bit questionable, so to speak, like so to speak. So, you know, but because of his, because of that psychological element, they actually work most of the times, you know. But I would be very excited to see कि, you know, कि अर्जुन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि उस गेम पे आग लगेगी 100%. मतलब बोर्ड 3 पे तो रिजल्ट फिक्स है टिक्कू भाई. भाई रिजल्ट तो फिक्स है, बट हमारे फेवर में होना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड मेरा पॉइंट ये था कि भाई कमिंग टू द हाइट एंड नॉट नेसेसरी द हाइट हियर, अगर कोई आपका ओपोनेंट फिजिकली ऐसे, यू नो, ही इज वेरी बिल्ट ऐसे, यू नो, मतलब, तो डज इट पुट सम एक्स्ट्रा साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन यू कि यार गलती से आ दिया तो भाई मुक्का ना पड़ जाए भाई. इन जनरल इन चेस, नॉट हियर ऑफ कोर्स एट द ओलंपियाड, ऐसा कोई प्रेशर पड़ता है क्या सहज भाई? I would assume पड़ता होगा, but लेकिन I know in just personally, and he's like, I think one of the kindest persons also that I've met in my life. Like he's if there is a word, you know, gentle giant, you know, that's what I would call him. कभी I mean गुस्सा तो दूर किया, मैंने उसको कभी मतलब I have never even you know, seen him raise his voice or, you know, be angry at anything. There we see Caruana move in. Yeah, sorry, continue Sajid. Yeah. Caruana कहाँ दिख गया आपको? अभी क्या सामने से गया भाई, वॉक करते करते भाई. Oh, नजर that's रखा था nice. इंडियन. हाँ, ये गया भाई. Oh, there we go. वापस. By the way, ऐसे सुनने में आ रहा है we have an almost on time start. So 3:02 पे गेम शुरू हो गए लोकल टाइम. So we should have the games very soon. I'll tell you why. क्योंकि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है यहाँ पे. सुबह से there hasn't been rain, and also अब, you know, कल it was 9 degrees here. It was 9 degrees, and I think now it feels like it's back to 20. मतलब you can see I'm in a shirt. I mean it feels really hot again. It's like weather ऐसे change हो रहा है ना यहाँ पे. It's a bit crazy. मुझे लगता है आज रात also it's going to be a bit cold, but still the weather is a lot better. टू अपडेट्स निरी भाई, वो आई थिंक ऊपर दोनों कैमरा सेम है, सो वो बेन शपीरो मुझे लग रहे हैं शायद बोर्ड 1 पे, तो वो एक कैमरा चेंज कर दीजिए. एंड दूसरा पॉइंट ये है कि मैग्नस कार्लसन आज टाइम पे आए होंगे फॉर श्योर, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है. एंड निरी भाई हमें जरूर बताना कि हमारे पास उनके कैमरास है कि नहीं. वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड यू कैन सी चैट प्रग सिटिंग एट द बोर्ड, पीसेस एडजस्ट हो रहे हैं. गुकेश, विदित और अर्जुन कहाँ है भाई? जल्दी से आ जाओ यार. या टिको भाई बिल्कुल सही. द सर्बिया टीम इज रेडी, और देखते हैं कि क्या हमारे बाकी के 3 दिग्गज सितारे पहुंचेंगे जल्दी बोर्ड पर. ओके चैट, इट्स टाइम फॉर द, यू नो, ड्रेडेड प्रेडिक्शंस. आई थिंक हमारे पास काफी टफ चैलेंजेस है. पहले करते हैं भाई वुमेन सेक्शन की प्रेडिक्शन. चैट जल्दी से बताओ, हर बोर्ड पे वी आर रफली ऑन एवरेज 120 पॉइंट्स हायर. क्या लग रहा है फाइनल स्कोर होगा? कल हमारा स्कोर था 3-1. सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन सहज भाई फॉर द वुमेन सेक्शन? I would say
3-1 या 2.5, 1.5. I would say 3-1 या 2.5, 1.5. I think yeah, it's very much possible 3 जगह draw और 1 जगह पे हमारा एक player मार दे. That's the feeling I'm getting. And what about you guys? देखो, अरे I would say कि यार I think ये women's कैमरा है क्या? ऐसे वो बोल रहे थे एक दूसरे को. I think I will go with 2.5, 1.5. I think this might be a bit tough because France team is also a strong one and experienced one. I think I know a couple of players, तो मेरे को लग रहा है कि 2.5, 1.5 होगा. राकेश भाई, what do you think? I think correct. I agree. 2.5, 1.5. Again, repeating the score from Chennai 2022. जो भी board 4 पे तानिया जीती थी. This time she's playing with black, so I'm not sure कि अगर वो जीतेगी, but definitely India is going to win भाई. India तो जीतने वाला women section में guarantee. हाँ, absolutely. And chat भी कह रही है, chat तो 4-0 से कम. chat यार आधा पॉइंट तो किसी को कभी दे दिया करो यार, मतलब बेचारा बड़ा भगवान सुनेगा भी कहेगा वो इग्नोर कर देगा भाई. यार कभी तो पॉइंट देना पड़ेगा ना भाई. So chat तो क्लियर है भाई, 3.5 half, 3-1, 4-0 चल रहा है and we will see quickly क्या होगा. And अब आते हैं ओपन सेक्शन में. chat हमारे पास टॉप 2 बोर्ड्स पे it's not even 100-point difference. In fact, second board पे तो it's like a 20-30 point difference. So chat top 2 board 2700 खेल रहे हैं on average. नीचे वाले दोनों बोर्ड 2600 खेल रहे हैं. तो क्या लग रहा है ओपन सेक्शन में फाइनल स्कोर क्या होगा? राकेश भाई, what do you think? I think I'm going with a 3-1 win for India. White piece is going to win. And look at with the bottom left corner of your screen. Look at the concentration वहां पे भाई. And Gukesh is in the form of his life, and I think वो प्रेडके को हरा देंगे. ऐसे मुझे लग रहा है क्योंकि प्रेडके का ना इंडियंस के साथ काफी खराब स्कोर रहा है. वैसे विदित से हारे थे ग्रैंड स्विस में. मैंने भी हराया था प्रेडके को व्हाइट पीसेस के साथ. गुकेश तो हरा ही देगा. Nice. अरे भाई, what a flex, भाई, what a flex. That's so cool. That is so cool. भाई राकेश ओपी हो जा भाई, प्रेडके को रहा है यार. Come on. Board 1 of Serbia, he has defeated him. That is huge. Riva, I can see Harika suddenly smiling. That's good news ना, मतलब she's I think one question to Saj bhai. She lost in the last round. So how easy or difficult it is to come back in a team tournament एक loss के बाद? I think a loss does affect you on a personal level, but I think if when you're that experienced, I mean, I think we discussed this, in our yesterday's stream. She has been playing the Olympiad since 2004, if I'm not mistaken, and 2000 से, I mean, that is a lot of Olympiads, राकेश भाई. हम तीनों यहाँ पे या चारों निधि भाई को पकड़ के सब अनरेटेड थे. तभी से हरिका जी ओलंपियाड खेल रही है. By the way, look at Arjun. Look at Arjun. Is this the new style of meditating? Intense style, भाई. This is like a खतरनाक style है meditate करने का है तो. Intense. अरे बाप रे भाई, important game. He knows the value of this game, chat. And just to point out, he's 2782. मतलब 2800 की तरफ बढ़ते हुए वो he's moving towards world number 3 and there it is, we have Gukesh coming in. jacket set हो चुका है, game भी set हो ही जाएगी. क्या बात है. And I think Saj, is that Dennis Kadrich with Indich पीछे background bottom left? Yes. Basically, the other roommate when we were in UT Dallas, he was not living with us, but he had like a flat, which was 5 minutes away from our house, so we used to hang out quite a lot. And they are very good friends, Indich and Kadrich, they are very, very good friends. So yeah, nicely spotted, bhai, nicely spotted. बढ़िया. And भाई Gukesh, will he? I think he's going to meditate. By the way, ये मीडिया वाले कुछ साइन ले रहे हैं ना उनका on some document, I'm guessing. प्रग से भी लिया था उन्होंने, and now टॉप लेफ्ट कॉर्नर गुकेश से ले रहे हैं. I think वो मेडल का वो फाइनल जर्सी का साइज ले रहे होंगे भाई, गोल्ड की जर्सी का वो हो सकता है पहले से तैयार कर होंगे. By the way, also on that note, we should also note के India is already winning the Olympiad. अगर हम टाई ब्रेक्स उठा के देखें तो इंडिया इज नंबर 1 बिकॉज वी आर द ओनली टीम ऑन 11.5 पॉइंट्स. बाकी सारी टीम के 10 है या 9 है बिकॉज देयर बोर्ड पॉइंट्स आर नॉट एज हाई. हमने अभी तक ओपन सेक्शन में सिर्फ एक आधा पॉइंट ड्रॉप किया है. सो टेक्निकली वी आर ऑलरेडी, अगर अभी उन्होंने बोल दिया कि ओलंपियाड बाइस बंद करो तो इंडिया इज ऑलरेडी वन. सो दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर अस. Yeah, and in fact I'm very curious, by the way.
टाई ब्रेक 1 इज द नंबर ऑफ मैच पॉइंट्स, सो वो 6 हैं बहुत टीमों के, सो इट इज एक्चुअली 16 टीम्स इन टोटल, एंड उसमें सर्बिया लास्ट है. दैट इज गुड न्यूज फॉर अस कि उनका टाई ब्रेक से कम है. बट टाई ब्रेक 2 इंडिया का 32 है, एंड देन इट इज 11.5, दैट इज टाई ब्रेक 3. सो जो टाई ब्रेक 2 32 दिखा रहा है, इज इट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑल द ओपोनेंट टीम्स हैव स्कोर्ड, राकेश भाई? Correct. So that's the second tie break, which is the Sonnenberger tie break. It's also like आपने जिस टीम को हराया, वो टीम जितना अच्छा करेगी उससे फर्क पड़ता है. नॉर्मल बुक कॉल्स आपने जिससे भी खेला, इसमें होता है कि आपने जिसको हराया वो टीम अच्छी करनी चाहिए. दैट इज द स्लाइट डिफरेंस. दैट इज अमेजिंग बिकॉज वहां पे इंडिया यूएस से 4 पॉइंट आगे है अभी. So 32 points for India, 28 for US and Uzbekistan, and अभी टॉप 4 टीम वही है चैट, इंडिया, यूएसए, उज्बेकिस्तान, चाइना. तो वही टीम्स धीरे धीरे के ऊपर आ रही हैं. तो क्रंच मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, एंड अब पता लगेगा कौन टॉप पे रहेगा. यू कैन सी द ओपोनेंट्स, दे आर मोटिवेटेड. इस टाइम पे नर्वसनेस थोड़ी कम दिख रही है एज कंपेयर टू यस्टरडे, एंड काफी स्ट्रॉन्ग टीम, जैसे साज भाई और राकेश ने बताया. तो बड़ा मजा आने वाला है. एंड साज भाई, आपने प्रेडिक्शन नहीं करी, सो क्या लगता है फाइनल स्कोर क्या रहेगा? It's a bit hard for me to say because this is a very this is the type of team that I would definitely watch out for. Charo board pe, even the board for Ivic Velimir, I think is an exceptional player. I would say he's a bit underrated also. Most मेरे को ऐसा लगता है ना, I've played in Serbia before, and I don't know Sahil bhai, I know you have also played there before, but मुझे एक general feeling आती है भाई कि Serbian players are generally underrated. Like उनका जो culture है ना, like I feel like they're very underrated. And Europe में I think Serbians are maybe one of the strongest countries, for me at least, अगर आप उनको as a whole देखो तो. So that's why I feel this is a pretty strong team. मुझे लगता है 2.5, 1.5 या फिर 3-1, one or the other. A win for it. Okay, I mean, they are strong, but हमारी team is like the Avengers. It's like we have the world championship challenger, we have the Magnus Slayer, then we have Arjun who's like world number 4, and then of course we have Vidit. I mean, इस team को आप there are no holes here, so of course I would still root for India here. And the point is, so यहाँ पे पॉइंट्स किस बोर्ड पे जा सकते हैं? इफ यू हैड टू मेक अ प्रेडिक्शन, लेट्स से 3-1, 2.5, 1.5, सो कौन से बोर्ड्स हैं जहां पे सर्बिया कुड पोटेंशियली विन और इवन जस्ट होल्ड अ ड्रॉ? आई वुड से ड्रॉ मुझे लगता है फर्स्ट बोर्ड पे काफी पॉसिबल है, एंड आई थिंक थर्ड बोर्ड पे काफी पॉसिबल है, एंड आई थिंक सेकंड बोर्ड पे भी पॉसिबल है. सेकंड बोर्ड पे भी पॉसिबल है. इट्स लाइक इट्स वेरी हार्ड टू से कि आज कहाँ पे क्या होगा, बिकॉज आई एम honestly I spent quite a bit of time thinking about this because मुझे पता था कि आज we will be discussing this at depth, and I am not sure. Although I should mention Injic has had a pretty bad score against Arjun head to head. I remember in Dubai, I was playing Dubai and Arjun was playing Dubai. I think Arjun won Dubai Open in 2022. And I was playing, and Injic was also playing. And उसके बाद एक अबू धाबी का event भी हुआ था. It was back to back. And दोनों events में Arjun managed to defeat Injic, but Arjun के उस time पे white pieces थे. And I also know कि Arjun has also defeated him in the World Blitz Championship जो 2023 में हुई थी. And जैसा आपने बताया राकेश भाई before the stream started कि he drew to him in the Dubai Open last year in 2023. So overall Arjun का score काफी अच्छा रहा है, but color उसके black हैं, तो I'm not sure what would happen here. True. And chat बताना चाहूंगा what Sahaj was saying, that Serbia की team काफी underrated है, and you might not expect them as favorites, but fun fact, 2023 के European team championship जीते थे सर्बिया, and टिकू भाई, it was the exact same board order जिसमें अभी बैठे हैं. So and we have moves. Yes, we have liftoff, and let's see it in action on camera, and then we will go board by board, and बहुत मजा आने वाला है. Chat, we are already at 1,000 people watching. The Olympiad is heating up. The chat is heating up. We are heating up. Player मजा आने वाला है, crazy होने वाला है. And we have liftoff. I think we have E4 by Pred Kielner, and Caro can choose किया है गुकेश ने. It is 1C6 Levi Rosman के course on sale right now. Crazy sales होने वाली है भाई. क्या चल रहा है भाई? Caro can
Just a second. I think Nidhi bhai, can we change the cams? Because I think we're not able to see the boards yet. Yes. Meanwhile, let's go to the boards. I think we have liftoff. We can see the first move being played. Women's section, maybe we have the first move being played. It's time to go to the cameras and let's take it game by game because बहुत important round है. Can't stress it enough. Chat एक बार just as usual हर दिन की तरह India OP spam हो जाए flag के साथ. Let's go chat as we go to the board. And there it is. Gukesh D playing 1c6. Saj bhai, maybe I've not seen enough games here, but I've not seen Gukesh play too much of Caro-Kann. Actually, good point. Neither have I. But we know Vidit is a Caro-Kann expert. तो कुछ वहां पे है कुछ. Do you think they collaborated on something? I think it's definitely possible because I don't remember Gukesh ever playing Caro-Kann before. I have to check this if he has, but I don't remember him playing Caro-Kann. Yeah, go ahead. Me neither, Sahaj bhai. And you see, Predke is already in the tank move on पे, क्योंकि वो सोच रहे भाई कि कौन सा सेटअप लूं, क्या मैं मेरी ओरिजिनल ओपनिंग खेलूं जिसके अगेंस्ट गुकेश तैयारी करके आया है, या कुछ अलग ट्राई करूं. बिल्कुल. And also we should inform the chat कि आग board 2 पे definitely लगेगी and we should definitely show what's going on there क्योंकि भाई वहां पे actually आग लगने वाली है. अरे बाप रे, ऐसा क्या हो गया भाई? सस्पेंस भाई Bishop G5 Sicilian Knight of Bishop G5. अरे बाप रे. This is the most like aggressive line we have in the Sicilian system. Although उसने A4 खेला तो this is something new. But like this is a very 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 sharp line. तो यहाँ पे मतलब बहुत crazy game होने वाला है. नीली भाई, प्रग का कैमरा लगाओ, मुझे ब्लैक के एक्सप्रेशन देखने हैं आफ्टर द pawn to A4 because as you said सहज भाई, I have not seen this move. यहाँ पे इनफैक्ट chess.com पे आज तक सिर्फ 49 गेम्स में pawn to A4 खेला गया है. So it's definitely not common. In fact, it is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th most popular move. First वाला 1600 गेम, 1500 गेम, 1200 गेम और ये भाई 50 मूव. राकेश भाई, लग रहा है कुछ तो नया प्रिपेयर करके आए प्रग भाई एंड डायरेक्ट प्रेप में जा चुके हैं यहाँ पे सराना जी. बिल्कुल. एंड यू कैन सी भाई प्रग चिलिंग एक दूसरे साइड पे देख रहा है एंड अभी कुछ ही देर में A4 खेलने वाला है एंड इट इज होम प्रेप. लुक एट हिम प्ले, लुक एट दैट A4 एंड सराना इज स्लाइटली कंफ्यूज्ड एंड हमको पता है क्योंकि क्लॉक में उसे काफी टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं. सो Predke and Sarana, board 1 and 2 में already I think India have won the small opening battle. Sahaj bhai. Sorry, please repeat that. I just got disconnected for a second there. मैं बोल रहा था कि Sarana and Predke already thinking. तो I think India के board 1 and 2 ने already वो opening battle जीत चुके हैं. Yes, of course. A4 is of course quite new here. I'm not sure what the idea is, maybe to not allow something like B5. And also, guys, I did a quick search and Gukesh has played Caro-Kann actually many times before. Oh. But the last time he played it was in the World Blitz Championship against Tomaszewski, a Russian grandmaster. And it didn't go his way, that specific game. But it doesn't look like he has played Caro-Kann this year. इस साल उसने Caro-Kann बिल्कुल भी नहीं खेली है. But this is the first time. So that has to be a surprise, right? वर्ल्ड चैंपियनशिप पे तो Caro-Kann नहीं होने वाली, ये पता लग गया भाई फिलहाल के लिए. So that is clear. And Manish भाई बिल्कुल सही. Kudos to Nidhi भाई for amazing work behind the scenes भाई. You know there are like at almost 100 cameras भाई, तो ढूंढना ही इतना मुश्किल काम है कि भाई किसकी शक्ल किस कैमरा के पीछे है कुछ पता नहीं है. एंड यहाँ पे ब्लैक को अगर हम यहाँ पे देखें प्रग के ओपोनेंट को, तो भाई वो कह रहा है मेरे से कैमरा हटाओ भाई, सोच दो मेरे चैन में भाई. He's out of prep already, ऐसा मुझे लग रहा है. Yeah, I think he is. A4 is a new idea, and I think, but of course, Sarana is an expert of the night off. So I don't think this is a move he doesn't know at all. It's just something he didn't prepare on the day. Yep. So Rakesh bhai, I think यहाँ पे कुछ crazy होने वाला है. Already crazy line, उसमें crazy new prep. So we'll see how this turns out. सराना जी एक लंबे think में जाने वाले हैं. So board 3 में जहां पे जैसा साजवा ने बताया आग तो वैसे ही लगने वाली है, तो देख के आते भाई आग की माचिस जली कि नहीं जली. अर्जुन वर्सेस इंडिच, जहां पे which opening is this? This is like some Reti system. ये reverse जुबावा है क्या?
of some sort. हाँ, रिवर्स छुपा हुआ। अर्जुन ने नाइट C6 खेल के सरप्राइज किया होगा, बट ऑल्सो वी शुड मेंशन कि इंडिच इज naturally a very fast player, yeah. Like I think he generally plays a lot on instinct. तो बहुत अच्छा चांस है कि कि he will make moves really quickly even if he's out of prep. It is possible. अच्छा ना, मतलब जल्दी हारेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक चीज है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही डज लुक कॉन्फिडेंट। आई हैव सीन नर्वसनेस का, बट ऐसा लग नहीं रहा कि हल्का सा भी नर्वस है। यू कैन सी द अग्रेसिवनेस फ्रॉम हिज, इवन विदाउट नोइंग ही इज हाउ टॉल ही इज, यू कैन सी द अग्रेसिवनेस ऑन हिज फेस। I'm telling you, he's one of the only players I know के one of the only players जिसको किसी से डर नहीं लगता कभी भी। Like it doesn't matter उसके सामने कौन बैठा हो, he has full confidence in him. So that's what makes him so dangerous. I've actually played him, a few times myself. And वो एक बार वर्ल्ड जूनियर में हमारा मैच हुआ था, and I remember it was 2012 I believe, final round. And यहाँ पे मैंने अपना लास्ट जीएम नॉम किया था, उसके बाद का मैच है ये। तो and I found this crazy novelty with black pieces, and I had a great position, but he just kept playing so calmly and so fast at the same time, and I got destroyed. I absolutely got destroyed in like 25 moves. आप सोचो साहिल भाई, मैंने नोवेल्टी खेली है, तो कुछ तो on move 11, move 12, something like that. Never, and he's thinking, and he calmly just refutes it over the board. It was so like impressive. Yep. सर्बिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, एंड वी कैन सी नाइट H4 ऑन द बोर्ड। हमारे बिशप पेयर की तरफ पीछे भाग रहे हैं, एंड साहज एंड राकेश भाई वुड लव टू नो, क्योंकि प्लेइंग द लंदन भाई ऐसे स्ट्रक्चर ना बड़े पसंद आते हैं, जहां बिशप मिल जाए, फिर दो बिशप से खेले मस्त नाइट H4। तो यहाँ क्या objectively this is slightly worse for black or not, or is it just my London bias talking? I think this is a bit like I think this is a very offbeat position. I am not even sure कि यहाँ पे किस कौन better है. I just know that this is very very offbeat, very very uncomfortable for anybody who doesn't know how to play it. So next few moves would decide that. I know Bar is saying 0.4, and Bar doesn't lie, we know that. But I think from the looks of Arjun, he seems to still be in prep. Uska time na, he had 131, 132, something like that before this move was played. So I think this is probably the moment where he is out of prep. But abhi tak he was in prep, so I think he's playing the best moves so far. Will be a very by the way, match. fun fact, we'll very soon go there after Vidit's game. But Vaishali is also playing the same line as Arjun. ये पोजीशन जो है उसने भी नाइट B4 बिशप F5 खेला हुआ था। सो सहज भाई, क्या ऐसे हो सकता है इंडियन मेन एंड वुमेन टीम साथ में तैयारी कर रहे थे ये गेम के पहले? I'm not sure, but I wouldn't think so, because it's like against this team, I think the players would have to work, with their seconds. We know there are so many there. So Yeah. I'm not sure if they would be working together, because I think they are used to working by themselves also. But True, yeah, true. It's a nice coincidence. Yeah, nice coincidence though. Nice coincidence though, yeah. And chat, एक बार विदित गेम पे नजर मार के आते हैं जल्दी से। द फोर्थ बोर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम। विदित ड्रू यस्टरडे, आज वो फुल फोर्स से कोशिश करेंगे विन करने के लिए, बिकॉज ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइट पीसेस। तो हल्का से एक एडिशनल प्रेशर फील होता है कि यार आई एम 100 पॉइंट्स हायर रेटेड, आई हैव द वाइट पीसेस, तो आज तो जीतना पड़ेगा ही। तो ये पोजीशन काफी आइसोलेटेड पॉइंट से जब मैं देखता हूं ना, तो लगता है भाई कुछ तो होगा क्रेजी। क्या लग रहा है साहज भाई इस पोजीशन को देख के? यार मतलब आई लव दिस पोजीशन फॉर व्हाइट। Yeah, isolated queen pawn. Usually, we say it's a bad thing, but it's not. It has its benefits. It has its disadvantages. Of course, disadvantage ये है कि भाई आपका isolated pawn है. That's very obvious. But लेकिन benefit ये है कि isolated pawn के साथ साथ आपके pieces बड़े active हो जाते हैं. So look at your bishop on c4, your knight on c3, knight on f3. सारे pieces एकदम बढ़िया से बाहर आते हैं. So you get a lot of activity, which is part of your compensation. एक छोटा सा मुझे जो drawback इस पोजीशन में दिखता है वो ये कि white का जो pawn है वो a4 पे है. If that pawn was on a3, it would be a bit better for white. क्योंकि आप जैसा आपने अभी arrows में दिखाया, knight b4, knight d5 करके, black can sort of put a hold on that isolated pawn. तो इसलिए वो pawn a3 पे होना चाहिए था. But I don't think this is probably part of the preparation for Vidit as well. So I think we are still in the game. Yep. Yeah. By the way, fun fact and good news for all Carlsen fans. टाइम पे आ चुके हैं, कार्लसन पहुंच चुके हैं, एंड बट उनके अपोनेंट लेट थे आज।
So everything's happening at the Olympiad. क्या बात है, अरे क्या नाइस बात है। नाइस। वो लेट मतलब क्या वो भी बाइक लेके आ रहा था या व्हाट वाज द केस? वो नहीं पता अभी, भाई इतने ये तो खबरी नहीं है। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस, ये तो कॉन्शियसली हुआ है भाई, 100% कॉन्शियसली किया गया है भाई कि 2 मिनट लेट जाऊंगा मैं। भाई प्लग डिड अ ब्लंडर, नहीं नहीं आई डोंट थिंक प्लग कोई भाई, प्लग ने तो A4 खेला है भाई। आई थिंक ओपोनेंट अभी सोच ही रहा होगा। तो एक काम करते हैं, एक नजर मार के आते हैं वुमेन सेक्शन को भी, उनकी ओपनिंग मूव्स को भी देखते हैं वैशाली ने एक्चुअली से ओपनिंग खेली है कि नहीं, एंड देन वील जंप बैक टू गुकेश's गेम। सो वील स्टार्ट विद हरिका अगेंस्ट डिमांटे, इफ आई एम प्रोनाउंस दैट करेक्टली, एंड ये करंट पोजीशन है। साज भाई क्या लग रहा है इस पोजीशन में? अभी तो आई थिंक इट्स अर्ली डेज या Yeah. I believe we saw this exact position कब 2-3 दिन अभी like yesterday, was it yesterday? कल कल yes yes कल Like, अगेंस्ट Kosteniuk, yeah. Kosteniuk and Harika. Yeah. So Harika is playing the exact same position with the white pieces. Yeah, I mean, again, the idea is same, Queen B8, Queen A7 wala idea. And I think, but I think the good news is that Harika is very well prepared for this now, because I'm sure she would have checked that game in depth. By ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। एंड डिएमेंटे डॉलेट, फॉर्मर लिथुएनियन चैंपियन, अभी फ्रांस के लिए खेल रही है आफ्टर शी मैरिड ग्रैंड मास्टर मैथ्यू कॉर्नेट, सहज भाई। right. Matthew Cornet, the 2600 grandmaster from France, and I think she moved a very recent. Is she actually from France as well, or did she move from another federation? मूव फ्रॉम लिथुएनिया। Born from Lithuania. Got it. That's quite cool. भाई second game पे चले? बिल्कुल। चैट पे कोई कह रहा है दिया विनिंग, आई डोंट नो दिया किस बोर्ड पे खेल रही है, बट आई विल गेट टू दियाज बोर्ड सून। फिलहाल के लिए दिव्या वैशाली दिव्या की बोर्ड पे जाते हैं। दिस इज वेयर वी हैव द सेम ओपनिंग जो हमने अर्जुन की गेम में देखी, नाइट B4, नाइट A3, बिशप E7, बस नाइट E5 खेला गया है इंस्टेड ऑफ द नाइट H4 आइडिया यहाँ पे, एंड ये है करंट पोजीशन। साज भाई व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? Sahil, first of all, knight h4 उधर possible नहीं था. That's why she played हाँ bishop e7, to avoid ताकि bishop h4 मर रहा था. हाँ And knight हाँ f6 आता तो शायद knight h4 वो खेल सकती थी. Maybe that was हाँ the preparation there. But yeah, I mean, looks quite interesting. बड़ी offbeat सी feeling आ रही है आज दोनों games में. जब भी ये position रहती है ना, ऐसा लगता है कि white can play on the queen side with c3, queen b3, just like इंजिश के game पे जैसा हुआ. And also there is a possibility कि हम g4 h4 करके कुछ bishop पे attack कर सकते हैं. Not immediately, it's not happening immediately, but it can happen in the future. तो it's like white दोनों side से खेल सकता है, तो it can be quite an interesting game. या राकेश भाई, लेकिन यहाँ पे डू यू थिंक कि यहाँ पे कोई सरप्राइज हुआ है इस पोजीशन में, तो व्हाइट या ब्लैक कोई भी? नॉट रियली। आई थिंक दोनों वैशाली के माइंड में था ऐसे ही ये ओपनिंग खेलनी है, एंड नाउ आई फील बोथ प्लेयर्स आर ऑन देयर ओन। मतलब तैयारी खत्म हो गई है, अभी ओरिजिनल गेम देखने मिलेगा टिको में। एंड चैट ये भी बहुत मजा आएगा। वील आल्सो कंपेयर इट टू द अर्जुन गेम, हाउ इट गोस, कैसी डायरेक्शन में जाता है। एक बार चलते हैं दिव्या की गेम में। कोई कह रहा था दिव्या इज विनिंग, आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल सो क्विकली। सिसिलियन डिफेंस, और ये तो मजा आएगा। A6 bishop E2, calm variation, but maybe it's not so calm after F4 and F5. भाई लाइस का बिशप मिल चुका है सहज भाई, मतलब ये तो इट्स अ गुड स्टार्ट। Yeah, looks like a very good shot. By the way, a fun fact about Mitra, she's originally from Iran, and then she moved to France, I think about some 3-4 years ago. I can't remember the exact time, but actually she studied programming in French. Wow. Oh, okay. So she learned a different language, and she learned programming in that language, and now she has graduated. I mean, Wow. that's a very, very cool thing to do. Imagine learning programming in a different language. That's insane, I think, to me. Very very cool. Yup. So ये गेम में बहुत मजा आने वाला है चैट। वी कैन सी दिव्या हैज फुल टाइम ऑन अ क्लॉक, तो प्रिपेयर्ड है, एंड दिस इज ग्रेट न्यूज। यहाँ पे विक्ट्री बहुत जरूरी व्हाइट पीसेस से। एंड फाइनली वी हैव तानिया सचदेव कमिंग बैक इनटू द टीम, एंड एक और सिसिलियन डिफेंस। एंड साज भाई क्या लग रहा है? ओह वेट, समय यही खेलता है कि नहीं खेलता, और इज दैट अ डिफरेंट ओपनिंग? ओह नो, दैट्स डायरेक्टली A6 राइट? yeah, my bad. So we have this डायरेक्ट ऐसे opening now. उसमें ट्रैप रहता है ना, इसलिए हाँ दिस इज कॉल्ड सिसिलियन कान. कान गैम्बिट यूज करना पड़ेगा आज मोस्ट लाइकली. अरे शुभ भाई शुभ हमारे बोलो यार, भाई ये राउंड के जमा होते हैं क्या आगे के लिए? भाई क्या सिस्टम है आपके कान का? मतलब कैन वी यूज द वंस यू हैव नॉट यूज्ड इन द फ्यूचर राउंड्स?
भाई हर रोज डेली एक का होता है, आप स्टोर पे थोड़ी ना रख सकते हो यार, स्टोर यू कांट स्टोर द कान, यू हैव टू यूज इट डेली, डेली का एक और रहता है हर गेम में, वी कैन यूज इट। सो या, एंड सिसिलियन कान आज तो ऑलरेडी गेम पे आ चुकी है, तो आई हाँ थिंक दिस इज अ साइन गाइस, दिस इज डेफिनेटली अ साइन। या And in a very normal looking position, नताशा के पास सिर्फ मतलब नताशा ने ऑलरेडी 15 मिनट सोच लिया है, तो सहज भाई इट लुक्स गुड फॉर तानिया यार। Yeah, of course. I think Tanya is not normally playing the Khan variation. वो Tanya usually e4 e5 खेलती है, and हाँ, ओके। and she's more and she's more of a solid player. But आज, because the opponent's rating is, I think, there is more than 100 point difference. So I think it makes sense to complicate matters early on, ताकि dynamic से position आए, and the opponent can make a mistake. Maybe she can try to be a bit too aggressive. I think that's what she's hoping for. So yeah, let's see what happens. भाई crazy game होने वाला है ये भी। भाई सिसिलियन डिफेंस आज बोर्ड पे बहुत दिख रहा है, तो सैक्रिफाइसेस, ऑपोजिट साइड कैसलिंग बहुत देखने को मिलेगा। और जो तुम चैट कर रहे थे, प्रग ब्लंडर देख के आ ही जाते हैं भाई, ऐसा क्या नहीं ब्लंडर कर नहीं, दिया भाई, कोई कुछ चांस भी ही नहीं नहीं है है। भाई, कोई चांस ही नहीं है। स्टिल इन हिज वो- प्रेप बाय द वे। और नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो, ठीक है। भाई बिशप E2, इट्स ओके दिस ऑल इज प्रेप, भाई, ऑल प्रेप। बट सहज भाई ये है क्या भाई? मेरे तो ये सर के ऊपर से नहीं, मेरे धरती के ऊपर से चला गया भाई। ये पहले A4, फिर क्वीन F3, फिर बिशप E2। बिशप E2, आई फील इसका आइडिया है कि व्हेन यू प्ले क्वीन G3 वो नाइट H5 नहीं आएगा, so you can push F4 and all. हम्म। That's more or less normal अभी तक, पर लेकिन हाँ, it's a weird setup for sure। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ऑफ कोर्स कासल तो एक किंग साइड ही करेगा, बट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज हिम, ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज कि हम्म ए, एवरीथिंग एल्स सीम्स नेचुरल, बस A4 इज लाइक अ वियर्ड मूव हियर, क्योंकि हम्म व्हाइट यूजुअली ए पॉन नहीं टच करता है इतनी जल्दी, क्योंकि यू नीड द ऑप्शन टू कासल ऑन द क्वीन साइड। अभी वो ऑप्शन नहीं है हमारे राइट। पास, क्योंकि जैसे आप कासल करोगे ब्लैक B5 खेल देगा। हम्म हम्म Yeah, and Niribhai, if you could have साहिल भाई, मुझे Prag, मुझे भी हंसा दो, मुझे भी हंसा दो। किस बार चैट क्या लिख रही है? हाँ, मुझे भी भाई हंसा दो। मैंने कहा था आप इतना हंस इन रहे हो। गोइंग टू प्रग्स गेम इन 30 सेकेंड, तो चैट ने काउंटडाउन चालू कर दिया। फिर एक बंदा लिखता है भाई, अरे 1 मिनट हो गया भाई साहब, ऐसे थोड़ी चलता है। गुकी ब्लंडर, वाह। ए यार तुम्हें जिस गेम पे जाना है तुम ब्लंडर बोल दोगे तो हम चले जाएंगे, ये कौन सा स्कैम है भाई? नहीं होगा ब्लंडर है जल्दी, कॉमन सेंस लगाओ भाई। वो भी गुकेश का, इम्पॉसिबल, नो चांस। सही में सही में। बाय द वे, एक और एक फन फैक्ट है चैट आपके लिए। रशिया का क्या फ्लेक्स है पता, लाइक दे आर नॉट प्लेइंग दिस ईयर ऑफ कोर्स, बट इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है उनके टीम में दैट प्रेडके एंड सरन आर मेकिंग देयर ओलंपियाड डेब्यूज बाय द वे दिस Wow. 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 That is actually crazy to think of. Board 1 and board 2 in another country. वो आज तक कभी रशिया के लिए खेले ही नहीं कभी। That's crazy. ईयर। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस टीम, राइट? आई थिंक हमने कल कॉस्टिनेक को देखा वुमेन्स सेक्शन में प्लेइंग बोर्ड 1 फॉर स्विट्जरलैंड, तो द प्लेयर्स हैव एक्चुअली बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज, तो बहुत लोग कंट्रीज का बेनिफिट हो गया इससे। ट्रू ट्रू। एंड चैट, क्लियरली आई थिंक प्रग के ओपोनेंट से तो नहीं लग रहा कि प्रग ने ब्लंडर किया है, वो तो स्ट्रेस में लग रहा है मुझे। एंड ही जस्ट प्लेड पॉन टू B6। फिलहाल के लिए तो काफी काफी सॉलिड लग रहा है दोनों साइड से। व्हाट डू यू थिंक? सही सॉलिड तो नहीं है पोजीशन कहीं से भाई भी। फेल। क्योंकि यार अब क्या मेरे को बोल समझ रहे नहीं हो? आ रहा है भाई, जब समझ नहीं आता तो भाई नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल होने क्या वाला है Yeah, कुछ नहीं but पता this भाई। is this is this is known as the hedgehog setup. By the way, a fun fact also, this is Magnus's favorite setup as the हम्म with the black pieces. Favorite opening as with the black piece. ये मैंने कल ही पढ़ा actually. And the idea is simple रहता है, bishop B7, bishop E7, castle, rook C8, rook E8, something like हम्म that. भाई अगर आप एरोज नहीं दिखाओगे तो हाँ चैट सॉरी को सॉरी थोड़ी ना सॉरी, समझ आएगा हाँ भाई। फिर से आप बोलो, फिर एरोज, से बोलो, रिपीट रिपीट बिशप रिपीट। B7, हाँ बिशप E7, हाँ रुक C8, हाँ, castle कैसे एंड धीरे रुक धीरे E8। बोल रहे हैं साज भाई अब भाई। अब तेज बोल रहा था तो यार, आप कह रहे हो, आप तो चल ही नहीं रहे थे, फिर आपको याद मैं भी नहीं था, तो धीरे भाई ही बोलूंगा ना भाई मैं। मैं सराहना को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था भाई कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होगा यार। लेकिन आई एम श्योर जो उसके दिमाग में चल रहा है मेरे दिमाग में नहीं चल रहा। एनीवेज, हाँ हाँ से राइट। So that's the idea. Rook C8, Rook E8 खेल के, and then Black tries to break open the position with D5 eventually.
So I don't know अभी होगा कि नहीं, but I think that is something we still have to see. I'm not sure what Prag has prepared against, क्योंकि hedgehog में एक चीज बहुत नॉर्मल रहती है, व्हाइट का जो C2 का पॉन है वो C4 पे होता है, तो ब्लैक के लिए D5 खेलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, बट दैट इज द डिफरेंस इन दिस स्ट्रक्चर. पॉन C2 पे बैठा है अभी, तो we'll see what are the implications of that. Yep, this will be very very interesting chat. Castles के बाद Bishop B7 instantly played. तो एक चीज है, even though technically Black was surprised, उन्होंने time ज्यादा use नहीं किया. So he's been playing very very quickly based on the surprise here. And Saj, maybe your move Queen G3 now incoming very very soon, and Black is still 2 moves away from castling. तो देखते हैं वो कैसल करेंगे. चल रहे भाई उकेश में chat, रिलैक्स करो भाई, उससे फेक ब्लंडर मत करवाओ कि हम उसी गेम पे जाए भाई, सीधा सीधा जाते हैं उस गेम पे, कोई चक्कर नहीं है भाई. भाई लेट्स हैव Ukesh's camera. And ये गेम तो यार okay, interesting. So we have the exchange by Predke Alexander. Is this a conscious strategy, Rakesh bhai, to go for the draw, or is White still hoping for a win here? क्या लग रहा है? I mean, I certainly feel कि थोड़ा सा सेफ खेलना चाहता है प्रेड के यहाँ पे व्हाइट पीसेस के साथ. हमने कल देखा है जब भी गैबो और पाप ने विदित के साथ फटाफट ड्रॉ कर लिया. सो इट माइट बी अ केस अगेन दिस टाइम टिकू भाई कि व्हाइट ना खुश है भाई, बोलेगा मैंने वर्ल्ड चैंपियन के साथ ड्रॉ कर लिया है. True. And chat, not to forget world champion से याद आया भाई, Gukesh might be the first, for his first world championship. You can also play a 5-time world champion Vishy Anand. एक पिन लिंक है भाई, जाके क्लिक करो उस पे, और you can join a vote chess match जहां पे आप दुनिया को ज्वाइन करोगे भाई विशी आनंद को हराने के लिए. भाई you might have bragging rights to defeat a world champion. Don't miss that out. And साज भाई, क्या आपने ज्वाइन किया है वो? The match against Anand? हाँ नहीं मैंने नहीं ज्वाइन किया भाई, वो. अभी कर लो भाई, जल्दी से कर लो भाई. I mean, I can, but I don't think it makes a big difference. I can, but लेकिन मेरे को लिंक उस पे डाल दो ना. अच्छा डाला हुआ है आपने? हाँ डाला. पिंड है. हाँ. And chat, बहुत मजा आएगा. Maggie Cam, Levi, do let us know if we have the Magnus Cam at some point. We'll definitely add it. And फिलहाल के लिए साज भाई एक सवाल है कि गुकेश के यहाँ विनिंग चांसेस कितने रहेंगे? इज दिस द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे वो लॉन्ग टर्म, जैसे उसने किया ना परसों ब्लैक से, वी थॉट इसमें कोई चांस ही नहीं है, जब रुक G1 किंग H1 आ रहा था, बट ही समहाउ सैक्ड अ पॉन, प्लेड G5. क्या वहां पे डायनामिक चांसेस इसी पोजीशन में रहेंगे गुकेश के पास? बिल्कुल रह सकते हैं, बिकॉज यू सी ही हैज प्लेड G6, एंड G6 का पॉइंट ये रहता है कि ब्लैक वांट्स टू प्ले बिशप टू F5, एंड बिशप टू F5 के बाद व्हाइट अगर बिशप F5 मार देगा तो GF5 मारने के बाद देयर कैन बी सम काउंटर प्ले अलोंग द G फाइल, जैसे हमने पहले वाले गेम की आप बात कर रहे थे. तो आई मीन देयर आर ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज हियर. ब्लैक बिल्कुल जीत सकता है, बट आई थिंक टाइम विल टेल फॉर श्योर, क्योंकि ये टीम, आई डोंट थिंक दिस टीम इज नॉट द सेम level. I think this team is a lot stronger than our previous 2 rounds. So I think we will have a much clearer understanding, and after like first 15-20 moves उसके बाद और अच्छे से पता लगेगा. For now I think we have to just sit and see कि क्या हो सकता है. Well said भाई. And time पे एटलीस्ट भाई ऑलरेडी 18 मिनट का एडवांटेज, वो मुझे एक बहुत पॉजिटिव साइन लग रहा है राकेश भाई. जो भी बोलो, चाहे मतलब किंग पॉन एंड गेम ही हो, हमने देखा कैसे वो डोमिंगेस ने निकाली किंग पॉन एंड गेम भाई, डेड ड्रॉ निकाल दी. तो भाई जब टाइम हो ना अपने साइड पे भाई, जब समय अपने साइड तो कुछ भी पॉसिबल है भाई. समय होना चाहिए ना, समय हो जाता सब ठीक हो जाता. तो बट या आई एम नॉट श्योर कि गुकेश क्या सोच रहे होंगे, बट आई फील ही इज डेफिनेटली इन द मूड टू फाइट. मतलब ऐसा नहीं कि वो फटाक से कोई ड्रॉ ले लेगा ब्लैक पीसेस से खेल रहा है तो, बिकॉज वी नो ही हैज डन 8 out of 8 पिछले ओलंपियाड में, एंड ही इज डेफिनेटली प्लानिंग टू रिपीट दैट परफॉर्मेंस अगेन. एब्सोल्युटली चालू की आंखों में वो हंगर वैसा ही है, and it's not going to go away at least for a few decades. और इस साल तो he is motivated than ever. and फिलहाल के लिए सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे मैं यहाँ पे विनिंग चांसेस बना के रखूं. साज भाई कौन सी गेम पे चले? मे बी गो टू अर्जुन्स गेम, क्योंकि वहां पे कुछ हुआ तो है, कितना क्रेजी है मुझे पता नहीं, बट क्रेजी तो लग रहा है भाई. ये क्या हो गया भाई? हमने देखा था भाई नाइट H4, वहां व्हाइट ने खेला बिशप E4.
So he had the chance to take, but white ने कहा नहीं भाई, धक्का लगाने में हम expert है, धक्का लगा, पीछे निकला, दे लिया bishop pair, then he plays pawn to e4 and center पूरा ये एक interesting सी pawn chain बन चुकी है ऐसे, ये जो I don't know what this is called even, knight f6 and this is the current position. भाई क्या लग रहा है इसके बारे में? No, as predicted, I think this is going to be a very, very, very aggressive round. Black की castling मुझे मतलब black cannot castle on the queen side, and if black castles on the king side, then there are some attacking ideas with h4 h5 जो मुझे बाद मतलब it can happen, I think, very, very soon. I think Arjun needs to be a bit careful here कि king को कहाँ पे develop करना है. I think you have to go a short castle, that is for sure, but लेकिन he has to be careful कि attack बहुत जल्दी ना आ जाए. Already white center is looking really good. Maybe this is a sign कि Indic's preparation worked, but somehow time को देख के ऐसा लग रहा है कि Indic was not in prep. He's not in prep right now. And so it's a bit confusing. Could it be a trap, Saj bhai? कि कई बार लोग करते हैं ना, जानबूझ के धीरे खेलते हैं कि ओपोनेंट कोई प्रेप में नहीं हो, and knowing Indic, has he done it before? Like, do you think it's possible? Not that I know of. No. Usually वो fast ही खेलता है, चाहे वो मतलब preparation आए ना आए. He's a very fast player. Like we have a record. Like one time we finished a game in like 1.5 hours, something like that. क्योंकि सब लोग इतना fast खेल रहे थे. बिल्कुल. And सहज भाई वही बोल रहे थे, बहुत फास्ट खेलता है, इंस्टिंक्ट पे इंडिच बिलीव करता है, बट सामने अर्जुन एरिगैसी हो ना, तो वो सब भूल जाता है आदमी. बिल्कुल, rightfully so. Chat, by the way, एक जनरल क्वेश्चन, क्या लगता है ये गेम कितनी मूव्स चलेगी? बिकॉज अर्जुन की गेम हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू फिनिश, एंड स्टार्टिंग से ही इट टेक्स अ पाथ. बाकी सब गेम्स में ना वी हैव सीन दैट डिटोर की लंबी गेम चली, 35th मूव पे सडनली गुकेश ने एक पॉन सैक किया. यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, पहले तो फर्स्ट गेम जहां पे पीस सैक दिया था 2 पॉइंट के बदले, टेक्निकली गलत था बट इट वर्कड. देन सेकंड गेम में वी हैड क्वीन g4 g6, यस्टरडे वी हैड द क्वीन सैक्रिफाइस. भाई क्रेजी गेम. तो क्या आज भी क्रेजी रहेगी, एंड कितने मूव्स चली गेम, क्या लगता है भाई? गेस करो चैट. एंड राकेश भाई, व्हाट डू यू थिंक? I mean, रिजल्ट तो पक्का है भाई ये गेम में. एंड लेट मी जस्ट चेक कितने मूव्स हुए हैं. 10वां मूव है. आई थिंक 35 moves and it's going to be 0-1, I think. Saj bhai, आपका prediction in this one? But it's too early to say. I would like to refrain from answering just for now. I'm not sure what's going to happen here. It's very, very early to say even now. साज भाई रिजल्ट नहीं बताओ, बस मूव बता दो भाई. कोई भी जीत सकता है भाई, दोनों खुश रखेंगे भाई. Moves, I don't know. Draw होती है तो I feel it can be a longer game. But if someone wins, someone makes a mistake early on, तो game जल्दी भी खत्म हो सकता है. I'm really not sure because ये conventional game नहीं है बिल्कुल भी. It's not like white नहीं. This is Roy Lopez या Italian, कोई मतलब वो solid सी position नहीं है. When something like this happens, anything is fair game. तो अभी के लिए I would like to refrain from saying a specific number because frankly speaking I'm not sure. And do you think अर्जुन का जो स्टाइल रहा है to complicate matters and to kind of create risky chances, ये यहाँ पे उनको ब्लैक से शायद उतना मौका ना मिले? Do you think that is a problem, potential problem? Maybe. By the way, just sorry to interrupt, but chat में सब लोग बहुत मतलब लिख रहे हैं कि दिव्या apparently has made a mistake. I'm not sure if this is actually true. Wait, दिव्या का plus 1.7 दिखा रहा है मुझे बोर्ड पे. तो what mistake did she make? सहज भाई आपका फर्स्ट टाइम है क्या? सहज भाई आपका फर्स्ट टाइम है क्या कमेंट्री? एक सेकंड. It's a good point, but it's a lot of people that wrote Divya blundered. So she went back to d7. Is it normal, Saj bhai? No. ये तो खत्म. G4 G5 भाई उड़ाओ. She didn't go for G4. She castled. Black castle. It was a mistake. And now apparently knight D5 is plus 1.7 for Divya Deshmukh. And this is amazing. I mean, और क्या चाहिए भाई? Knight D5 के बाद क्या? ED5 is the point. Yes, ED5 apparently. ED5 नहीं है क्या? Somehow it is not easy to like estimate this as this much of, I mean I wouldn't think of this as being +1 advantage for white because I think difference ये कि हमारा जो B3 का knight है वो E4 पे बढ़िया से बैठ जाएगा and then you can push F6
That I I think is think the yeah, I think yeah, Sahaj, my Rakesh bhai? point is black pieces are stuck ना, knight b8 नहीं निकल पा रहा है, bishop d7 पे अटका हुआ है, and मैं बता के आ सकता हूँ knight d2, knight e4 and f6, and in case black plays bishop f6 तो g4 g5 comes with tempo. If black plays pawn to f6 तो भी I think g4 g5 is super strong. Yeah, F6 black ने F6 खेल दिया, that's just saying कि हाँ, that's भाई मतलब suicide. that's just suicide भाई, मुझे भरोसा नहीं है अपनी बात, भाई मतलब वो शब्द, ये चाल हम टिको भाई से एक्सपेक्ट करेंगे, भाई you know, भाई we cannot expect it from भाई मित्रा भाई यार, मैं come on. अगली 4 गेम में खुद F6 वन मूव पे खेलूंगा, वो शब्द का इस्तेमाल मत करो, यूट्यूब ने उसको फ्लैग कर देगा भाई। ध्यान से भाई, ध्यान से, Oh, ध्यान से भाई, ध्यान से। चैट को पता है, चैट बताएगी अभी। it, really that has happened before क्या? वो वार्निंग आती है भाई कि यू नो आर यू श्योर यू वांट टू सी दिस, कभी देखा होगा आपने इस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद। नहीं मैंने यार I think YouTube के बारे में you know so much more. I've never heard of these things before, but yeah. But it is, I agree. I think in fact इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस है बिशप c8 जो ऑलरेडी 1 2 3 बार चल रहा है, एक और चलेगा। So I think white has advantage, but yeah, of course might not be permanent because I think she will have to use it to her advantage. कैसे knight e4 आएगा, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा। So I think Divya has great chances and Played a4, I think she plays a4. Hmm. Wants to stop b5, very logical. And वो बोल रही है अभी तो मैं g4 g5. I think I like g4 g5 more than knight d5, सहज भाई, because knight को पढ़ लिया लात, and then your pawn storm is just too strong, I feel. भाई G4 के बाद ना मुझे लगता है मित्रा ने यही सोचा होगा, and G4 के बाद she wanted to play bishop c6, you know, to kind of attack the e4 pawn, and then उसके बाद अब e4 के बाद मेरे को d7 पे एक घर भी मिल गया, you know, मेरे नाइट के लिए, just in case. Yeah, this is going to be a very very interesting game chat. Attack तो लगेगा. So let's go back एक बार जहां पे after e4 हमने knight f6 के बाद bishop g5 खेला है इंडिच अलेक्जेंडर ने, लेकिन सडनली बात थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ यहाँ पे। साल भाई ये क्या हो सकता है भाई, ऐसा क्या कारण? लॉजिकल चाल लग रही है, लॉजिकल चाल तो लग रही है मुझे भी भाई। आई थिंक ही वांट्स टू गो लॉन्ग कासल भाई। बता रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? तैयार है, इंडिच आज तैयार है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। आज कुछ भी मैंने बता देना, बोर्ड पे आज आग लगेगी, आज आग लगने वाली है 100%, क्योंकि ही नोस यू नो कि अर्जुन शॉर्ट साइड कासल करेगा, तो वो पहले से ही लॉन्ग कासल करके H4 H5 वो तैयार है भाई, वो तैयार है 100%। राकेश भाई लेट्स वोट भाई, किंग साइड क्वीन साइड कहाँ जाने वाला है इंडिच? सो आई होप किंग साइड जाए भाई, मुझे नहीं चाहिए इतना ड्रामा। चैट तुम्हें क्या लगता है, किंग साइड क्वीन साइड? राकेश भाई I think इंडिच जाएगा क्वीन साइड क्योंकि ही इज नोन टू बी एन अटैकिंग प्लेयर, एंड पिछले एक दो गेम्स हम देख रहे हैं अर्जुन भी काफी लॉन्ग कासल या क्वीन साइड कासल कर रहा है टू जस्ट टू एबल टू अटैक ऑन द किंग साइड। तो भाई ये गेम में रिजल्ट तो पक्का है यार, बहुत मजा आने वाला है। मजा बहुत आएगा और मजा बढ़ने वाला है बिकॉज ओ ही हैज टेकन ऑन f6। चैट वी आर गोइंग टू द प्रग गेम। So ये fast. क्या मूव है साज भाई, ये क्या है? पॉन टेक्स, पॉन्टिक्स F4, आपका D5 का पॉन नहीं मर रहा क्या? भाई 3 मूव आगे की चाल थोड़ी सोचेंगे टिकू भाई। भाई पर अर्जुन ने तो सोची होगी ना भाई, उसको तो पता है ये। Also, Wait, Pontics did is he not. just blunder? Wait a minute. How do you actually? Bishop f6 मार के ED5. Bishop F6 looks very logic. Bishop F6 looks very logical to me. हाँ, but the point that is is the इसमें human. yeah, the difference is actually Tico bhai, if you can show chat, ED5 F4 अभी knight E7 से आप बचा पाओगे वो D5 का पॉइंट, जहां पे पहले आपका ही बिशप था आई थिंक। तो चैट ये इंटरेस्टिंग डिसीजन है बहुत बिशप f6। अर्जुन रिएक्ट करेंगे बट अपेरेंटली सारना ने गलती कर दी है। कैन विल गो टू प्लग्स गेम राइट नाउ एंड सी क्या हुआ वहां पे। क्या प्रग को वो ओपनिंग प्रिपरेशन का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है? लेट्स हैव अ लुक। बिशप e2 b6, हमने बिशप b7 तक देखा था एंड यहाँ पे इंडीड क्वीन g3 खेला उन्होंने। Prag is ready to put pressure on the king side. Bishop e7 आता है, rook a d1, all are the engine's first preference। और यहाँ पे वो साहज भाई एंड राकेश भाई, सरप्राइजिंगली फॉर मी, ब्लैक के पास 2 ही चाल है
to not have a clearly worse position, like minus 1.5 apparently. And वो दोनों moves कौन सी थी? Rook G8, not happening, और दूसरा castles. I mean, also difficult. So black, pragmatically, उन्होंने खेला knight to c5, and apparently, this is the time to guess white to play and get an advantage, and 100% ये Prag की prep है. I can bet money on it. Chat, let's go. White to play to put pressure. कुछ तो crazy होने वाला है. Let's go, साहज भाई. क्या लग रहा है भाई? बस भाई, उड़ा दो बस. एक चीज तो पक्की है कि प्रग के साथ प्रैग्मैटिक नहीं हो सकते. उसके साथ वो पॉसिबल नहीं है. आई थिंक ये उसने गलती कर दी. But yeah, I see the idea. I think it's something to do with bishop f6, and knight b5, I believe, which I think Prag will find it. I think he can definitely find it, क्योंकि it is like आपको force किया जा रहा है ये move find करने के लिए. If you don't play that, then your e4 pawn is under attack, and you will never play a move like f3. That just seems like, it just seems too passive, I think, in this situation. So I think usko, because he doesn't have a safety net, कि भाई एक चाल करके position solid सी रहे, so he has to kind of go into the more aggressive line. And preparation है या नहीं है, I am not sure, but I think because there is no safety net, he's gonna go for bishop f6, knight b5, and he's gonna go for some crazy. यहाँ पे भी आग लगेगी आज. And yes, this game मुझे लगता है कि यहाँ पे Prag जीत सकता है. अरे मजा. I'm going to vote a 1-0 here. And ये उनका strongest player है राकेश भाई. Strongest player को हराने वाले हैं. And राकेश भाई, bishop f6, knight db5 is the idea भाई. Pawn takes, knight takes, queen कहाँ जाएगी? I'm not sure. b8 usually best को रहता है. साथ भाई, where do you put it? I think b8 or e7, but let's put it on b8. Yeah, sure. Knight d6 check. Okay, where does the king go by? f8, e7. f8 probably. King f8. हाँ, f8. And now e5 apparently is the idea. Bishop को जाना पड़ेगा वापस. And now queen to f4, threatening checkmate in one. This is the idea, भाई साहब. And it depends. अगर प्रग ने अगले 5 मिनट में खेल दिया तो maybe it's prep, but if it takes much longer, then of course he has to calculate everything. I think it's not that easy. मतलब ये खेलना भी अपने सामने इंजन चिल्ला रहे थे. रोहन भाई चैट में चिल्ला रहे थे crazy knight sacrifice. But he has to evaluate this, and it can go wrong, या फिर you just miss a move, ऐसा हो सकता है. So Prag, I think, will have a good long think here, I feel. Yeah. But you can see, you can see it in Prag's eyes. Na? He can sense कुछ तो आ रहा है यहाँ पे. Because Spidey says tingling. When it comes to opening prep, you are preparing. Usually, आप जब भी prepare करते हो, you prepare the best move of the computer for yourself and for your opponent. मतलब जो भी आपकी प्रेप रहती है, आपको पता है कि भाई मैं ये चलूंगा, कंप्यूटर कहता है मेरे अपोनेंट को ये चलना चाहिए, मुझे ये चलना चाहिए, कंप्यूटर कहता है मेरे अपोनेंट को ये चलना चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट गोज. बट एट एनी पॉइंट जब भी कोई मिस्टेक करता है, यूजुअली दिस इज वेयर यू आर आउट ऑफ प्रेप. तो मुझे लगता है कि प्रग इस मोमेंट पे प्रेप पर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट कंप्यूटर्स बेस्ट रिकमेंडेशन. तो इसीलिए वो सोच रहा है कि अगर अभी तक उसकी ये प्रेप थी, तो उसके दिमाग में बैठी हुई है बात है कि भाई यहां तक मेरी प्रेप थी, मुझे पता है कंप्यूटर ने नाइट c5 नहीं रेकमेंड किया था, एंड नाउ ही हैज टू फाइंड व्हाई नॉट. सो आई थिंक ही इज, इफ ही थिंक्स लाइक दैट, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस ही विल फाइंड दिस फॉलो अप. Yup, and he's likely. And chat करिए, गुकेश का ड्रॉ हो गया है. That is very unlikely. नहीं. I don't think so. मैं तो बोल रहा था टिकू, speaking of long castle, guess who? Like Gukesh might long castle today. ये आप देख सकते हो, bishop f5, bishop into f5, g f5, और black के पास ये open g file मिल चुकी है against the white king. तो हो सकता है e6 के लिए सब बचा लो, फिर चलो bishop d6, rook g8, long castle और live झिंगा लाला. Okay, look at the bar.
It's already minus 0.49, and while it's not, a signal of anything crazy, but it's the direction the game is moving in. And Rakesh भाई, Bishop D6, Rook G8, and जो साज भाई ने कहा था Bishop 5, exactly वही हुआ. अब imbalance आ चुका है, pressure on G2, and Black King long side भी जा सकता है, बिल्कुल जाएगा at some point. And यहाँ पे if anybody is better, at least देखने में it is looking like it's Gukesh. बिल्कुल बिल्कुल, like I would pick black in this position. Very pleasant position and free attack for your pieces. Yeah, that's for sure. And somehow ऐसी भी feeling आ रही है कि Predke may be playing a bit too defensively. अभी तक ऐसी feeling आ रही है कि बहुत defensively, बहुत solid होके खेल रहा है, which of course makes sense. आपके सामने गुकेश बैठा है, but still, I feel Gukesh has gotten very comfortable, already with the black pieces. जो against, almost a 2700 player is very, very rare. Black से इतनी जल्दी comfortable होना against a 2700 यार, come on. I mean, that's not normal. I think वो ना जो डायनामिज्म है गुकेश का, वो उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया कि कितना वो ऐसे वो मतलब प्ले इम्बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं. आई थिंक जो जब पिछली ब्लैक थे जहां पे वो किंग H1 वाला था, वहां पे इट वाज ही वाज स्ट्रगलिंग टू क्रिएट दैट डायनामिज्म. यहां पे इनको मिल गया इस बिशप 5 मूव के साथ, एंड नाउ ही कैन सिंपली प्ले दिस रूक G8, एंड सडनली व्हाइट को ऑलरेडी सोचना है भाई अटैक तो नहीं आ रहा, तो बहुत प्रेशर में आएंगे. एंड क्लियरली भाई ड्रॉ नहीं है. किसने कहा था ड्रॉ होगा भाई? उस बंदे को तो कभी मेंबरशिप नहीं मिलेगी भाई. तो वो बंदा का बैन. एंड फिलहाल के लिए हम जाएंगे प्रग की गेम, नहीं प्रग की एक सेकंड स्टिकिंग टू दिस बोर्ड. इफ यू गाइस रिमेंबर चैट, गुकेश ने आइसलैंड के अपोनेंट को भी यही जी फाइल पे ही सैक्रिफाइस मारा था, पॉन टू G3 रुक G3. तो सहज भाई, वी माइट हैव अनदर गुकेश ऑन द जी फाइल एक्शन. भाई बिल्कुल बिल्कुल 100% डबल रुक्स ऑन द जी फाइल. तो साहिल भाई का दिमाग ना वही रहता है भाई. अरे वो राइम कर गया ना भाई, इसलिए मैं राइम कर सुनता हूँ, मेरी हंसी निकाला. मैं बिग पोएट्री फैन बाय द वे. अच्छा. So भाई टिक्कू से एक बात बताओ, फिर टिक्कू से क्या क्या राइम करता है? चैट बताओ, आप बताना. हमें बताओ टिक्कू से क्या क्या राइम करता है. साहिल भाई की खुशी हमें हमारी खुशी है भाई. टिक्कू से राइम करता है सिग्मा भाई. सिग्मा राइम करता है भाई. सिग्मा से एक और चीज भी राइम करती है जो मुझे नाइस नॉटी. बिशप खेल दिया है चैट. सो बहुत बढ़िया पोजीशन है गुकेश की, मजा आने वाला है भाई. एंड एक बार जाते हैं प्रग की गेम पे, क्योंकि वहां पे पीस सैक्रिफाइस बहुत जल्दी हो सकता है. एंड गोइंग बैक, ये पोजीशन एज यू सेड कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होगा, तो देखेंगे भाई क्या होगा. फिलहाल के लिए दिस इज द पोजीशन. हाँ, इफ लाइक आई वांट प्रेडिक्शंस चैट के तरफ से और आप दोनों की तरफ से. विल प्रग प्ले दिस क्रेजी नाइट सैक्रिफाइस और नो? I think 100% yes. 100% yes. 100%. मुझे लगता है कि मैंने एक्सप्लेन किया ना, इसमें कोई there is no like wait, there is no line जिसमें आप कुछ और खेल सकते हो. Like you have to go into the aggression. कोई solid line नहीं है. अगर कुछ solid होता ना तो I would say कि there is a chance. But अगर आप ये ढूंढो तो बढ़िया पोजीशन नहीं ढूंढो तो like black gets really comfortable. So that's not. भाई प्रग को देखो, वो तो खुद ही B5 स्क्वायर पे बैठा हुआ है भाई, पक्का खेलने वाला है. It's happening 100%. बट नूब क्वेश्चन हियर सहज भाई, बिशप F6 के बाद मैंने रियलाइज कर लिया एज सराना कि नाइट B5 आ रहा है और D6 पे प्रेशर है, तो क्या मैं G into F6 मार सकता हूँ? मार तो सकते हो, बट ये जो सेटअप होता है ना F7 F6 E6 D6, इसके लिए आपके पीसेस आइडियली प्लेस्ड नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक यहाँ पे बहुत जल्दी बिशप H5 आ सकता है, व्हिच आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन प्ले इट इमीडिएटली और नॉट, बट ये मूव बहुत रिस्की होती है ब्लैक के लिए. आइडिया है B4 के साथ एंड नाइट into E6. एग्जैक्टली, नाइट टेक्स E6. जब भी ये सेटअप रहता है ना ब्लैक का विद दिस 4 पॉइंट्स, ब्लैक को H5 खेलना भी बहुत जरूरी होता है ताकि व्हाइट का बिशप H5 या क्वीन H6 पे ना बैठे. तो आई रियली डाउट इफ यू विल गो G F6. इसके बाद ब्लैक का किंग एकदम सेंटर में फंस जाएगा. किंग साइड पे आपको अलाउड नहीं है, क्वीन साइड पे आई थिंक आप खुद ही अलाउ नहीं करोगे अपने आप को, बिकॉज आई मीन व्हाट इज दैट. लाइक आपकी 5 चाल में मेट हो जाएगी वहां पे. तो इट्स लाइक द किंग इज इन अ रियली बैड प्लेस. क्या हुआ साहिल भाई, कुछ और राइम्स पढ़ लिया? कुछ नहीं भाई, विराट कोहली भी जीत रहा है अपरेंटली भाई. जाएंगे भाई, उसको जाएंगे भाई, बहुत जल्दी जाएंगे भाई. एपिक तो था भाई, जो बाइडन लॉस्ट यार, मतलब जो एक्चुअली ट्रू है. सो वेल डन चैट.
But okay, so coming back, apparently Tingu rhymes with Tikku. ये दोबारा कभी मत बोलना, आपको बैन कर देंगे भाई. खैर coming back to the game, bishop f6. तो bishop f6 तो पक्का है, मतलब black has to recapture bishop f6, and then knight d5 is probably the best. Doesn't matter actually कौन से knight से जा रहे हो. Knight b5, queen b8 हमने discover करा था best move. Takes, king f8 always nice. हाँ, इसके लिए king f8 always nice. e5, bishop e7, queen f4, and now if I play f5 to save the mate, Tehaj bhai. I mean, I don't think I have anything immediate unless knight f5 मर रहा है तो. Wait, knight f5 मर रहा है. Knight f5 मर रहा है भाई. Knight f5 मर रहा है, हाँ. Oh, there is G5. Oh, G5 is nice. That's very nice. That's very, very nice. By the way, chat को दिखा रहे थे EF5 के बाद क्या हो रहा था. If you take EF5, then Queen F5 and Black is just busted. I think mate हो रही है कुछ चाल में. Because King G8, Bishop C4 is just mate. And if you go King E8, then Bishop B5 check आ रही है, and that is also mate. You have to play Bishop F6 and उस पे EF6 मार के तो you will just destroy. Yeah. But G5 is so cool. Saj bhai, यहाँ पे maybe the engine's first preference is actually G4. And that's not an easy move to find. Because and what the move is still G5? Exactly. And then Queen D4. Bhai, ye samajhna, matlab this is, I don't think this will happen on the board, bhai. If this is the best way to play. But Tikku bhai, ये तो forced variation है ना, मतलब. You know भाई, इतने time से Rook F4 भी मर रहा है. I don't know. We should probably भाई 10 साल हो गए Rook F4 मर रहा है, मार ही लेते हैं. समझ लेते हैं क्या. Rook F4 B4 भाई साहब. Wow. Because पता क्या chat, मेरे को लग रहा है कि यार ये देख के ना G5, he might think Queen F4 is not a great move. That is my problem here. कि वो देखेंगे यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, मैं G4 पे G5 आ रहा है, तो suddenly he feels कि maybe this is not worthwhile. And let's go deeper, Saj bhai. So Queen D4. Oh, what does Black play now? No idea, bhai. I think F4 probably. F4 looks interesting. पर लेकिन भैया मतलब हमारा king एकदम Black का king एकदम long term pressure में है. No, and that is not an easy thing to face. I think Black के लिए ज़्यादा difficult होगा in comparison. Yeah, this is not ideal, but I would say he's maybe even lost in very, very close. I know बाहर ऐसा नहीं कह रहा है, but to defend this position is extremely hard. I agree. In fact, chat, अगर हम Indian line के द्वारा हम थोड़ा deep जाएं, you see it is the best move is actually H5. I mean, the chances of this happening is 0. Yeah, maybe negative. It's not happening, bhai. It's not happening. And now you take on F5, just going a random rabbit hole, bhai, which makes no sense. B4, Knight E6, Queen D3, Bishop E4, Queen C4. भाई ये क्या है? ये chess नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही चल रहा है. So I'm going to go back to the current position. ये जो आपने दिखाया है ना, इससे मेरे को आपकी वो वीडियो याद आ गई, वो सीधे कमेंट्री कर वाली. क्योंकि चैट प्रग को वो सब भाई उसका पार्ट 2 बनाना इसी लाइन से भाई. इसी लाइन से सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई. किसी ने कमेंट किया था कि भाई उसकी प्लेलिस्ट बननी चाहिए, तो बनाएंगे प्लेलिस्ट भाई. लेकिन फिलहाल के लिए सहज एंड राकेश भाई एंड चैट, प्रग को वो सब कुछ यहां से देखना है भाई. कितना मुश्किल है भाई यहां से वो सब कुछ देखना. कुछ एक मूव मिस करी तो इट्स ओवर. I don't think he has to see the whole thing from the start. I think एक टाइम के बाद जब डायरेक्ट मूव्स बोर्ड पे खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद you can just stop and you can भाई अगर ब्लैक अगर ओपोनेंट के पास कुछ अटैक नहीं है, कोई क्रेजी टैक्टिक नहीं है, तो you're fine. So you can handle the position बाद में. It is impossible to calculate all of that for a human. It is basically impossible. पर लेकिन भाई इंट्यूशन पे खेल के वो I think he can rely on it. I think there is a good chance he will play it. But yeah, let's see what happens. By the way, Sahil bhai, does it make a difference if I go knight dv5 pehle? Wow, good question. It does because I can capture back with the pawn then. कितना tricky होता है यार ये. कितना tricky होता है यार. You have to have the right order. पहले knight मारो फिर knight b5 खेलो. Yeah, tricky क्या है? और sorry to cut you off. That
अर्जुन के अपोनेंट ने सही में बड़ा मिस्टेक किया है. चैट इज राइट दिस टाइम बिकॉज क्या इंडिज बात कर की रहे हो? क्वीन इज क्लोज टू गेटिंग ट्रैप्ड. सहज भाई, What? या ही ये मेड अ क्या हुआ? भाई लेट्स bishop गो, लेट्स गो. f6. Yeah, we moved from here, from this point. Bishop हाँ. f6, g f6 मारा अर्जुन ने, interestingly. Takes, and now comes the inaccuracy. Knight c2 नहीं खेलना था, f4 जो हमने डिस्कस करा था. That was the best move for white. एंड यहाँ ब्लैक को ये मारना पड़ता टू काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट द क्वीन एंड सेव एंड गेट द e7 स्क्वायर फॉर द नाइट. बट इंडिश ने तभी ये नाइट पहले मूव करने की कोशिश करी ताकि वो ऑप्शन ना रहे. ये नाइट e3 पे जाके और प्रेशर डाल सकता है, लेकिन सडनली अर्जुन प्लेड नाइट a5 एंड रानी कह रही है मेरी वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है, आगे भी स्क्वायर नहीं दिख रहे, सो शी हैज टू गिव अ चेक. एक और धक्का और अब क्वीन e2. सो रानी को दो मूव वेस्ट करके यहां आना पड़ा. And now maybe even knight c4 or something, and Arjun is slightly better now. I've got a question for chat. ठीक है, chat के लिए question है, साहिल में भी आपके लिए भी है, राकेश भाई आपके लिए नहीं है. ठीक है. अच्छा. Instead of queen e2 अगर मैं queen a4 खेलूं तो what's happening? I'm joking, साहिल भाई आपके लिए नहीं है ये. भाई b5 होगा ना भाई. यार अरे यार, अरे भाई तो पहले नहीं पूछने का था ना भाई, फिर अब पूछ यार. एक तो अभी बोला आप, कभी I'm just joking, आपके लिए नहीं है भाई. चार में अभी बोला जिसमें चैट में 4 लोग अभी लिख देते भाई, अरे टिक्कू को कहा आएगा भाई क्वीन a4 में, तो भाई बोलना पड़ता है ना भाई. but still this was the whole point. Queen a4 b5 and suddenly ऐसा लगता नहीं है ना क्वीन ट्रैप यहाँ हो सकती है. एंड आपके वो गंदे चाल नाइट c2 की वजह से क्वीन का रास्ता बंद हो गया और आप गेम से हाथ धो के बैठते हैं. बिल्कुल. और ऑल्सो इट्स अ वेरी रेयर पैटर्न आई थिंक इन चेस, जब आपका स्मॉलेस्ट पीस इज ट्रैपिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस. लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज अ वेरी रेयर कॉन्सेप्ट इन चेस जो अभी हमें देखने को मिल सकता था. बट ऑफ कोर्स इंडिश इज नॉट गोना फॉल फॉर दैट. ही गोस फॉर क्वीन e2. Very well put, Sahaj band. Very similar to what Divya did yesterday. Smallest piece से मेट करा उसने कल. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. दैट इज लाइक एक्सट्रीम. हमें पहले, मुझे याद है, पहले लोग कहते थे कि एक पॉन की मेट 5 विन के बराबर होती है. वाओ. 5 विन के बराबर होती है, which I completely stand by. But yeah, मतलब things overall looking great for India on this board, chat. Yeah, बिल्कुल. I think इनफैक्ट टॉप तीनों बोर्ड पे भाई, टॉप तीनों बोर्ड पे इट इज लुकिंग लाइक इंडिया इज डूइंग वेल. सो गुकेश इज बेटर, Prag is really better if he plays it, and finally Arjun also slowly squeezing it down. So maybe it's time to see कि विदित के बोर्ड पे कुछ हो तो नहीं रहा है भाई. क्या पता 4 बोर्ड पे जीत रहे हैं हम, 4 नहीं लोगे तो भाई क्रेजी हो जाएगा यार. भाई 4 beating Serbia 4-0 ना is actually a big statement to the other teams also. That we are not messing here, like we are here for business. Yeah. I think वो लेसन हमने ऑलरेडी दे दिया यार. अभी तक आधा पॉइंट ही ड्रॉप हुआ है राकेश भाई. True, but easier teams है ना, मतलब beating a team with 2700s 4-0 is kind of rare. हाँ. True, very true. I think कोई predict किसी ने भी नहीं किया होगा कि 4-0 होगा आज. I think ये बहुत डिफिकल्ट प्रेडिक्शन थी, एंड होगा तो भाई श्रीनाथ ने खुद ने नहीं बोला होगा आज 4-0 होगा. ट्रू. साज भाई, ये स्ट्रक्चर क्या लग रहा है व्हाइट के विनिंग चांसेस? भाई मुझे लग रहा है यार पोजीशन सही लग रही है. सही तो लग रही है, बट विद इट यार आई थिंक आधे घंटे से सोच रहा है इस पोजीशन में. तो देयर इज अ बिग टाइम इशू दैट कुड अराइज. So we have to see. By the way, black की जो last move of bishop p8 is a very clever move. He's very smartly defending the f7 का pawn in case knight f7 कभी भी आए बोर्ड पे. And this is like something, अगर किसी को याद हो चैट में, साहिल भाई आपको याद हो, राकेश भाई आपको याद हो, Gukesh did something similar I think in the second game जहाँ पे उसने g5 से अटैक किया था. He also went bishop e8 after knight e5. वो एकदम स्लाव का स्ट्रक्चर था, बट पैटर्न काफी सिमिलर है उससे. तो आई थिंक वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बिकॉज ही डजंट वांट वो नाइट d7 मारे, नाइट f7 मारे. ही इज गार्डिंग अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक नाउ विदित हैज टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी यहाँ पे कि भाई पीसेस किस तरह से निकालने हैं, कहाँ पे अटैक कर रहे हैं. बट या ही इज बीन थिंकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम
which I do understand, but I think it's a bit I think it's a bit too much. I think अब खेलना चाहिए यार. आधे घंटे का जब भी डिफरेंस होता है ना, डर लगता है. Yup, yup. And chat, this is going to be an amazing game. वीडियो को टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है. अगर टाइम मैनेज कर लेंगे, क्या पता 4-0 की तरफ हम बढ़ सकते हैं. तो एक काम करते हैं, जाते हैं all through all the 4 boards again. Let's do it भाई. बड़ा मजा आने वाला है. Let's go first to Gukesh's game. And chat भाई, not to forget, 1000 लाइक पे पहली मेंबरशिप जाने वाली है. जल्दी से स्ट्रीम लाइक करो भाई. भाई 4-0 हो सकता है चैट. जल्दी से हिट द लाइक बटन. 1000 लाइक इंस्टेंटली हो जाने चाहिए. क्या बोलते हो राकेश भाई? टिको भाई, मैं तो बोल रहा था दैट डिंग लिरेन का इंस्पेक्शन रूटीन, डेली इंस्पेक्शन चल रहा था. आप जस्ट देख सकते हो डिंग लिरेन, डिंग और गुकेश इन वन फ्रेम. तो आई थिंक डिंग आया तो वो एक चैलेंज हो जाए यार चैट के लिए, लाइक काउंटर के लिए. इफ वी कैन हैव अ चैलेंज फ्रॉम योर साइड प्लीज. लेट्स डू अ चैलेंज. सो अभी बज रहे हैं आई थिंक अगले 6 मिनट चैट. अगले 6 मिनट में अगर 1000 लाइक हो गए तो भाई एक बंदे को हम 1 महीने के बदले 2 महीने की मेंबरशिप देंगे. लेट्स गो चैट, जल्दी से लाइक करो. एंड चैट कह रही है कि प्रग ने F3 खेल दिया है. अरे ही डिडंट गो फॉर इट. नो भाई, नहीं नो यार. यार. बट this goes to show, this just goes to show कि of course एनालाइज करना, इंजन के सामने बैठ के बोलना, it is one thing, and board पे खेलना is another thing, of course. I completely understand the decision. Maybe he wasn't sure bishop f6 knight b5 के बाद, it is a very very complicated position, so maybe he wasn't sure if it works or not. But yeah, f3 is the safer choice. But भाई अभी knight h5 knight f6 is that iconic वो grandmaster वाली draw. Is that happening here? I think you are right, Sahaj. I don't see an easy way to escape. Maybe queen h3 is the way to escape this. But yes, black could potentially offer a draw here, and I think he absolutely will. मुझे नहीं लगता कि he will try to, especially if he has seen knight db5, तो उनके चांसेस ये knight h5 खेलने के और ज्यादा बढ़ जाते हैं. एक और मौका तो वो नहीं देंगे यहाँ पे प्रग को. तो राकेश भाई क्या लग रहा है, क्या ये ड्रॉ हो सकता है, या अगर यहाँ knight 5 आता है, ओ नो ही कैसल्ड, नो ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैक एंड. मेबी ब्लैक को लग रहा है कि मुझे ही जीतना पड़ेगा यहाँ पे. हाँ, वो आई थिंक बाजू के गेम्स देख के आया, फिर सराना को समझ. That's very funny राकेश भाई. यहाँ पे भी हार रहे हैं, वहां पे भी हार रहे हैं, तो यार खेलना ही पड़ेगा यार. हाँ एक्चुअली देख के आया भाई, वो एक्चुअली देख के अभी बैठा वो. बट राकेश भाई एक सवाल आपसे भाई, आपने प्रेडके को कब हराया? I would love to know the story यार. Tell us. Very recently, like I mean not very recently, pre-COVID 2019 I think. जो हो ची मिन में ये वियतनाम ओपन HD बैंक ओपन में फर्स्ट राउंड, he was like 26, 40 या 50. He's like the highest player I've ever beaten, by the way. Oh wow, nice, that's crazy. तो मैंने देखा ये भाई, तो मेरे वाइट पीसेस थे, ये हमेशा फ्रेंच या कुछ सिसिलियन E4 E5 खेलता है. उसने कारोगान खेला एंड like I had a great attack and 30-35 मूव में काम हो गया पेड़के का. ये धो दिया मतलब. क्या बात काम है, हो गया पेड़के का. क्या बात है. And funnily enough, I've also beaten Sarana twice, but तभी वो बच्चा था, मतलब सराना बच्चा था. But it was one of those Aeroflot open में blitz होता ना, you play the same opponent twice on the last day of right. हाँ मुझे याद है, मैं खेला हूँ ब्लिट्स खेला. मैं सेम ब्लिट्स पहले खेला हूँ. इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग होता था यार वो ब्लिट्स. बट वाओ यार, यू बीटन सराना, यू बीटन प्रेड के, मतलब पूरी सर्बियन टीम का, मतलब you have their number, yeah? The whole team. I got a walkover against Indic in Dubai Open also. मतलब वो पहले के यार, वो पहले के 2 गेम्स देखे होंगे उसने, वो क्या भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ. बहुत हो गया. क्या पता. बट वही तो, इसके लिए ये मैच में ना मेरे को बिल्कुल डर नहीं है. मतलब मैं ही हरा सकता हूँ, तो भाई ये तो बहुत बड़े प्लेयर्स है. Of course. But still यार, what a flex. यार जैसे टिक्कू बोलता है ना, अर्जुन के साथ में ड्रॉ करा हुआ है, तो दिस इज लाइक माय फ्लेक्स. भाई फ्लेक्स अच्छा, बिकॉज 3 प्लेयर तो निपटा दिए, चौथा भी इंडियन टीम निपटाई देगी. एंड फिलहाल के लिए आया है बिशप h6 भाई. नाइस. नाइट E8 या नाइट H5 सहज भाई?
भाई नाइट h5 में आई थिंक आपका pawn structure टूट जाएगा because I can play queen g4, yes, and if I can just take on h5 ना, so you have to play Yeah, something yeah. like you have to capture gh6 जो बड़ा uncomfortable है I think उस position में, so maybe knight e8 makes more sense. Played, already True. played. Oh wow. Yep, defending the g7 pawn. Again, मतलब ये this is a very very dynamic position, hedgehog structure as we mentioned a bit earlier, and but you know वो proper hedgehog वाली feeling नहीं आ रही because you know pawn c2 पे बैठा है, तो I think still it feels a bit more not as explosive as the hedgehog, but change हो सकता है भाई, change कभी भी हो सकता है. Wow, so this will be crazy chat. And वहां से विदित गुजराती ने भी h4 फेंक दिया है भाई. तो विदित कह रहे हैं वो भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं बाकी प्लेयर से, यार लगता है मुझे भी कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. Maybe we can have a brief look at that game and then quickly go to Arjun's game as well. h4 साथ भाई हाँ sorry हाँ, let's complete this, then I have a fabulous game to show, and chat is absolutely right. भाई टिको भाई लिंक ओपन करो जो मैंने खोला है, मतलब जो भी स्ट्रेस है लाइफ में ना सारा कुछ उतर जाएगा आपका. Just have a look at that game. It's between Afghanistan and Papua New Guinea. Board 4 में ओपन में it's like वो किंग ऑफ द हिल जो वेरिएंट है chess.com पे, ये अफगानिस्तान का प्लेयर ट्राइड टू प्ले इट ओवर द बोर्ड आई थिंक. No ways भाई, show us. सही में भाई, सही में, नॉट इवन जोकिंग. नो, इट वाज एक्चुअली अफगानिस्तान प्लेयर जीता, तो पापा न्यू गिनी का प्लेयर व्हाइट से वाज प्लेइंग किंग ऑफ द हिल. ये चेसकॉम का ये 1 का लोगो हट नहीं रहा है, वो चाहता नहीं है कि मैं देखूं. भाई देख, अरे वो कार्ड दो ना, एक्स नहीं भाई कर रहा. रिफ्रेश कर. अरे ये क्या था भाई साहब. we can have a look from the start. बहुत छोटा गेम है. हाँ, so Caro can clearly, can give you good results भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है. Bishop B5, Bishop D7, Bishop D3 back. So it's a novelty. Knight C6, Knight C3, Knight F6, B3, E5. I think E4 might happen. या फोक लग चुका है. And Bishop B5 के बाद Knight मार दिया फ्री का, पॉन मिला, Knight D4, ये अटैक, और Bishop D3 के बाद अच्छा Bishop बचाया, रानी नहीं बचाई. ये तो मेरी टाइप की मूव है. King E2, Knight D4 चेक, King आगे बढ़ता हुआ, Queen E7 चेक, King घोड़ा मिल गया वापस, Queen C5 चेक, किंग खुद मेट करने जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन भाई थोड़ा सा रास्ता ब्लॉक हो गया, तो रोड ब्लॉक की वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा. भाई ब्यूटीफुल मेट ऑन E5. You know, bhai, if I was playing this game, I would do everything to find a pawn mate here. मैं कुछ भी करूंगा भाई. भाई ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहां पर मतलब H5 idea F6 mate says when Knight H5 right now. You know Rakesh bhai, we are thinking exactly the same. Exactly same idea. I agree. साहिल भाई को एक्सप्लेन कर दो एक बार, उनको शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया. अरे नहीं यार, टिको भाई 2200 है यार. He's strong. देखो इग्नोर कर रहे हैं that he cannot hear us. हाँ. अरे नहीं इग्नोर नहीं भाई, कुछ गिरने वाला था भाई सर. अभी सर्फ जाता तो मेरी 200-300 रेटिंग और नीचे गिर जाती भाई. That would not be good भाई. I think. Anyways, हाँ, so I think this was a beautiful game. बड़ा मजा आएगा उसको भी. ऐसी गेम्स बहुत होती है ओलंपियाड में चैट, बिकॉज कई बार प्लेयर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाइट अनरेटेड है, so it's a great exposure for players to come and learn. And फिलहाल के लिए किस गेम पे हम जाए राकेश भाई, क्योंकि हर जगह आग लगी है. अर्जुन की गेम भी देखनी है, किस पे जाएं, क्या लगता है? I think we should quick look at China versus Armenia. अगर हमारे games are done. China versus Armenia. Yeah, Ding Liren of course has not won yet. मतलब in Olympiad this year. और एक फन फैक्ट है, पिछले 8 ओलंपियाड्स में से 5 बार गोल्ड मेडल्स चाइना या आर्मेनिया नहीं जीते. So two big teams here. Wow. भाई this is going to be a crazy match because chat दो strong teams पिछले बार के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, एंड एक तरफ भाई चाइना जो 2018 में गोल्ड जीते थे. they were not playing last time, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच, 2 तगड़ी टीम्स का मैच, एंड इतना आसान नहीं होगा हेवी रेटिंग फेवरेट्स चाइना के लिए. तो बड़ा मजा आने वाला है. एंड डिंग लिरन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यार साज भाई. दिस इज नॉट इजी एंड ही हैज टू प्रूव दैट ही इज इन फॉर्म. बिल्कुल यार, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी द टाइप ऑफ मैच, लाइक दोनों टीम्स के लिए दिस इज द टाइप ऑफ मैच कि दे कुड बी प्लेइंग विद समवन पोटेंशियली
who's going to be fighting for the gold medal. I'm not saying any medal, like gold medal. Dono teams, I think, are very, very packed. Of course, I know Armenia is a bit, on paper, they don't seem as strong, but I mean, each player, I mean, Haik Martirosyan is, I mean, I think he was around some 3,200 on chess.com. I believe he has won title Tuesday as well, if I'm not mistaken. Like all players are just fantastic. Yeah, Karan Gregorian, I think he's my age, and I used to play a lot of world youths with him, and each time he was a fantastic player. So I think on paper this team is something to be careful about. Yep. I think देखेंगे the score of this match will be very very important. And कोई कह रहा है Prag lost. यार ऐसे मुझे सदमा मत दिया करो यार, क्योंकि I have to go and check. Oh, by the way, we are seeing something. So Bishop Castle के बाद, I think Bishop h6, knight e8, Bishop e3, knight f6. So could there be a potential repetition incoming here, Saj bhai? Actions speak louder than words, Rakesh bhai. Actions speak louder than words. It's happening. नहीं यार, I don't think so यार. Prag क्यों लेगा draw? Like, I don't know, advantage मिला नहीं है. Maybe it's possible. I don't know. I mean, उसका opponent तो आसपास के boards देख ही रहा है, but Prag भी तो देख रहा है. Prag भी तो देख रहा है भाई, ये जीत रहा है, वो भी better position पे है, तो like maybe it's time to take it easy today. But it's possible. It's possible. He might take the draw after seeing what Vidit has done. Tiku bhai, can we go to Vidit's game? 27 minute के सोच के बाद Vidit has played the second best move of the engine and showing some attacking ideas with h4. ये पॉन फेंकने के लिए आई थिंक अल्फा जीरो ने सबको इंस्पायर किया है. आजकल लोग उठा के बस फेंक देते हैं. तो सहज भाई यहाँ यूजुअली G6 में समझ में आता है, यहाँ पे क्या आइडिया भाई इसका? नहीं, विदित को पता है कि गूगल ने स्पॉन्सर किया है वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड अल्फा जीरो इज बाय डीप माइंड, बाय गूगल. उसको इसीलिए h4 भाई, दिस इज ऑल कनेक्टेड. We found the glitch in the matrix. But jokes aside, like h4 h5 is the idea. h2 to push h6. दो चीजें हो सकती हैं, either black plays h6, then we have that very very nice juicy hook. Bishop h6 मर सकता है, g4 g5 आ सकता है कभी भी. And if black doesn't play that, then we can push h6, and we know already भाई कितनी games में हमने देखा. I believe in the women's section, I think it was Divya or it was Vantika who had that end game जहाँ पे उन्होंने h6 पे pawn पूरी game रखा था, and she won that bishop end game very very comfortably. So we already know the कि इनके दोनों मतलब scenarios जो है black के लिए काफी dangerous हो सकते हैं. I think that's his plan. So let's see how Mr. Evich reacts. Yeah, will be interesting. And जो लोग कह रहे हैं Magnus forfeited, भाई कम से कम जो स्कैम करना है थोड़ा सा उसमें लॉजिक तो हो भाई. Magnus is clearly better. Didi भाई, I don't know if you have scams वो of Magnus. भाई वो Magnus forfeited के बाद विशी सर वन भी लिख रहे हैं. नहीं वो बात सही है भाई, विशी सर तो has won in life भाई, वो तो सही है. But हाँ, Magnus forfeit थोड़ा जम नहीं रहा. मतलब आपको एक स्कैम तो नहीं है, मतलब स्कैम से याद है, इट माइट साउंड स्कैमी, बट कल के गेम में वन अगेंस्ट आई थिंक इजिप्ट वर्सेस लेबनान मैच था, एंड इजिप्शियन एक प्लेयर जीता, बट एक रूटीन सिक्योरिटी चेक हुआ एट द एंड ऑफ द गेम, एंड उसके पॉकेट में ना एक एसडी कार्ड मिला, एक या दो, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज फॉरफिटेड. So which player was it? I'm not sure which player, but Egypt lost the match yesterday. Oh, so if SD card, wow. Yeah. Matlab, I believe there was a similar case in the women's world championship with an Indian player. Who basically वो एक walk पे गई थी and उनके पास AirPods थे, which was in the jackets, and Priyanka Nutaki, yes. And what happened was, she won the game, and then उनकी जेब में वो एयरपॉड मिला उसके, उसने बोला भाई मेरे पास फोन ही नहीं है तो मैं एयरपॉड कहाँ से यूज करूंगी. But still any kind of electronic device is completely banned, and of course rightfully so. We don't know the exact reason for that, but it's still very sad कि just because of an SD card they had to forfeit. Yeah, very sad. भाई सारे पॉकेट्स चेक करो भाई, ओलंपियाड खेल रहे हो तो कोई भी पॉकेट में कुछ भी पड़ा होगा तो भाई पंगे में फंस सकते हो. सब कुछ एक एक आइटम का भाई आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या है भाई.
सो चैट यहाँ पे बड़ा मजा आने वाला है. कार्लसन इज ऑफ कोर्स एज यूजुअल विनिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. चलते हैं एक बार अर्जुन की गेम पे, वहां पे कुछ हुआ है क्या आफ्टर द मूव क्वीन टू E2. अगर हम उसको देखें ध्यान से, ये कार्लसन की गेम है क्या बाय द वे? ओ वी हैव कार्लसन कैम्स क्या निधि भाई? कैन वी हैव इट बैक? इज दिस Yeah, कार्लसन? this is Victor ओ Gazik. Yes, this is Carlsen's opponent. Confirmed. ओ रुको रुको भाई, फिर तो भाई मैसेज करना पड़ेगा. साज भाई क्या लग रहा है इस पोजीशन में, कैसे यहाँ पे मैग्नस कार्लसन गेम जीतेंगे? It's a nice question. भाई इसमें क्या पूछ, यही है भाई. I love it, bhai. I love it. I love it. ये आ गया मैसेज आ गया. अरे there it is, the GOAT भाई, the greatest player of all time भाई, on time today भाई. आज ही कैमरा थे तो बिल्कुल टाइम पे, and there it is मैग्नस कार्लसन एंड उनके नेक्स्ट विक्टिम. क्या लग रहा है साज भाई, क्या प्लान होता है कार्लसन का? सेंटर तो वो लेने ही वाले. Yes, I mean, I think he has to push E4 at some point, पर अभी D4 का pawn attacked है ना, तो I think B3 bishop B2 E4 दिख रहा है मुझे, and I think he's already better here. I think he's already better here. कुछ crazy prep थी उनकी, and yeah, you know, opponent का नाम Victor है, but लेकिन I don't think that's what he's gonna feel like after this game. ट्रू बट ठीक है, आई थिंक उनकी गलती भी नहीं है भाई. एवरीबडी आई थिंक उनका ड्रीम होता है मैच को खेलना एंड पोटेंशियल उनसे स्कोर करना. सो ही इज काइंड ऑफ फुलफिलिंग दैट ड्रीम एंड इट्स ही इज गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम दिस गेम. आई थिंक प्लेइंग कार्लसन वन गेम इज लाइक अपग्रेडिंग योर स्किल सेट समहाउ. व्हाट डू यू थिंक राकेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल, कितना कुछ सीखने मिल जाएगा. एंड कल वो मैं इसके लिए बोल रहा था कि इवन द मैग्नस इज लेट, वो अपोनेंट चाहता था कि भाई आ जाए, मैं रुकता हूँ, मैं विन क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी प्लेयर्स टू प्ले मैग्नस. एंड ये बहुत ही बढ़िया ग्राफिक रखा है निधि भाई ने. मेरे को तो लेफ्ट साइड वाले प्लेयर को देख के तो एक ही चीज आता है कि मम्मी खाने में क्या है, मैगी मैगी मैगी. अरे राकेश भाई, मेरे को यूपीआई करने में मैगी के पैसे भाई मैं कर दूंगा भाई. आपने वही वाले भी लिए हैं क्या आज के लिए? हाँ वही वाले. पर लेकिन उन्होंने वो दुकान.eu से ऑर्डर करे थे, तो हर मैगी का जो प्राइस है वो मतलब इट वाज लाइक 10 यूरो. तो इट्स लाइक you owe like some 70 euros, you know. 10 यूरो टैक्स भी लगता है जर्मनी में, you know. दुकान.eu से इंडिया में ऑर्डर किए, फिर वहां पैक किया और फिर यूरोप लेके आए. अच्छा एग्जैक्टली. दुकान.eu से इंडिया ऑर्डर करे तो शिपिंग एंड टैक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट इज एप्लीकेबल. तो 70-80 यूरो लेके चलो अब, ठीक है. गॉट इट भाई. अगर मैग्नस से गेम हार जाएगा तो पक्का भाई शिपिंग चार्जेस पक्का दूंगा मैं. but what a great camera angle there. मतलब मैग्नस को बहुत ही बढ़िया से. एंड एज यूजुअल भाई, ये वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हमेशा स्मार्ट वाटर से पानी क्यों पीते हैं? स्मार्ट वाटर है उसके पास भी. It's the, I mean, नहीं, but यहाँ पर बहुत popular है that brand, you know. You find that everywhere, in every like supermarket or grocery shop. It's one of the most popular brands here. वहाँ का I think everyone is बिस्लेरी है. वहाँ का बिस्लेरी है. हाँ, बिस्लेरी मत समझो, like थोड़ा उससे, you know, थोड़ा high class उससे. Like it's more expensive than बिस्लेरी भी है उसकी एक brand, वो मैं आपको कुछ टाइम पे दिखा सकता हूँ. But लेकिन this is like a more expensive brand than that. टीकू भाई, वैसे आप बोल रहे थे ना कि डू यू फियर और डू यू फील लेस कॉन्फिडेंट इफ योर ओपोनेंट इज लाइक टॉल लाइक इंडिच? व्हाट अबाउट दिस गाय इन द बैकग्राउंड इफ यू आर प्लेइंग हिम, जो भी जस्ट चल के गए? आई थिंक आप डर जाओगे बिकॉज सो वेल बिल्ट, यू नो. यू फील अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट अगेंस्ट दीस प्लेयर्स. Yeah, and also the guy who's sitting, Rakesh bhai, I think उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा. I think Sahil bhai has a very valid point. I have to agree. And chat, I think कार्लसन का कैम हैंडी रखना निधि भाई. We'll come back to this because ये गेम तो पता ही है कहाँ जाने वाली है. So हम जाएंगे इंडियन बोर्ड्स पे वापस, क्योंकि भाई अभी धीरे धीरे गेम ना थोड़ा it's not looking as clean as it was earlier. यार जो 3-0 की हम 4-0 हम सनी सोचने लगे थे. चलते हैं गुकेश की गेम पे because he has castled queen side. So can we go to Gukesh's board and एक बार हमारी शक्लें भी लगा दो निधि भाई, जल्दी से देखते हैं कि गुकेश की गेम पे क्या चल रहा है. Last we saw, I think was knight E1 एक चाल खेली थी वहां पे प्रेड की अलेक्जेंडर ने, एंड उसके बाद बिशप D6, नाइट D3, वो E5 C5 स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हैं. यहां पे आता है नाइट E4, so he puts the knight in the center, bishop H6,
जहां पे हमें वैसे ही कुछ खाना नहीं था, वहां से उन्होंने प्लेट उठा ली, कोई बात नहीं। हमने खेला रुक G8, G2 ए प्रेशर, क्वीन C1 एंड आफ्टर क्वीन साइड कैसल्स, दिस इज द करंट पोजीशन। गुकेश 10 मिनट पीछे है। साज भाई क्या लग रहा है इसके बारे में? ये तो मात लग रही है। आई फील लाइक ही इज जस्ट गोइंग टू जिसको रुक G6 रुक G8 एंड कोई एक सैक आने वाला है G2 पे। भाई आप खुला अटैक है यार, मतलब किंग साइड पे कोई काउंटर प्ले नहीं है। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन? आई फील लाइक दिस इज लाइक क्लोज टू बीइंग ओवर ऑलरेडी, राकेश भाई। लाइक नहीं? या बट इंजन इतना सपोर्ट नहीं कर रहा, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। मतलब व्हाइट का प्लान या काउंटर प्ले क्या है? लाइक इट्स टू स्लो टू प्ले B4 A4 B5 ऐसा लग रहा है मुझे। और भाई ब्लैक तो पूरा चढ़ने वाला है, रुक G6 रुक DG8, ये G5 पे कोई तो कोई सैक्रिफाइस तो आने वाला है। सो आई थिंक डेफिनेटली गुकेश इन द ड्राइवर सीट, टिक्कू भाई। राकेश भाई, कुड द प्लान बी कि भाई आई एम गोइंग टू चिकन आउट अ लिटिल बिट, कि भाई मुझे अटैक नहीं करना, प्ले बिशप F4 एंड भाई मेरे सवाल अपने आप कैसे आंसर हो रहे हैं भाई? एनीवेज, एंड नाउ ही जस्ट होप कि भाई क्वीन ट्रेड हो जाए एंड आई हेड इनटू एन एंड गेम जहां पे मे बी व्हाइट हैज सम चांसेस। Yeah, Chances to definitely make a possible. draw, maybe chances to या make a या draw, but I don't think you have chances here. I think this is already, अगर मैं छोड़ भी दूं तो like what's going on? I सो फॉर get it. एग्जांपल, Maybe that's the idea. Maybe that's the idea. I do get it. I do agree, get it. But रुक G6 खेला, I think आप time हाँ, पे नहीं हो साहिल भाई, because if you take D6, Queen D6, Queen F4, then I have रुक G8 ना? oh that is nice. I don't So know if this is, maybe मतलब 91, G3 खेलने से पहले डर तो लगेगा आपको, 91 maybe खेलने से पहले भी डर लगना चाहिए यहाँ पे आपको यार। so do you take this or do you avoid this भाई? That is the question, critical question भाई. मैं ना चैट से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करता हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज आप बोलना मत, ठीक है? हाँ, चैट, आई विल प्ले द मूव रुक टू G7, ठीक है? एक बार साहिल एक बार चाल चल दो। कौन सा वाला, ये अब कौन सा वाला? वाला, कौन सा रुक वाला? रुक नहीं, ऊपर वाला हाँ ऊपर वाला हाँ, G7। नहीं 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 भाई, अच्छा अच्छा, ब्लैक के पर्सपेक्टिव ओके, से ऊपर वाला। हाँ 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 रुक 3 G7, रुक 6 G7, सॉरी। हाँ, यहाँ पे चैट पे कोई बता सकता है कि ये चाल प्रोफिलैक्टिक है? अब आप बता सकते हो कि ये चाल प्रोफिलैक्टिक क्यों है? ये थोड़ा डिफरेंट सा सवाल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। दिस इज नॉट लाइक रिलेटेड टू इंजन कोई चाल निकालनी, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ मैंने ये चाल क्यों चली है। कैन समवन टेल मी? एक सवाल है मेरे पास, मे बी ताकि आप सवाल पूछ सको। भाई समझ नहीं भी मतलब, आया भाई भाई। नहीं समझ तो आ समझ गया, तो बस आ बहुत गया, समझ बहुत बुरा था। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था भाई। नहीं नहीं, इतना अच्छा सवाल पूछा सहज ने। मतलब व्हाट इज ब्लैक थ्रेट? चैट बेसिकली आप एग्जैक्टली मतलब मैं ये क्यों ये चल रहा हूँ, सोचो। व्हाट्स माय थ्रेट एग्जैक्टली। हाँ जी साहिल भाई, मतलब चेस इंप्रूव कर रहे हैं नो, दिस इज समथिंग यू यूज्ड टू हाँ। डू इन 2014। इसका तो मतलब डियर एडिटर, इसका रील बनाओ। बेचारे सहज ने ना इतना सिखाने की कोशिश है और टिक्कू ने उसकी पूरी मार दी। मतलब 1 सेकंड के अंदर यार, बस मतलब बढ़िया। बस ये राकेश भाई लोग का, बोल रहे हैं E5 टू हैंग क्वीन इज नॉट हैंगिंग बाय द वे, E5 इज हाँ नॉट द हाँ थ्रेट। तो हाँ, चैट इसमें ना ये पूछना चाहिए कि अगर अरुणव, यहाँ पे भाई अगर मेरी Arunabh चाल is होती। there. Yeah. Arunabh is G is getting there. Knight fork से बचने, like he wants to stop the knight from attacking the G6 rook. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो व्हाट डज दैट मीन? उसके बाद की चाल आपकी क्या होती? दैट्स समथिंग तो टू थिंक अबाउट। हाँ, ऐसे सोच लो अभी ब्लैक टू प्ले एंड विन ये पोजीशन से चैट, हाँ टू एग्जैक्टली टू मेक इट एग्जैक्टली। इजियर। हम्म, लेट्स सी। प्रोटेक्टिंग द पॉन, दर्ज भाई, इज नॉट करेक्ट, क्योंकि प्रोटेक्टिंग द पॉन इज नॉट अटैक्ड, इट डजंट नीड टू बी डिफेंडेड। तो हमने A3 खेल दिया जिससे रैंडम मूव। अब ब्लैक का आइडिया क्या हो सकता है? तो यू कैन नाउ थिंक या ऑफ इट एज अ टैक्टिक। अब ब्लैक टू प्ले एंड विन। टिकू भाई हंस, मत अलग पूछना ही मुझसे मैं क्यों ट्रेजेडी हंस में रहा हूँ। हंसते हैं। मैं बोल नहीं भाई सकता कि क्यों हंस रहा हूँ मैं। क्यों मैं क्यों बोल ही नहीं क्यों हंस सकता रहे भाई। हो? अब मेरे को व्हाट्सएप कर दे यार, मेरे को जानना है। मेरे को भाई भी सुनना है चैट, यार, मेरे को भी सुनना चैट है पढ़ो ना भाई। भाई, चैट पढ़ो ना भाई, पता लग जाएगा भाई क्यों हंस आई रहा हूँ भाई। गॉट्स टू नो, आई गॉट्स टू नो। भाई अरमान का कमेंट है क्या? मुझे नहीं पता भाई आपके अरमान क्या है, मेरे अरमान में कुछ नहीं पता मुझे। एंड चैट दैट वाज बताओ भाई। फन। एंड द मूव आई थिंक वुड बी क्वीन F4, नाइट F4, यस रुक पे आद्या, अटैक नहीं है।
Adya हाँ Prakash Das has found it. Correct. हाँ यस बिल्कुल सही अल्ट्रा जवाब. गेमर यू आल्सो फाउंड इट इसलिए मैंने रुक जी7 खेला था दैट्स अ प्रोफिलैक्टिक मूव जो अपने गेम्स में भी आप लगा सकते हो इट्स अ वेरी वेरी हम्म कूल आइडिया टू लाइक पुट इन गेम साहिल भाई की बात कभी नहीं सुननी चाहिए ठीक है Oh, by the उनको way, इग्नोर he करो played f6. Oh, what is the idea here now? Is it Queen G7? could be actually could be queen g7 looks interesting to me बिकॉज ऑल्सो आपने कहा ना कि वो बिशप d6 मार के क्वीन f4 खेल के उसको क्वीन एक्सचेंज करनी है इसलिए वो उसने बोला भाई मैं क्वीन को ही g7 पे लेके जाऊंगा हाँ, नहीं maybe भाई I will क्वीन not take with d6 the नहीं आई queen थिंक now. मे बी इट हाँ टेक्स विद द रुक हाँ. Yeah, maybe this is the idea, and this is a great idea. Love this idea, bhai. Ooh, Gukesh anticipating भाई कि क्या खेलने वाले हैं Pred के, so putting pressure back on white कि भाई queen मेरी गेम में आने वाली है, also controlling an added bonus both squares, so no 95 controls of white, and who knows कल को on a good day कभी ये भी आ जाए. So फिलहाल के लिए गुकेश striving for a win here. Chat बड़ा मजा आने वाला है. And कितनी probability दोगे आप? हाँ या बोल. Sorry, continue. हाँ, कितनी probability दोगे जीतने के लिए गुकेश की इस गेम में? 72%. Okay, साज भाई. 72% -3 I'm मैं kidding वही I will सोचा say था like वैसे. I will say like 50% chance to win Nice, 50% nice. chance to win and Sahil by you I think I'll take the number जो आपने मिस कर दिया भाई. मेरा सपना है तो अच्छा तो अच्छा अच्छा anyways अच्छा फिलहाल के लिए भाई मेरा chat. सपना I है. mean I mean कि हद है गुकेश यार. जीते भाई, गुकेश जीते भाई, कैसे गुकेश जीते. Okay. And फिलहाल Well, के before we switch to another हाँ Indian game, can we quickly go to Shirov's game? Because Shirov is doing fire on the board yet again. हाँ. Saj bhai, take us through this crazy game which is just about to end. बहुत ही मतलब 30 seconds देंगे ज्यादा नहीं but craziness भाई between गुकेश भाई लाटविया में नहीं है ना शिरोव तो शिरोव ही सर्च कर ले भाई स्पेन में वो स्पेन वर्सेस स्पेन में. ओ हाँ स्वीडन या हाँ हाँ स्पेन हाँ. आपकी गलती नहीं वो बहुत बार चेंज कर चुका है तो आपकी गलती नहीं अच्छा है वैसे अच्छा हाँ that's true ये है क्या? ओ craziness if we can have a quick look सहज भाई talk us through थोड़ा मुझ पीछे से हाँ फ्रेंच एक्सचेंज ओ नाइट G3 F6 takes Ooh, rook knight g3 was F1 queen H5. Wow. Wow. कुछ भी what is this draw Wow. oh queen h5 was beautiful yaar beautiful move And that's the only move apparently. Wow. Queen Queen F6, Rook f6, Rook F1. f1, Queen f1, अब Queen j6 करके check. That was the idea of Queen h5. क्योंकि he wanted to bring the Queen back and अब perpetual होगी board पे. There is only one check here by the way, Queen d6 check. I think that would seal the deal. Yeah, and that's a crazy draw Very there, very भाई. crazy. Wow. भाई ऐसी गेम खेल के क्या फील आती होगी ना, स्पेशली अगर ऑन द बोर्ड निकाला है भाई. अमेजिंग. इंसेन बिल्कुल गेम. एंड चैट इसके बाद जाएंगे इंडिया के नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर. आई थिंक हमने गुकेश की अभी गेम देखी, सो लेट्स गो टू एक बार. आई थिंक प्रग गेम में कुछ हुआ नहीं है, इट्स जस्ट द सेम पोजीशन. सो लेट्स गो टू अर्जुन्स गेम जहां पे आफ्टर क्वीन E2 हमने अपडेट ली नहीं है. नाइट हैज कम टू C4 चैट, सो नाइट कमिंग इनटू द प्ले, कंट्रोलिंग सम स्क्वायर्स. आता है B3, धक्का लगता है लेकिन नाइट के पास एक और चंगा स्क्वायर है D6 पे, वो F5 पे भी जा सकता है यहाँ पे. अब आता है कैसल्स एंड नाउ the Indians' first preference yet again, King to F8, keeping the rook on the H file for an attack. और एक बढ़िया सा स्क्वायर है किंग के लिए G7 पे, जहां किंग लॉन्ग टर्म बैठ सकता है. और यहां से पिन से भी अब वो हट चुके हैं. आता है भाई नाइट E1 स्क्वायर से क्या फैसिनेशन है भाई इंडियंस की. इनफैक्ट पूरी सर्बियन टीम की भाई क्या हो गया ये. हाँ सब लोग 91 93 लेके बैठे हुए हैं. But this is really bad for him, no? This position is already really bad for him. वन वे ट्रैफिक लग रहा है सहज भाई. Only saving grace can be ये opposite color bishops, in some kind of an end game. I But तब तक believe पहुंच opposite color, but I think opposite color bishops are the reason why he is so bad. Because एक टाइम के बाद knight f5 bishop d6 वो बिठाएगा and लिख लो साहिल भाई g3 पे एक सैक आने वाला है. हाँ एब्सोल्युटली. g3 पे एक सैक आएगा जिसके ऊपर मतलब सीधी मात होगी.
एंड ऑफ कोर्स भाई Nice, अर्जुन nice. शाय अवे नहीं करेगा भाई. अर्जुन विल गो फॉर इट इफ इट एग्जिस्ट, इवन इफ इट इज कॉम्प्लिकेटेड, वो उसके लिए पक्का खेलेंगे. एंड नाउ आफ्टर 91 उन्होंने खेला, इनफैक्ट बेस्ट मूव फॉर सम रीजन वाज नाइट b5. वाओ, ओके, वेरी वियर्ड, बट क्वीन a5 खेला उन्होंने यहाँ पे. क्वीन वेंट इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड नाउ देयर इज रुक टू c1 सेविंग द पॉन. एंड बार को तो बहुत फेवर कर रहे हैं अर्जुन को यार, बट इतना व्हाट इज द प्लान हियर? ऐसा क्या हो रहा है यार, क्रेजी. भाई भाई वही तो, नाइट f5 बिशप d6 g3 पे. आई थिंक देयर इज अ अभी बोला मैंने यार. आपके बोलने से ना 10 सेकंड पहले, फिर उसके बाद मैंने सीधे मात का एक वो पन दिया. साहिल भाई ना मतलब ये बोलते हैं, फिर उसके बाद कुछ करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर उसके बाद वापस वही सेम सवाल. मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने ना इंजन की फर्स्ट प्रेफरेंस देखी एंड दैट इज c5. 95 इज सेकंड. भाई c5 थोड़ा क्रेजी लग रहा है भाई देखने में. It's more equalizing, I think. क्यों करना है बट c5? हाँ, मतलब जीतने में बढ़िया से वो नाइट सैक होगा, कुछ सैक होगा वहां पे. तो आई थिंक दैट लुक्स रियली गुड टू मी. हाँ, Correct. But with Arjun thinking, and you can see काफी difference, and I think Neshad ji in the chat is raising a great point. Has someone noticed all of our opponents are using more than the opponent? Is it some kind of a strategy that way, Sahaj bhai? You mean using more मतलब like आज using सारे less time? इंडियंस नहीं, आज सारे इंडियंस ज्यादा सोच रहे हैं और उनके अपोनेंट से भी नहीं. कम टाइम में. See, that's a misconception क्योंकि इंडियन प्लेयर्स स्लो नहीं खेल रहे हैं. सर्बियन प्लेयर्स यूजुअली बहुत फास्ट खेलते हैं. So it's the other way around. Okay. It's the other way. Okay. Indic I know is like one of the, I mean he's a very fast player. वो classical भी blitz जैसे खेलता है वो कभी कभी. You know, I know because I've been a victim of that. यार एक बार मेरे को पता है, in that game, वो वर्ल्ड जूनियर वाले गेम में जब 25 साल में मेरे पे उसने मेट करी थी, it was like he had 1 hour 10 minutes on his clock or something like that. मैं seconds में खेल रहा हूँ. He has 1 hour 8 minutes right now, Sahaj bhai. हाँ भाई, it is not, it is, वो सोच रहा है बहुत, उसके हिसाब से ना बहुत सोच रहा है वो. भाई लंच वक्त आता है, कई लोग पूरा लंच खत्म करते हैं, कई लोग पैक करके घर लेके जाते हैं भाई. तो ये वही टाइम पैक करके घर लेके जाएंगे आफ्टर पोटेंशियली ही लूजेस. तो मजा आएगा भाई चैट देखने में कि कैसे गेम प्रोग्रेस होती है. फिलहाल के लिए एटलीस्ट अर्जुन तो भाई क्लियरली बेटर लग रहे हैं, टाइम पे थोड़ा पीछे है, बट एज यू सेड कि इट्स जस्ट द सर्बियन प्लेयर्स प्लेइंग वेरी वेरी क्विकली. एंड चैट यार थोड़ा अपडेट हो चुकी है सारी गेम्स में. अब क्या लग रहा है, स्कोर कैसा रहेगा भाई? 4-0, 3-1, पोल भी मैंने डाला है और ओके, नो सरप्राइज 69% पीपल आर वोटिंग कि भाई 4-0 होने वाला है. ये नंबर से क्या फैसिनेशन है भाई, ये समझ नहीं आ रहा मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. साहिल भाई, राकेश भाई, I'll just be back in 2 minutes. Okay, please keep the show running. I'll be back in 2. BRB. Sure. And maybe if you can have a full screen to show what Arjun is thinking, ये critical moment लग रहा है मेरे को टिकू भाई इस मैच में, because कोई भी बोर्ड पे ना एक एज नहीं मिल रहा था. एंड अर्जुन इज द पर्सन टिकू भाई जो इंडिया को ना सबसे पहले लीड देता था. Yeah, absolutely. And Niri bhai, I don't know if it's possible to shift the camera slightly up, अगर वो नीचे क्रॉप हुआ है ताकि हम बोर्ड पूरा नीचे देख पाए, एंड वो बोर्ड उठा के हम सेंटर में रख देते ताकि we can see Arjun there. Like we can't see Arjun right now. वो बेचारा ऐसा लग रहा है बोर्ड के छुप रहा है भाई पीछे ऐसे. हाँ, but yeah, that would be a good angle if अगर बोर्ड ऊपर चले जाए, so we could see Arjun's full face. By the way, टिकू भाई, दोनों सीट पे नहीं है गुकेश और प्रग. वही, अरे अमेजिंग. Look at India, सारे के सारे गेम देख रहे भाई. एक गेम, कौन सी गेम है? This is I think Prag's game, या वो देख रहे कि क्या उनको रिस्क लेना चाहिए, और because it's a team tournament, ये सारे थॉट्स आ रहे होंगे उनके दिमाग में. Absolutely. And पता है, राकेश भाई, हमने ऋषि सर से खुद पूछा था कि क्या आसपास की गेम देख के फर्क पड़ता है. उन्होंने कहा एब्सोल्युटली फर्क पड़ता है, योर माइंडसेट कैन चेंज. तो ये आपसी टीम में से गेम देख के फर्क पड़ सकता है. वी कैन सी फेदोसिव देयर, प्रग भी पीछे बैकग्राउंड में वॉक करते हुए वहां पे. इट्स ऑलवेज गुड टू रिफ्रेश योर माइंड. ऐसे वॉक से आप कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है, बट ऑफ कोर्स यू कैन रिलैक्स अ बिट. वो टेंस मोमेंट से आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है. आर्यन तारी वहां पे लेफ्ट में दिख रहे हैं भाई. कार्लसन के साथ खेलने में कितना प्रेशर फील होता होगा तारी को. वो खुद ही उठ के आया था, मूव उनकी तब भी उठ के आया था यार, प्रेशर में नहीं खेलना यार.
मतलब सोचो ना, वो ऐसे घूर रहा है आपको कार्लसन की, भाई क्या गंदा चेस खेल रहा है तू। तो इट्स सो डिफिकल्ट बीइंग हिज टीममेट और फ्रेंड। नो प्रेशर। एंड चैट, आई थिंक 812 लाइक है, सो लेट्स गेट टू 1 की लाइक्स जल्दी से, ताकि मैं आपको मेंबरशिप दे पाए। राकेश भाई ने मेंबरशिप अनलॉक कर दी है एक, तो अगर वो अनलॉक रहेगी सिर्फ भाई अगले 5 मिनट तो 5 मिनट में आपको 1000 लाइक पहुंचना पड़ेगा। क्या पता वो लॉक हो जाए भाई की और चेन के अंदर। जल्दी से भाई लाइक कर दो, लेट्स रीच 1 के लाइक्स। एंड अर्जुन भी भाई कह रहे भाई 1 के लाइक्स पर मैं मूव चलूंगा भाई। यस यस, बिल्कुल सवाल रेडी है टिकू भाई, एंड जस्ट वेटिंग फॉर द 1K लाइक काउंटर, एंड डायमंड मेंबरशिप का सवाल आ जाएगा आपके सामने चैट। And by the way, Arjun has just played the move knight to f5। इसके बाद हम जाएंगे विदित की गेम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे साहज भाई का ब्यूटीफुल प्लान ऑफ बिशप d6 पुटिंग प्रेशर ऑन दिस g3 पॉइंट। आई एम गेसिंग कि ये रानी भी एट सम पॉइंट विल कम टू c7, एंड ये रानी बिशप नाइट रुक पोटेंशियली किंग g7 एंड डबलिंग अप ऑफ रुक्स, सब कुछ इन दोनों प्यादों के पीछे। एंड 2 years before भाई मुझे जाना था क्या बोलते हैं यूरोप, और तुमने भाई मुझे अफ्रीका से बैन कर दिया। तो बढ़िया भाई, चलो यूरोप चलते हैं, क्वीन c7 अटैक करते g3 के ऊपर। तो बढ़िया लग रही है मुझे अर्जुन की पोजीशन। आई थिंक ही इज ऑल सेट टू विन दिस विद द ब्लैक पीसेस। एंड उस जगह प्रग व्हाइट से ड्रॉ भी करते हैं तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा वो होता है ना, लीवे मिलता है कि चलो ठीक है, वी कैन ड्रॉ ऑन अ कपल ऑफ बोर्ड्स। Yeah, I'm pretty confident about Arjun. So chat is also demanding this. टिकू भाई, वीडी का गेम हो जाए प्लीज। एब्सोल्युटली, लास्ट हमने देखा था भाई पॉन h4 फेंका था वीडी ने, जहां पे या ये प्लान या इस पूरे ओलंपियाड में बहुत कॉमन है राकेश भाई। एंड यहाँ किंग h8, this feels like a bit of an overreaction maybe, but regardless h5 pawn बढ़ते हुए और pawn to h6। तो राकेश भाई bishop f4 queen 3 and boom let's go भाई। लुक्स ग्रेट ऑनेस्ट, एंड एक ही दिक्कत है व्हाइट के लिए, मतलब वीडी ने अगर A3 चला होता तो ये नाइट हाँ B4 नाइट D5 नहीं आ रहा होता, एंड दैट इज व्हाट इज killing his prospects of bishop E3 queen D2 या bishop F4 queen E3। so that is थोड़ा सा सैड वीडी के लिए, बट डेफिनेटली ये H4 H5 H के बाद जो एक वीकनेस क्रिएट किया वीडी ने, दैट इज नाइस। बट टिकू भाई एंड चैट, आप लोग बताइए मुझे कि आर यू अ लिटिल वरिड अबाउट वीडी बीइंग 15 मिनट्स बिहाइंड ऑन द क्लॉक? दैट्स अ गुड पॉइंट है। जैसा हमने पहले नोटिस किया कि इंडियन प्लेयर्स सब ही थोड़ा थोड़ा पीछे हैं। आई थिंक दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली ट्रीटिंग दिस मैच अ बिट मोर सीरियसली, क्योंकि उनको 2700 नंबर दिख रहा है। दे नो कि दिस इज नॉट इजी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम प्रेशर का फैक्टर रहेगा। बट एक चीज है राकेश भाई कि हमने देखा कैंडिडेट्स में भी इंडियन प्लेयर्स वर यूजुअली बिहाइंड ऑन द क्लॉक। याद है कितना प्रेशर था, बाय गॉड कितने नर्वस मोमेंट्स आए थे भाई, मतलब गोलियां खानी पड़ रही थी भाई स्ट्रेस हैंडल करने के लिए। लेकिन वही उनको एक्सपीरियंस भी यहाँ हेल्प कर सकता है, एंड आई एम होपिंग कि दे विल मैनेज दैट क्लॉक रियली वेल। यहाँ पे इंक्रीमेंट भी है उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड आई थिंक वी कैन सी यान गुस्टाफ्सन ऑन द राइट्स राकेश भाई। बिल्कुल, जर्मनी के कैप्टन है, एंड आई थिंक चैट इज प्रीटी कॉन्फिडेंट। चैट इज सेइंग नो नो, सिर्फ आरना जी बोल रहे अ लिटिल बिट वरिड बट 15 मिनट्स इज फाइन बोल रहे आनंद भाई, एंड आई एग्री, क्योंकि इट्स थोड़ा सा डिसएडवांटेज है टाइम पे, बट इट्स नॉट अ वेरी वेरी ट्रिकी पोजीशन। तो आई थिंक Yeah, वीडी विल बी एबल टू सर्वाइव, एंड मे बी नॉट मे बी, आई डेफिनेटली विन दिस एज वेल yeah, फॉर इंडिया। I absolutely, and actually, by हाँ I agree अरे भाई with भाई that. भाई भाई मैं काफ के एक्शन के लिए भाई, मैं काफ के एक्शन के लिए भाई Oh, नहीं sorry, मैंने देखा नहीं कि हम लोग वो फुल स्क्रीन पे थे. Sorry about that. Carlson, But yeah, भाई. Carlson, Carlson at India's board, by the way. Oh, can we look at another angle? Maybe he's still there. मेरी भाई, can we quickly go and see? Maybe एडिटर साहब हमारे बहुत खुश हो जाएंगे देख के। हाँ, बी रोल मिल गई, रील आइडियाज मिल गए। And by the way, Vidit has played bishop f4 chat, so he has developed his last minor piece. तो भाई ऑल सेट है हम लोग, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट पोटेंशियली यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस हो सकता है। जैसे नाइट यहाँ आएगा, इवन दो इट कंट्रोल्स d5, बट दैट आल्सो अलाउज रुक d3 रुक g3। तो ये गेम बहुत ही टैक्टिकल कुछ टर्न हो सकती है। एंड साज भाई, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये टाइम फैक्टर क्या विदित के लिए एक वरी हो सकता है क्या, जो टाइम पीछे है वो?
I wouldn't say so because I think it's 42 minutes versus 58 minutes. I don't think this is a very big difference. मुझे लगता है कि टाइम जब टाइम ओपनिंग में अब जितना टाइम मिलेगा भाई अपोनेंट से ना 20 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए मैक्स. उसके हम अंडर है तो आई फील प्रीटी कॉन्फिडेंट. एंड ऑल्सो विदित ने एक बहुत बढ़िया अटैक भी किया हुआ है. आई लाइक दी H4 H5. आई लाइक बिशप F4. मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बहुत अटैकिंग के चांसेस हो सकते हैं विदित के. तो इट इज वेरी मच लाइकली कि ब्लैक बहुत सोचे टू फिगर आउट द बेस्ट डिफेंसिव वे. तो ज्यादा प्रेशर आई थिंक ब्लैक के ऊपर होगा अभी. आई थिंक टाइम बहुत जल्दी लेवल भी हो सकता है. तो आई एम नॉट एज वरीड अबाउट इट फॉर नाउ. या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. जब अटैक लगता है तो भाई आपके हाथ कांपने लगते हैं. दैट्स व्हेन यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो अटैक तो आ सकता है. बिशप इज ऑन F4. योर हुक की आप बात कर रहे थे साज भाई. ब्रिलियंट पॉइंट. वी हैव दैट हुक नाउ. और किंग पोलाइटली उसके सामने बैठ गया है तो ये और भग गया भाई. चेक के साथ आएगा यहाँ पे जो भी आएगा. तो बड़ा मजा आएगा जब क्वीन ऐसी से पहुंचेगी. सो वील हैव अ लुक हियर. एंड राकेश भाई किस गेम पे चलना है नेक्स्ट? आई थिंक फिलहाल के लिए कोई एक भी हमें वो एक विन नहीं मिल रहा है अर्जुन के अलावा. एंड ग्रेट पॉइंट बाय निरी. ही सेइंग किंग H2 रुक H1 किंग G1 रुक H3 रुक G3. ये भी एक तरीका है. मैं तो कह रहा हूं भाई इस नाइट को कहो भाई अरे D5 स्क्वायर लुक D5 लुक D5 जैसी जाएगा भाई रुक D3. हाँ भाई रुक D3 लुक्स रियली गुड भाई. रुक A3 रुक G3 भी पॉसिबल है भाई. अरे हाँ दैट फैंटास्टिक रुक लिफ्ट. भाई ये लग रहा है ना ऐसे प्रमोशन है यहाँ पे भाई. जीती स्क्वायर सारे रुक लड़ाई करेंगे. मुझे जाना है नहीं मुझे जाना है भाई. हाँ ऐसी भाई. फीलिंग आ रही है मुझे. So this will be amazing chat. कोई ना कोई रुक I तो think यहाँ आ सकता है. while the Indian men find their first winning advantage, can we have a quick look at the women's section? क्योंकि Vaishali has sacrificed a pawn Oh, and it's looking tricky for India there. let's Even go. So Harika's opponent pressing और मतलब थोड़ा सा नजर we have to be careful here सहज भाई for the women's team. Yeah, that's true. भाई बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे तो if it's possible can we go back? Yeah, there we are. Harika, this is Harika's game, no? Yeah, Yes, this is Harika's Harika's. Yeah. that. भाई that G3 and H3 is looking a bit scary. H4 खेलना इस पोजीशन में feels a bit unnatural क्योंकि H5 नहीं खेल सकते आप. तो या also बिशप G4 भी आ सकता है ब्लैक की तरफ से. एंड देन वो पिन बड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर. So yeah, looks a bit uncomfortable indeed. Yeah, agreed. And Vaishali's game पे अगर आ जाए देखो भाई तो same opening as Arjun if you guys remember, and she played H4 by the way, but let's stick to this. Pawn sack किया यहाँ पे opening में सहज में. Oh, very interesting actually. कोई compensation तो दिख रहा है. B file पे you have an open file. B2 पे थोड़ा pressure. रुक B6 C5 आ सकता है. और व्हाइट की क्वीन भी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपोज्ड है तो हमें बहुत सारे टेम्पोज मिल सकते हैं while we kick this queen away. तो थोड़ा बहुत compensation है but I am not sure if it's going to be enough for now. जब कॉम्पनसेशन के लिए एक्टिविटी चाहिए होती है. किंग पे थोड़ा अटैक चाहिए होता है. अपोनेंट के पीसेस थोड़े से वियर्ड होने चाहिए. आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट. लाइक व्हाइट का नाइट A3 पे थोड़ा ऑकवर्ड है. रुक A1 पे एकदम घर पे बैठा है. बिशप C1 पे वो B2 के पॉन को बचा के बैठा है. आई एम सीइंग लिटिल बिट ऑफ दैट. तो थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन तो है पर लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स सफिशिएंट. Great point. And time पे भी थोड़ा सा पीछे है Vaishali. So she will need that time to create that counter play. So Vaishali and Harika I would say slightly under pressure for now. And Divya लेकिन is doing a great job. उनकी position तो बढ़िया लग रही है. And after I think we saw A4 last. She did play knight D5 afterwards. मारा knight को धक्का knight A5. And chat ये होती है class. Not taking the knight, not letting her take it. Knight to D2. With the idea of making this knight look stupid and knight शायद साज as you said knight E4 भी जा सकता है आगे जाके. तो दिव्या की पोजीशन तो अच्छी लग रही है. या भाई नाइट E4 का आइडिया तो है ही साहिल भाई पर उसके अलावा एक और बहुत बड़ा आइडिया which is to play B4 and the knight is trapped. Yeah. That is a very dangerous threat. Knight E4 knight E4 already लगता है कि this should be the primary threat. But if knight E4 is your secondary threat, that is a really positive sign, I would say. So I think she looks really good. Yeah, Divya on the offensive, definitely not making friends with Mitra. Yeah. Bilkul. Also, fun fact by the way, Arjun is playing against the Serbian champion, which is Indic,
and I believe Divya is playing against the French champion. Oh, She और is the दोनों ही French चैंपियंस women's. हारने दोनों वाले हैं. चैंपियंस आज दोनों चैंपियंस आज हारेंगे. yeah, But yeah. on very interesting सहज भाई, क्योंकि ना throughout the 3-4 rounds अभी अर्जुन एंड दिव्या आर द वंस जो टीम को सबसे पहले जिता रहे हैं, आप विनिंग पोजीशंस में आ रहे हैं. Yeah, and rightfully so. Yeah, I mean, he's on board 3. I mean, it's like, you're putting like, Iron Man, and in जहाँ पे Hawkeye की जरूरत होती है, वहाँ पे Iron Man बैठा हुआ है, तो of course, so that makes a lot of sense. Yeah, that makes a lot of sense. Yeah, and chat यहाँ पे पहले 2 overs पे हल्का सा वर्स, थर्ड पे we are close to winning, and board 4 also I think looks interesting. Which side would you give a slight preference to, Rakesh bhai and Saj bhai? I honestly I like the white side here. फटाफट white की डेवलपमेंट है. This bishop is really worried. मतलब क्या करोगे आप? Bishop pair दोगे यहाँ पे, bishop into c3 से, या bishop पीछे लेके जाओगे? And this g4 g5 idea is quite tempting for white, and I just feel white has a good edge. But Tanya के लिए one thing is working, is opponent is around 12-13 minutes down on the clock. True भाई, very good point. And also, white के लिए यहाँ पे what works is अगर कोई sack आए board पे, कोई कुछ sack करना चाहिए white को, like in the next 5 to 10 moves. अगर वो sack नहीं आया तो I think white की position खराब हो जाएगी. This is that type of that type of a position I feel. So I think we'll see. And you are very right. You very rightly pointed out कि भाई time यहाँ पे 38 minutes है, which of course is not as big of a difference, but still opening का ही phase है. तो टाइम बहुत जल्दी, इट्स वेरी मच लाइकली कि बहुत जल्दी हम टाइम प्रेशर में आ जाए यहाँ पे. तो आई थिंक अ टफ सिचुएशन फॉर व्हाइट, बट स्टिल अगर मुझे व्हाइट या ब्लैक में कुछ चूज करना होता तो आई वुड हैव गॉन विद राकेश भाई's चॉइस. आई वुड आल्सो पिक व्हाइट हियर, क्योंकि मुझे सैक करना बहुत पसंद है. साहिल भाई, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, white looks better, but again I think 3 board पे we are in that situation जहाँ पे हम हल्का फुल्का struggle कर रहे हैं, but of course we know the experience they have. अगर वो वापस आ जाए वहां से, Divya is most likely to secure the win for us. So यहाँ पे फिलहाल के लिए I think it's right in the middle. 3 में हल्का सा worse, 1 में winning. We'll come back to this. अब जाते हैं open section में. I think we start from the top. No. We all love VD, Tiku, but we should go to Prag's game. Draw incoming. Draw incoming really? On Prag's game. Because so we saw it till I think bishop e3, right? Knight f6, and you're thinking कि शायद कुछ repetition हो सकता है. Knight b3, knight, by the way, apparently there was knight a4 as a move. What? Knight a4, queen c2. Crazy stuff. Wow. Oh, bhai sahab. Oh, this would have been insane. Knight b6, queen b3, rook d3. Baap re baap. Bhai, this would have been crazy. And this is a repetition. Wow, this would have been a repetition. ये तो बहुत ही crazy सा repetition है भाई. बहुत crazy repetition है. And knight d7, knight d2, rook d8, knight c4, knight c5, rook d2, knight h5. So is this a repetition? So after, I don't know, queen moves somewhere, queen h3, queen g4, knight f6, and queen back. And I was just trying something. Sorry to cut you off, Sahaj bhai. कि मैंने बोला कि अगर मैं ट्राई करूं व्हाइट साइड से, तो लेट्स प्ले क्वीन h3, नाइट f6 बैक, क्वीन g3, नाइट h5. तो ब्लैक सराना को चाहिए. बट एज प्रग, व्हाट इफ प्रग प्लेज रुक f to d1, क्योंकि उसने रुक d2 खेला था डबल करने के लिए. बट नाउ सडनली पॉन टू d5 ब्रेक आ रहा है, एंड व्हाइट पीसेस आर हेवायर, एंड ब्लैक को मिल रहा है एडवांटेज. सहज भाई, yeah, and very rightly you pointed out, and this is where we are missing that pawn on c4. हमारा pawn c2 पे, अगर pawn c4 पे रहता तो d5 push अभी इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं आता. That's the difference in this position. Very rightly pointed out. And I think black ने knight h5 इसीलिए ही खेला है, क्योंकि queen g3 पे वो black की queen को पिन करके बैठी थी. तो इसलिए knight h5 खेल के उसने उसको हटाया कि भाई मुझे d5 खेलने दो. And I think Prag's choices are कि भाई either he agrees to a repetition or he allows d5.
I think taking the repetition might not be the worst idea, considering कि बाकी boards पे, I think we are looking more or less fine. Gukesh also looks really good. I think जीतने के chances बहुत अच्छे हैं वहाँ पे. And Arjun, I think not so surprising, and he's already very close to, at least he's clearly better, maybe even winning. Yup. And also Serbia का strongest opponent है, that would not be a bad result. And also considering कि if he knows potentially कि he might have missed knight b5, तो वो indecision जो है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी future decisions भी impact करता है. तो knowing that this might be a good practical try to take the repetition, and of course objectively if d5 is incoming, then you could be worse. And the last thing you want to do is lose with the white pieces, bhai. That would be very risky. Yeah, bilkul Tiku, very well put. And fun, like not a fun fact, but interesting question to Sahaj bhai. Would Prag play knight b5 अगर वो एक individual one-on-one match होता rather than a team tournament setting? I don't think he would have, क्योंकि मुझे लगता है कि at these decisions it's very hard to kind of incorporate वो team वाला जो factor होता है, because I feel every player has won each of the match that we have. I mean, we are leading the tournament. I feel like the players are feeling super confident. It's very likely कि he genuinely believes कि f3 was a better move there. Of course, हमें computer के सामने लग रहा है bishop f6 knight b5 is good, and we are right, of course, but when you don't have that choice, it is a very difficult decision to choose to sacrifice a piece. वो mate नहीं है, कोई कुछ नहीं है, just compensation के लिए just ऐसे ही cp sack करना is not an easy decision. So I don't think he would have done it even in a one-on-one match. But yeah, I think a draw is incoming, bhai. Yeah. A draw is incoming. Draw would not be so bad. And I think Prag did just play something. He has played Queen h3, by the way. This is the constitution. 2 updates, chat. Number 1, apparently Ray Robson is losing for the United States against Ukraine. Great news. So before we go to the Arjun game and then again the Prag game, as it might finish, one short look at the Ray Robson game. भाई ये प्यादे यहाँ कैसे पहुंचे, मुझे पता नहीं था इतना दूर जाते हैं. This looks beautiful for Ukraine, bhai. Yeah, this looks clearly like deadly for him. Yes, knight c3 आ रहा है क्या? Knight d5 मरेगा in the next move. Is that the move? That is the भाई best बोल के मारूंगा, ऐसा है ये. Yeah. And look at we this. all know what we are thinking right now. Bishop e6, bishop e6, and the move is e4. Oh, crazy. Beautiful, bhai. So this is like ये pawns आज supercharged होके आए हैं भाई. I don't know कैसे. So Ray Robson might cost US an entire point, and बाकी तीनों board पे अभी tie चल रहा है. टिक्कू भाई, on that note, let's quickly wrap up the US versus Ukraine. Can we go to Ivanchuk's position? भाई Bishop अटक गया the legendary Ivanchuk का F1 पे. Oh, what a position! What a crazy position! Wow. ये क्या है भाई ये position? भाई I don't like this for white so much, क्योंकि Bishop F1 पे यार बड़ा dangerous लग रहा है. मतलब वो अभी तो निकल नहीं रहा, अगली 2 चाल में भी नहीं निकलेगा, because Bishop भी attacked है, G2 भी नहीं है, E2 भी नहीं है, तो you need to figure that out. That's not an ideal position to be in. A bit risky for sure. वही समझ नहीं आ रहा है इक्वल कैसे है भाई, वही तो समझ नहीं आ रहा है भाई. बाहर तो कह रहे हैं 0.00, but how? Is it Bishop f6? Bishop f6 तो सही नहीं लग रहा. Bishop d2 perhaps, to stop any c3 ideas. Yeah. And black के पास कुछ वो tactical blow नहीं है यहाँ पे, I guess. G4 is the next idea. बाप रे भाई ये position तो craziness here, and but USA might lose 2 matches, and yes, let's go quickly full screen Prag game. Draw incoming, Sahaj bhai. They have repeated twice now. Oh, Prag is not, he's not gonna be happy क्योंकि वो white से draw कर रहा है, and we know कि Prag is always a fighter, he plays every single position, so white से draw लेना would not be an easy decision. Now राकेश भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया था कि अगर ये टीम इवेंट की बजाय अगर ये one-on-one इवेंट होता, would he have found knight b5? Now I will ask you another question. अगर ये one-on-one इवेंट होता,
So would Prag actually take this draw? I think so he would, because Prag is a great player and उसके level पे he realizes because उसने वो chance नहीं लिया knight b5 का, and hedgehog structure में pawn नहीं है white का c4 पे, because of that this d5 break is very risky. तो queen g3 खेलना ही पड़ेगा to pin the pawn against the c7 queen. टिको भाई, if you can draw an arrow chat के लिए, तो क्वीन g3 का आइडिया ये नहीं है कि सिर्फ क्वीन को गेम में लाना, बट ये पॉन को पिन कर रहे हैं. एंड इफ इट डजंट डू दैट, d5 के बाद ब्लैक इज टेकिंग ओवर. एंड भाई प्रग को तो हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली मोर इन अ टीम टूर्नामेंट. सो आई थिंक टीम हो या इंडिविजुअल, प्रग वुड टेक द ड्रॉ एंड वी माइट सी इंडियाज फर्स्ट ड्रॉ इन दिस मैच टुडे. Yeah, you're right. You're right, bhai. I mean, I simply put, there are no moves actually that he can play besides Queen G3. So I think he will just go for the draw. Yeah, I खेला think that खेला. He just played that, Sahaj bhai. He just played Queen G3 again. No, I think वो delay है. I think he played Queen H3 on the camera, but it will happen. I think as of now, this is the last move. And अगर हम देखें ये position से once, twice, and 9 times he has played the move. And Hi, Sarara तो इमी तुरंत खेल दिया knight f6. He's so happy with the draw. Queen G3 is the draw, chat. Queen G3 and I look at VD. Look at VD. He's so focused. He has an eye on Prag's board and he realizes, because being the white players, Prag and VD को strike करना था majorly. So I think VD will be very determined to win this after looking at Prag's draw. And chat, एक चीज ध्यान रखना, whenever you are unsure, I think draw is not a bad result, because if you win the match points, ठीक है, अगर आपकी टीम 2.5 पॉइंट से सारे गेम जीत रही है, you are having gold. Even if you lose one, win the others, you are having gold. 19 points पे टीम जीती थी last time. So at the end ये बहुत important है कि मतलब आप टीम जीते, because हमने देखा tie break 2B, it is actually the points of the opponents, right? So if you keep winning, then वो tie break 3 might not even matter. So I think सबसे बड़ा फैक्टर है टीम जीतनी चाहिए. Score sometimes is not as important. So I think this is a very practically good decision from Prag to take the draw when he missed knight b5 and when black has a decent position and d5 आ रहा है, which is going to break the center apart. And white के pieces थोड़े से awkward हैं उस टाइम पे. knight है pawn के बदले, साज भाई ने कहा. तो I think यहाँ पे queen g3 a great move. जैसे अगर एक वो ऑप्शन होती चेस में कि हम पीसेस को ना फ्लिप कर सकते हैं, तो आई विश ऐसी एक ऑप्शन होती, तो पॉन c4 पे रख दो, नाइट c2 पे रख दो, बस. फिर प्रग खेलेगा ये सारी, मतलब पूरा गेम खेलेगा ये, पर देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. बढ़िया, नाइट d4 आ रहा है भाई. आई एम रेडी, लेट्स गो. एग्जैक्टली भाई, फिर d5 का खतरा ही नहीं है ना, तो देन यू कैन जस्ट then you can just very freely play on this position. But अभी I feel like Prag thoda sa busted ho gaya, because he cannot, I feel without giving up any advantage he cannot continue the position anymore. So yeah. I think taking the draw is the right choice. राकेश भाई, आपसे बिफोर यू लीव एक चीज है कि एक मेंबरशिप चैलेंज का सवाल आप पूछ लीजिए चैट से, क्योंकि 1000 लाइक हो चुके हैं. चैट अपना गूगल सब खोल लो. लेट्स गो राकेश भाई, सवाल करें मुझे. Chat, so हो जाए. Let me know सब लोग ready डाल दो chat में. Let me see if you guys are ready with your Google सब कुछ. And yes, in fact it's a fun question. टिकू भाई and सहज भाई के लिए भी है. निरी भाई, you are also listening. So question is, yesterday we saw Magnus Carlsen cycle to the tournament hall, but which grandmaster cycled his way from his city to Budapest for this Olympiad? भाई which grandmaster, कौन सा grandmaster उसके खुद के शहर से साइकिल करके बुडापेस्ट पहुंचा है? बताइए चैट. मोस्ट डेडिकेटेड grandmaster भाई. इस बंदे को भाई कौन है ये? Let's see. फाबी भाई, फाबी अमेरिका से थोड़ी आएगा भाई. But I feel it has to be a GM from Hungary जो बुडापेस्ट में ना रहता हो, who's living in a different city. So that leaves out non-Hungarian GM. Non-Hungarian. फिर तो Serbia is the closest country to. So Rakesh bhai, if I get on a cycle and I then get on a plane and then I get off the cycle, does that count? नहीं भाई, पाकिस्तान बोल रहा है भाई. पाकिस्तान में GM तो होना चाहिए पहले to.
So लेको पाकिस्तान में जब नॉट लेको नॉट सहज भाई सहज तो बुडापेस्ट में है ना मैं बोल रहा हूँ उसके सिटी जहां पे वो रहता है वहां से आया है कौन सा जीएम रिचर्ड रैपो नो नॉन हंगेरियन जीएम नो आई थिंक नो वन हैज फाउंड इट येट नो वन हैज Not oh a, yes I see the answer ऋषि दास is correct ऋषि दास यू आई थिंक आपने सबसे पहले आंसर दिया है वैलेंटिन ड्राग्नेव ऑस्ट्रिया का बोर्ड वन प्लेयर he cycled from Vienna to Budapest on a cycle for the Olympiad. So भाई congrats, उससे congrats, भाई एक Rishi बार bhai. ना चेक कर लेना क्योंकि इससे पहले किसी और ने भी बोला था ये नाम आई बिलीव मैं मेरे Uh, पास वैलेंटिन ड्रैग्नेव आ रहा है oh yes, आई विल 12 जस्ट hour study, 12 hour study ने पहले दिया है. उससे पहले भी किसी उससे ने पहले दिया है जोरोनोआ. So I think yeah, जोरोनोआ के पहले ऋषि दास भाई भाई क्या चल रहा है? So तभी अब no, चैट समझ रही है कि मैं वो ट्विटर पे टैग करने होगी कहता हूँ बिकॉज ये हाँ, पढ़ना मुश्किल नहीं है। नहीं it is ऋषि भाई, it is ऋषि भाई. हाँ मतलब मैंने सो चेक किया. ऋषि भाई अपना चेसकॉम यूजर नेम चैट में डाल दो जल्दी से भाई ताकि राकेश भाई मेंबरशिप दे पाए मिस ना हो जाए भाई डाल दो भाई वेल डन एंड दैट वाज अ क्रेजी क्वेश्चन भाई इनसेन क्वेश्चन भाई हाँ बढ़िया भाई 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 ओलंपियाड शोज दैट इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट मतलब ग्लोबल स्पोर्ट है हाँ सहज भाई नाइस राइट 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 एंड व्हाट अ क्वेश्चन यार आई मीन मतलब हाँ ये तो ऐसा सवाल है गूगल करके भी नहीं आएगा भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल और चैट ऑन दैट नोट अर्जुन इज बेटर गुकेश इज प्रेसिंग प्रग is might take the draw if you can have full screen Niri bhai या please on Prug's because handshakes incoming but chat it was a absolute pleasure and कल और मेंबरशिप के क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए बट टुमारो छोटा सा डिफरेंस होगा आई विल बी विद सहज भाई सी यू ओह सून अरे चैट सी अरे यू अरे सून अरे अरे नाइस नाइस एंड गो इंडिया जय हिंद see you bye see you soon बाय थैंक यू बाय राकेश भाई दैट वाज अमेजिंग क्या ही सवाल था एंड क्या ही जवाब दिया चैट ने भाई पता नहीं चैट ने निकाला कैसे होगा इसका आंसर यार मेरे को ये I समझ नहीं have आया no idea why I have no idea that was insane why your Google skills are just fantastic Rishi bhai that was insane yaar that was मुझे लग रहा है insane मुझे लग रहा है वो याद है वो कौन सा स्पोर्ट है भाई जिसमें वो लोकेशन देख के भाई वो पत्ते देख के नेम प्लेट देख के जियो गेसर तो जियो गेसर भाई वो वर्ल्ड चैंपियन लोग चैट में बैठे हैं भाई एक चीज बोली भाई साइकिल अरे ओके साइकिल देखे साइकिल नेम प्लेट साइकिल ये वो लोकेशन घास पत्ती कैसी है भाई कर करके लोग पहुंच गए भाई आई डोंट नो हाउ दे काइंड ऑफ अरे फिगर आउट that's crazy why that they were able to do it also भाई राकेश भाई ने कहा कि he's gonna be here तो कल we will be actually be side by side because वो बुडापेस्ट आज रात को ही आने वाले तो it will be quite crazy actually to commentate with him in person I don't think मैंने कभी commentary किसी के साथ करी है तो I think this will be a pretty nice experience साहिल भाई आप भी आओ यार किसी दिन बहुत हाँ मजे ताकि आएंगे तीनों एक जगह बैठ जाए ताकि नेट जाए तो भाई ब्रॉडकास्ट ही बंद हो जाए भाई जुगाड़ वाला नेट हमेशा चलता है ऐसी बात नहीं है हमेशा चलता है यूरोप पे भाई नहीं भाई जैसे कोक का फॉर्मूला दो लोगों को पता होता है जैसे फ्लाइट में दोनों पायलट एक ही खाना नहीं खाते हमारा इंटरनेट तो डिफरेंट होना चाहिए और जुगाड़ वाले इंटरनेट से भी आ सकते हो ना भाई नो हाँ भाई प्रॉब्लम्स देयर बिल्कुल 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 एंड चैट कमिंग बैक टू द गेम फिलहाल के लिए प्रग इज कॉन्टेम्पलेटिंग व्हाट टू डू हियर आई थिंक ही हैज नो चॉइस ही हैज टू प्ले क्वीन जी3 भाई लेट्स जस्ट गो फॉर इट प्रग आई थिंक दिस इज बिकॉज़ द थिंग इज साज भाई यहाँ पे टाइम जा रहा है आई नो इट्स द थर्ड मूव सो ब्लैक कैन नॉट रियली इग्नोर इट But just in case Prag decides to play, then he's already 23 minutes behind. We don't want that situation now. Absolutely not. Absolutely not. I mean, the fact that he's thinking so much, makes me think of course, he knows he should take the draw. And he's finding like कोई एक ऐसी crazy सी line हो जहाँ पे maybe मेरा advantage जहाँ पे black को थोड़ा सा advantage मिल जाए. But लेकिन the advantage is not as much कि it's not easy to convert. क्योंकि he knows कि white pieces है and he's the one who must score in this situation. So this is definitely not an easy decision for him to make. Yep. And it's the responsibility of the white pieces, I think, coming in play here. But ठीक है, I think he knows कि he is supposed to do the best for the team and Queen G3 आएगा on the board. So with this, Saj bhai, I think I really want to capture this moment. So do we wait here? Do we go to the next game? What do you think? I think we should maybe wait for just maybe a minute more and just see if Prag takes the draw. कुछ मुझे लगता है कि draw बहुत जल्दी आने वाला है यहाँ पे. Oh, and Arjun makes a move as well. Yeah, Arjun has just made a move as well.
कुछ happening चीजें हो रही हैं. So let's wait for a minute, chat, and I think we might just see it now. We might just see it now. And Sarana is not even at the board by. He's putting psychological pressure कि मैं board पे हुई नहीं भाई. जो भी खेलेगा, I'm ready for it. इमेजिन अगर प्रग अगर क्वीन जी3 खेलता है और वो क्लेम नहीं करता बिकॉज उसका अपोनेंट सामने नहीं बैठा एंड देन हिज अपोनेंट लुकिंग एट प्रग्स टाइम डिसाइड्स टू नॉट रिपीट द मूव्स क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट क्वीन जी3 के बाद ब्लैक को नाइट h5 खेलना फोर्स नहीं है ब्लैक कभी भी खेल सकता है it's already repeated by because this has happened thrice and he has built it is draw actually queen g3 is a draw it's already threefold but no it's a draw if a player claims it's a draw of course it's not if he has made the move already then Prag doesn't okay there we go he stops the clock there we go Prag is stopping the clock matlab he goes for the draw. And this is going to be the first result, chat. Just like yesterday, pehli game हमारी जल्दी खत्म. Okay, jaldi is like 2 hours 20 minutes in, but for a classical game, that's quite early. And that is the first result for the Indian team. That's a draw. And Saj, I think that's a pretty good result looking at the position. Yeah, looking at the position, definitely a good result, but of course not ideal because we had the white pieces here. But fortunately, Arjun, Hamara warrior, I feel is going to pull this one with the black pieces. He's already in a much better position, so hopefully there will be some compensation there. Yeah, great presence of mind to realize कि भाई claim करना है. Sometimes it can happen कि I've thought for 20 minutes and then you kind of just play Queen G3 and the black says भाई काहे का draw? हमें तो नहीं पता draw कैसे होता है भाई. So you have to be very, very cautious. And yeah, I think we are going to see handshake any second. And chat, that is half each, both for India and Serbia. And वहां से अर्जुन की game में moves हो रहे हैं. So we are just going to move through that game very, very quickly. यार सबके सब ना ऋषि के आईडी लिख रहे हैं बट आई थिंक इट्स योर ओन आईडी भाई चैट में यार ऐसे ऐसे मत करो बंदे ने तो बढ़िया आंसर दिया ऋषि आईडी आपको 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 मिल गया उनका आईडी या नहीं मैंने नहीं पकड़ा भाई राकेश भाई ने पकड़ा है तो भाई राकेश भाई से कनेक्ट करो जो विनर था भाई ये वाला मैंने देखा नहीं भाई तो आई होप नो वन इज लाइक टेकिंग द लाइक चेंजिंग द यूजर नेम एंड एनीथिंग लाइक दैट भाई वो एक बार चेक कर लेना भाई चैट कभी थोड़ी ऐसे कुछ करती है चैट को कभी देखना का यूजर नहीं करते ऑफ कोर्स गुड पॉइंट भाई गुड पॉइंट है ना चैट तो बिल्कुल सही सोचा है जिसको जो मिलता है चैट कभी भी उसको कुछ चीटिंग नहीं करती चैट कभी भी भाई वो तो जिसको मिलता है उसको पूरा देखे तो वो बंदा नहीं भी आएगा उसको नाम करेगी ये बंदा था भाई यार दिस वाज द गाय Yes, of course. And by the way, we have a handshake. The game is over, and I think I think Prag makes a draw. I think a good result. Judging by the position, judging by the clock. Yep, we have a half already on the board. Hopefully, the other players are able to convert. I mean, positions ठीक लग रही हैं साहिल भाई. I think we're still in a very, very good place. Yes, and let's go to Arjun's position immediately because that's the crunch game जहां से हमारी maximum hopes अभी हैं फिलहाल के लिए for a victory. And chat also from Serbia's angle, if I'm being honest, that was their strongest player. That was the only 2700 plus player they had. So कहीं ना कहीं पे looking at a draw there, it's also I don't know if it's demoralizing or not, but you feel like भाई strongest player तो draw कर पाया है. उनके तो चारों player लगभग बराबर ही हैं. तो यार what chance do I have? And that's something that might enter the minds of the players there. तो फिलहाल के लिए अर्जुन की पोजीशन आपके सामने है चैट. Let's go back and see कैसे यहाँ तक पहुंची. I think we saw B4 last जहां पे अर्जुन played Queen C7. Again ये G3 पे सारी सबकी नजरें तड़ी हुई हैं. F4 रोका उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे को कैलकुलेट नहीं करने का इतना कुछ. A5 ब्रेक करते हुए क्वीन साइड A3 रुक टू E8 सम डिस्कवर अटैक बीइंग थ्रेटन्ड एट सम पॉइंट. क्वीन साइड स्टेप होती है बट सहज ये E3 स्क्वायर बाप रे इट्स सच अ होल इन व्हाइट्स कैंप. I mean, it's going to be very risky. Knight E4 भी होल है भाई सभी होल है भाई. आता है knight to C2 F5. He's basically just dominating the square. Rook E1 King G7 Rook E2 Rook A8 playing around and यहाँ bishop 6. White ने ये खेला भाई Rook E2. What was Rook E2 Rook E1? What is he doing? Rook I mean, he's just getting access to the open file. What else is he supposed to do? And also, let's not forget, there is a huge time difference between Injich and Arjun. Injich still, being the fast player he still has 1 hour left on his clock. And Arjun is in 24 minutes. So, of course, position better hai. Position बहुत better hai.
And it's flexible as well. It's not like आपको बहुत direct only moves खेलनी है better लाने के लिए. आपके पास बहुत flexibility है इस position में, आप कुछ भी खेल सकते हो. But still, when it's a difference of 36 minutes, you have to worry a little, Sahil bhai. Yep, I have to agree with that assessment. And फिलहाल के लिए E file पे proper control है, कोई रुक नहीं आ सकता. A file खुल सकती है, that could be rook A2 coming in at some point. H file भी रुक है. So black के rooks are just setting the trends for the future rooks. Throwback Thursday करके सारे rooks फोटो डालेंगे अगली बार से कि this is where I want to be in life, and देखेंगे बड़ा मजा आएगा. And chat जल्दी से, I think I'm going to give you a challenge because भाई मजा आ रहा है and हमारी पहली victory could happen on this board. So chat, अगर आपने 1500 लाइक कर दिए अगले 7 मिनट में, तो हम देंगे एक मॉड एक बंदे को चैट में उसी समय आपके सामने. सो चैट, यू हैव 7 मिनट्स टू रीच 1501 लाइक. शगुन के लिए 1 लाइक एक्स्ट्रा भाई, निधि भाई के लिए. लेट्स गो चैट, जल्दी से लेट्स गो भाई. भाई अर्जुन की आंखें देखो भाई. अर्जुन ना, मतलब when he stares at a wall, वो वॉल भी कहती होगी अरे मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ. भाई खतरनाक है भाई. ये सच क्रेजी फोकस, राइट? इट्स खतरनाक कैलकुलेशंस. Of course, it looks very scary when it's backed with a 2782 rating. उसके सामने कोई भी बैठा हो बहुत डर लगेगा भाई, बहुत डर लगेगा. Yeah, absolutely भाई. So this is looking interesting. And Rook A2 played. So he went for that, and A file खुल चुकी है, and there's a huge pin on the knight. ये रुक बीच में क्यों अटक गया था बीच में? बहुत जल्दी है इसको यहाँ जाने की. I get it, brother, I get it. And Sahaj, now my question is, so we have a tempting A file, we have a tempting E file to challenge, we have a tempting H file we can use. So are we moving towards the A file now? Is that our entry point for majority of our pieces? Of course, knight E4 आएगा सही moment पे when we feel it's right. But is it time to absolutely dominate the A file with every single piece we have? Could be an idea. And Alex just played the move Rook E back to E1 because he sees black wants to take control of the A file. And although उसने पहले just अभी Rook E2 खेला था, he decides to come back and says नहीं, because you played Rook A2, I'll put my Rook on A1 and I will not give you control of the A file anymore. That's what he's saying. And also, I think at this level it is very, very difficult to retreat. एक चाल चल के उसको वापस लाना is a very, very difficult thing to do. And the fact कि Alex is doing that is him admitting कि मेरी position खराब है और मुझे ये पता है. Absolutely भाई. Look at the 4 moves he played. Rook E1, Rook E2, Rook E1, Rook E2, Rook E1. So 5 move लगातार ऐसी रही हैं. So clearly this is not what he wanted to play with the white pieces, and he's admitting कि he's clearly worse, and now it's up to Arjun to squeeze a win out here. देखते हैं chat क्या होता है. We are all set भाई. Likes नहीं रुकने चाहिए. You have 4 minutes to reach 1500 likes chat for the mod. Let's go chat. Yep, and also Rook A1 आने वाला है maybe, and him playing Rook E2, Rook E1 definitely is a sign of trouble. And of course, we should also point out, Sahil bhai, that Indich has been purposefully playing very, very fast. I think this is because he wants Arjun to go into time pressure. उसको पता है गेम में यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है. टाइम पे maybe he can trick him somehow. Arjun time pressure में आता है, maybe he makes an impulsive decision and maybe जो advantage है it could go away. That's his strategy right now. Yep, Rohan Sai is asking, sorry, I don't know anything, but is India winning? Let's just say India is on the offensive right now, and thanks to Erigaisi Arjun, because एक game draw हो चुकी है, and यहाँ पे we are basically cruising. The only thing is the clock. That's where we are facing some issues, but I have full faith that this is enough time for the world number 4 to squeeze out a better position. And Rook A1, this is White's challenge. ये उनका challenge है कि भाई मैं सब कुछ trade off कर दूंगा, and then I'm going to say it's close to equality. But Arjun will have a plan. I think it might involve Queen B8 or Queen B6, trying to bring the Queen also triple. Saj bhai, this is the true Alekhine's gun. नहीं भाई, Alekhine's gun के लिए Queen चाहिए होती है पीछे भाई. Queen चाहिए होती है पीछे, पर वो Queen भी आएगी पीछे भाई. Queen भी आएगी. Let's not worry.
सहज भाई, अरमान भाई पूछ रहे हैं सहज भाई कितने राउंड्स बाकी है, फाइनल कब होगा? भाई देखो, फाइनल राउंड इज राउंड 11। अभी हमने, दिस इज द राउंड 3, राइट? राउंड 3 और राउंड 4? राउंड फोर फोर राउंड फोर, सॉरी, राउंड 4। 11 राउंड्स है। दिस इज द फोर्थ राउंड हैपनिंग जो, पर ये ना, ये नॉकआउट इवेंट नहीं है, तो इट्स पॉसिबल कि 11th राउंड हमारा सबसे डिफिकल्ट राउंड ना हो। तो इट्स पॉसिबल कि हमारा सबसे डिफिकल्ट राउंड 6th और 7th भी हो सकता है। इट कुड ऑल्सो बी वेरी वेल भी कि ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स। तो ईच गेम, ईच राउंड इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये नॉकआउट फॉर्मेट नहीं है, तो जहाँ पे फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट। दिस इज कॉल्ड अ स्विस इवेंट। ऑल प्ले ऑल नहीं है यहाँ पे, तो एनी गेम कैन बी इंटरेस्टिंग। Someone is asking, what is this bye bye thing? I don't know. It's just become a habit, sir. It's just a habit. And for some reason, yeah, maybe we should we should reduce the frequency of that word for sure. And दादाजी कह रहे हैं भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है चेस के बारे में, लेकिन तब भी 1 घंटे से देख रहा हूँ बिकॉज नेशनलिज्म भाई, प्राइड हमारी देश की, होता है वो प्राइड आती है भाई जब देश जीतते हुए देखते हैं। ओलंपिक्स में हमने कितना चीयर किया भाई, इतने सारे लोगों को मेडल के लिए, एंड दिस इज द ओलंपिक्स वर्जन ऑफ चेस। तो भाई देश जीतना चाहिए एंड चेस सीखना तो एक बोनस ही है यार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कि रुके वन आ चुका है बोर्ड पे, अर्जुन अगेन इन डीप थॉट। ओके, ही जस्ट प्लेड क्वीन b6। या एंड चार आइडिया है कि इफ यू वर टू टेक दिस, मान लो सेकंड रुक आता है एंड यू प्ले रुक ए1, यू लाइक ओके आई एम गोइंग टू ट्रेड दिस नाउ, नॉट ओनली इज इट जस्ट क्वीन a6 क्वीन a7 व्हिच इज माय आइडिया, another idea which I just noticed is bishop takes d4. What? Yes, because knight takes you as a Oh, queen, queen yeah, takes, queen, of course, I mean queen, queen queen d4, queen takes, d4 and then is c2 का राइट मर गया भाई, ये तो लॉस्ट हाँ, है, ये तो डेड लॉस्ट है। queen knight is lost because you can't take with the knight because rook is hanging. And finally, the beautiful line is c takes d4, but then there is rook takes c2, attacking the queen. The queen takes the rook, but queen takes d4, checking the. Oh, that's not a check. That's the check, and rook is hanging. So, bhai, ye crazy version. Sahaj, is there a probability of white missing bishop d4? Any chance because he's playing so quickly? No, I think Injich is a very, very, very fast player, but he's also very sharp. Like वो बहुत बहुत fast calculate करता है, so that's what makes him such a dangerous opponent in blitz formats. I do not believe he will miss something like this. Impossible. I think he will go queen d3 perhaps, but you can see Injich is definitely not happy with this position. And how can you be, yaar? How can you be happy with a position like this? कुछ attack ही नहीं है आपके पास यार। या चैट, आई नो टुडा हार रहा है, आई नो रॉबसन हार रहा है, ये सब रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारे लिए कि स्ट्रॉन्ग टीम्स हार रही हैं, क्योंकि चैट ध्यान रखो, अगर यूएस चाइना ऐसी टीम्स हारती हैं तो दैट मींस वो हमसे पीछे रह जाएंगी। इसका मतलब वी वोंट इवन हैव टू फेस देम until the very end, जहां पे हम उनसे आगे होंगे, and then we will have the best chances to win. तो अगर दुश्मन वीक पड़ जाए तो भाई हमारे लिए तो आसान है ही है। एंड चैट, अर्जुन के लिए एक बार बनता है भाई, he has played, I think, just insane chess in this Olympiad so far. Nahi Saj bhai, every game he's taken crazy risks. He's come out on top somehow. What beautiful attacks, positional, tactical, सब कुछ. I mean, जो भी हल्के फुल्के डाउट्स है ना यार, अर्जुन को कहाँ रखे, maybe he's not played top players. भाई मतलब सारे डाउट अभी उठा के मतलब चुल्लू पर पानी में डाल देने चाहिए, बिकॉज ही हैज जस्ट प्रूवन कि भाई वर्ल्ड नंबर 4 क्यों है। अगले 60 सेकंड्स भाई, 69 अगर तुम्हें पसंद है भाई, अर्जुन ओपी स्पैम होना चाहिए भाई। लेट्स गो, और इंडिया फ्लैग के साथ भाई लेट्स गो। साज भाई कितना इंप्रेसिव प्लेयर है अर्जुन का यार। Absolutely, why the Iron Man, of course. I think he's definitely going to pull this one. देख के ऐसा लग रहा है भाई, and look at Injit's body language भाई. Just look at his body language. You know कि he's not happy. You already know he's not happy भाई. Yeah. ऑल्सो भाई चैट में ऋषि भाई लिख रहे हैं कि भाई वो कब डालेंगे साहिल। देखो भाई, साहिल भाई नहीं डाल रहे, ये राकेश भाई करेंगे। तो माय एडवाइस टू यू वुड बी टू कांटेक्ट राकेश भाई ऑन इंस्टाग्राम। उनका इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आई द रॉकी है, वो आपको पहले आप थोड़े स्ट्रीम में जाके वहां दिख जाएगा आपको। माय एडवाइस वुड बी टू कांटेक्ट हिम देयर एंड ही विल बी एबल टू पुट योर मेंबरशिप। बिल्कुल, इन अर्जुन ओपी इन द चैट चलते रहना चाहिए भाई, मुझे देखना है भाई, बिकॉज अर्जुन इज ऑन फायर भाई।
क्या ही वो विक्ट्री यहाँ पे दिला पाएंगे इंडिया को? एज ऑफ नाउ इट जस्ट लुक्स लाइक अ मैटर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे व्हाइट इज स्ट्रगलिंग, बहुत प्रेशर है। अगर वो मारते हैं दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द इशू। एंड अगर वो इग्नोर करते हैं, मान लो ही इज लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले समथिंग लाइक h3, गिव माय किंग सम ब्रीदिंग स्पेस, देन ऑफ कोर्स आई कैन प्ले knight e4, वो तो प्लान है ही। और आई कैन प्ले rook 8 to a4 फॉलोड अप बाय queen a7, बिशप d4 भी दिमाग में एंड ये भी दिमाग में। तो व्हाइट के पास मारना ही पड़ेगा साहज भाई, ज्यादा देर रोक नहीं सकते। Yeah, that's true. That's true. That's true. भाई, and also it's also very difficult for white. रुक ए वन तो अब खेल नहीं सकते. Maybe he goes queen d3. Maybe queen d3 सही लग रही है भाई. और तो कोई चाल समझ नहीं आ रही यहाँ पे मेरे को. But queen d3 के बाद आप क्या करोगे? Yeah, the अगेन bar rook is. a4, rook a4। I'll go. Can I go take stakes and rook a1 now? Is that possible? Okay, so oh, bishop d4 still works. But why? So Bishop what do you d4, play? cd4. cd4 आ रहा है ना भाई? But rook c2? Oh, rook c2. Oh, वही rook तो, c2. वही तो। Oh, that's bad. That's okay. Okay, रुके टू नहीं मारेंगे फिर. रुके टू नहीं हाँ मारेंगे. हाँ। We'll go. Let's say रुके टू की बजाय we'll go king f1. Like enough f1 profile. F1 या h1. I don't know. h1. Let's play maybe h1. h1, maybe Fine. h1, yeah. So I was thinking queen a7, so I keep this in mind still. Okay, now it's not a check, so it's not going to work, but still queen a7. Can I take on a2 now? मैं double capture करके रुके वन तो नहीं आ रहा. Maybe हाँ, that's not ideal. Okay. I won't play that then. But then what do I do? maybe just Maybe rook I a go rook b1, yeah. b1 again. Rook a Yeah, b1, yeah. and then you're hoping But कि भाई ये जो Alekhine's gun finally, हे भगवान, आ चुकी है, ये hmm, कुछ बंद से गोली नहीं निकलेगी भाई। Maybe then it's but time knight to, e4. Why yeah, knight e4 looks so dangerous, yeah. It's such an yeah, ugly position yeah। for white. Knight f2 आ रहा है Definitely. भाई, Knight f2 आ Hmm. रहा है भाई, that is so dangerous। Yeah, I mean maybe you go rook e2 probably. For the 7th time in the game भाई ये रुक यहाँ आ रहा है तो हाँ वही है वही. wow, this is very 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 dangerous, and I think this is the kind of position जो Carlson squeeze करता है ना, like you just, it's a matter of time, it will happen at some point, and यहाँ पे long Yeah. term hold करना will be very 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 difficult because threats queen side से आ रहे हैं, center से आ रहे हैं, it is possible to switch to the king side, so हर जगह से threat. So chat, Arjun यहाँ पे बहुत ही बढ़िया position में है, you can see him walking there in jeans and a suit, भाई मस्त वाला बंदा walk कर रहा है, he knows he's dominating the game, भाई बड़ा मजा आने वाला है। वहां से बाय द वे यूएस टीम में चैट फिलहाल के लिए रेयर ऑप्शन इज क्लियरली वर्स, Dominguez is slightly worse, but Wesley So is much better. तो ये यूएस टीम का सेटअप है अभी के लिए। हंगरी की टीम में बोर्ड 4 पे ड्रॉ चुका है, बाकी तीनों बोर्ड्स लगभग इक्वल है। इंडियन टीम में प्रग हैज ड्रॉन ऑलरेडी अगेंस्ट सराना, बाकी तीनों बोर्ड चल रहे हैं। इट्स टाइम टू मे बी हैव अ लुक एट द गुकेश गेम। साहज भाई हमने काफी टाइम से देखी नहीं है बिकॉज वी हैव रीच्ड एन एंड गेम देयर। सो हमने बिशप f4 देखा था, f6 is where we left it. Nidhi bhai, let's have the cameras for Gukesh on the screen. Bishop d6, rook d6 as we expected, queen f4, and now knight to e7. Again, engine की first, okay the stare भाई, Gukesh pieces को stare कर रहा है, opponent को पता नहीं। Rook c1, pairing c4 on a good day, knight g6, queen h2, not where you ideally want to be. And Sahaj, यहाँ पे apparently king b8 and king a8 getting out the c file was the most ambitious try to keep the queens on the board. But Gukesh also goes for a very practical try. Rook c6, queens have been traded, and ye current position hai. What do you make of this? Clearly, black is like tiny bit better with the knight on e4, active rooks, but is it the kind of position which he can squeeze down to win? I think the position is there. By the way, nice summary there. I feel there are plenty of chances because of that monster knight on e4. You know, it's almost like that knight is on an outpost. क्योंकि आप f3 खेल के उस knight को kick कर सकते हो, but then the g3 square becomes extremely weak. So you know, that knight can basically not be touched for the duration of this game, and I think that can be a bit annoying for white. But I think he can definitely squeeze this down, and knowing Gukesh, I think he is going to. I think he's definitely going to. It's very interesting, you know, dono white players from the Serbian team, you know, are in a much worse position already, you know, like 2.5 hours into the game. Yeah, I think वो white pieces का pressure उनको शायद feel हुआ होगा कि हमें जीतना है,
and that is not something easy to handle when you're playing the World Championship challenger who just won the candidates ahead of Fabiano Caruana, Nepomniachtchi. I mean, I mean, I could keep naming the list, Firouzja, and we just keep going. Prague with it, it's insane. So फिलहाल के लिए 0.5 India Serbia is the score. Prague has drawn. Arjun is close to winning, and Gukesh is a tiny bit better in the kind of position he's known to squeeze down again and again. सो साज भाई एक नजर मारते हैं विदित के बोर्ड पे भी. आई थिंक इट्स टाइम टू डू अ कंप्लीट राउंड अप. 2 गेम्स हम देख चुके हैं. सो लेट्स सी कि विदित के अटैकिंग चांसेस बन रहे हैं कि नहीं. निधि भाई, लेट्स हैव द कैमरास. एंड हमने यहाँ पे देखा था, आई थिंक बिशप F4 वाज द लास्ट मूव वी सॉ, जहां पे वो हुक की तरफ अपनी नजर डाल रहे हैं. नाइट D5 एज एक्सपेक्टेड, एंड बिशप वापस D2 पे आता है. A6, क्वीन F3, रुक C8 एंड नाइट टेक्स D5. इंटरेस्टिंग. एंड नाइट से मारने के बाद रुक A C1. ये ट्रेड किसके फेवर में था साज भाई? दिस नाइट ट्रेड दैट हैपेंड, एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ द पोजीशन नाउ? I think the trade might be in White's favor क्योंकि ultimately I think White wants to go bishop takes knight and he wants कि भाई black का भी IQP बन जाए. You know, then I think the position is more balanced, and then maybe you can do something on the C file. Maybe you can gain access with rook C8, rook C1, something like that. All in all, I think this is exactly the type of position जहाँ पे Vidit सबसे ज़्यादा comfortable feel करेगा. You know, Vidit we know is a very extremely positional player, maybe one of the best positional players in the world. And I think in a position like that he would feel extremely comfortable. There is no counterplay that black has. वो slowly यहाँ पे squeeze करने की कोशिश कर सकता है. So I think I would say it does favor him a bit. I would say he's maybe slightly better in this position. नीरज, कैन यू हैव द वीडियो कैम? एंड आई कोई कह रहा है कि भाई हिकारू को भूल गए क्या? भाई हिकारू को तो यूएस टीम भी भूल गई, तो भाई हम क्या करें भाई उसमें? हिकारू नहीं खेल रहा है भाई. सो हिकारू इज नॉट प्लेइंग फॉर द यूएस टीम. दैट इज अमेजिंग. Ding didn't drew. Bhai, I am going to quickly confirm that result at least. If Ding has drawn, he's had a bunch of draws. Yes. By the way, Sahaj bhai, board 1 China, Armenia China is a draw. Board 2 Armenia China is a draw. Board 3 and board 4 is right now equal. So that means it is possible Armenia might hold China to a draw and they might not have the full points after this round. That is an insane result, to be honest. It is it, and I mean, we've already stated that Armenia is definitely an underrated team. So they should not be underestimated just by looking at the rating. उनकी टीम में एक भी 2700 का player नहीं है, but still that's a team that should not be taken lightly. And I think this result is a very very big example of that. But that being said, Yu Yangi का जो game है against Gabriel Sargisian, I know according to the engine it shows equal, but White has an extra pawn. It's in an opposite colored bishop sort of situation. Maybe White can try to play this position a bit more. यहाँ पे squeeze करना भी, अगर for example यहाँ पे Magnus खेल रहा होता White से, Magnus तो हाँ, ये तो there is no chance Magnus will play this for the next like 5 hours. अगर आप वो 5 घंटे अगर आप इसको मतलब सफर करने के बाद, that is by the way English वाला सफर, not हिंदी वाला सफर, वो सफर करने के बाद अगर आप if you save it then you make a draw, otherwise you lose this. So I think this game is still a bit difficult for black to hold, and but let's see what happens. Board 1 and board 2 are a draw though already, which is a bit crazy to me. भाई मजा आएगा चैट यार. मुझे लग रहा है भाई ओलंपियाड हीटअप हो रहा है, एंड आज के दिन में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. एंड आई थिंक हमें अब चूज करना है गेम. आई एम गोइंग टू डिसाइड टू गो टू द अर्जुन गेम नेक्स्ट चैट, बिकॉज मुझे देखनी है विन भाई. विन देखिए हुए थोड़ा टाइम हो गया, 24 घंटे हो चुके हैं मुझे, और मुझसे रहा नहीं जा रहा यार. सो लेट्स गो टू द अर्जुन कैमरा नाउ. अर्जुन की स्टेयर देखने में अलग ही मजा है, क्योंकि हम उसके सामने नहीं बैठे, ओपोनेंट बैठा है. एंड साज भाई, जल्दी से एक विक्ट्री आ जाए जेब में तो भाई थोड़ा लगेगा कि हाँ भैया बाकी लोग का ड्रॉ हो रहा है, जहाँ पे रिजर्वेशन हार रहा है, चाइना ड्रॉ हो रही है, हम लोग आगे जा रहे हैं भाई. बिल्कुल. Also, Indich is thinking now after such a long time, already he spent about 13 minutes on this move. So already, वो time का भी जो disparity थी, it's getting less and less. Surely he's not happy with this. But ये position ना White के लिए इतनी खराब लग रही है देख के, like I almost feel bad for him. With the white pieces, you're not supposed to get this position right out of the opening. I really wonder what went wrong.
या आई थिंक वो गलतियां स्टार्ट तब हुई जब वो कुर्सी पे बैठे लाइक अर्जुन के सामने। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। एंड अर्जुन ने कहा भाई गलती कर दी, अब पनिशमेंट तो मिलेगी, एंड वही यहाँ बोर्ड पे डील कर रहे हैं वो। आई थिंक अर्जुन इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। एंड चैट, मेरा आपसे एक सवाल है, नोइंग व्हाट्स हैपनिंग हियर, अर्जुन की फॉर्म, is Arjun going to cross 2800 in this event? Just to point out, आज जीतने के बाद he would get like, I think 2.5, he will get like 3.5 points, right, Saj? Arjun. Yeah, because Arjun I is think on. Arjun will get 2.5. I think 2.5 no, या because तीन होंगे. अगर तीन अगर I तीन होंगे. think हाँ, I think तीन होंगे. 3.25 points आएंगे, so that will take him to 2785.5. And that Wow. means he's just like, I think, okay, if you assume 4 points, 4 points per match, that is just like what, 3 to 4 wins away? Bhai, that's insane, to be honest. I mean, he would be the second Indian ever to reach the 2800 rating after the legendary, Vichy sir. Yeah, But chat, it is happening, bhai. It is happening. chat, yes या no spam करो, and it's not going to 27, it will be 2785.5. I think वो 0.5 बहुत काम आ सकते हैं, ध्यान रखना भाई। मतलब भाई, मतलब जाहिल भाई, फनी चीज ये है, वो 2770 भी मतलब 2600 को हरा हरा के बना था, वो 2800 भी 2600 को हरा हरा के बन रहा है, भाई, like that is his strategy. but I think जब पड़ेगा यूएसए, it will be kind of a perfect moment जब वो 2795 होगा, सामने 2700 बैठा होगा, and then he will defeat him and reach 2800, and that will be an amazing moment भाई। ये ओलंपियाड में ना, ये मतलब अर्जुन का हंटिंग ग्राउंड है भाई। इट्स लाइक शेर को तुमने छोड़ दिया है शीप के बीच में भाई, किस भाई शीप बस दौड़ लगा सकते हैं भाई, खुश लोग तो पकड़े जाएंगे। Yeah, I think you're right. एंड भाई चैट सब यस लिख रहे हैं, एक बंदा नो नहीं लिख रहा भाई। एक बंदे ने बोलते ही लिख दिया भाई, ईशान भाई क्या है भाई, कुछ हो गया था। साज भाई, दिस इज अमेजिंग। आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर इंडियस मूव। फिलहाल के लिए हमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही किसी भी गेम में। जस्ट टू पॉइंट आउट चैट, एक अपडेट, हंगरी की जो टीम है, इट इज स्लोली काइंड ऑफ गेनिंग द एज ऑन द इटली टीम, जिन्होंने कल आई थिंक नेदरलैंड्स को हराया था 3-1। सो हंगरी माइट जस्ट विन लाइक 3.5, अ ग्रेट रिजल्ट। वहां से यूएस टीम इज स्लोली गेनिंग द एज ऑन 2 बोर्ड्स अगेंस्ट यूक्रेन टीम। एक बोर्ड पे ओवर्स है, तो दे माइट आल्सो मेक इट एट द एंड। एंड चाइना टीम आल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। फिलहाल के लिए उनका टाई चल रहा है। एंड इंडियन टीम में अर्जुन इज द वन। एंड लुक एट गुकेश वॉकिंग देयर भाई, क्या है भाई, वर्ल्ड चैंपियन की वॉक है भाई गुकेश के पास। इट इज वेरी ऑब्वियस टू मी। Yep, I completely agree with that. By the way, Sahil bhai, maybe we should also look at the women's section, just very very quickly and briefly, and to see वहां पे क्या updates हुई हैं अभी तक. बिल्कुल भाई, लेट्स गो। Okay, this is the game. This is the game between. Oh, this is the Tania वाला game. Oh, Knight अभी भी B8 पे क्यों बैठा है भाई? साज भाई, लुक एट द क्लॉक, look at the clock, 14 minutes. Whoa, that's actually not the worst sign, क्योंकि ये पोजीशन भी ऐसे है जहाँ पे व्हाइट गलती कर सकता है. 14 minutes. Oh yeah, we can see the clock as well. Bhai, this is looking a bit risky. पोजीशन में नहीं, टाइम को देख के वेरी रिस्की है. वेरी रिस्की इंडीड। F3 पॉन पुश हो चुका है, जैसा आप कहते हो गोल्डन पॉन। यहाँ बिशप बहुत लूज है। दिस डायगोनल इज ओपनड अप एंड दोनों बिशप ब्लैक के पास है। वेरी कुड बी वेरी वेरी एक्टिव। तो चैट देखते हैं। आई थिंक व्हाइट बीइंग स्लाइटली वीकर, तानिया शुड हैव गुड चांसेस, स्पेशली कंबाइंड विद द क्लॉक। सो ये गेम बैलेंस्ड, आई वुड से। White slightly better in the position objectively, but much worse on the clock. दिव्या ही गेम पे अगर हम जाएं, अगर हम उल्टा ही चल रहे हैं आज, तो रुक हैज कम टू F3 साज। ये तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई थिंक दिव्या इज गोइंग टू ग्राइंड दिस डाउन। BC मूव हुए हैं, आई डोंट थिंक पीस मूव देखने को मिलेंगे यहाँ पे। Yeah, that's true. Knight E4, Rook G3, Bishop H6, like कितना crazy सा, मतलब beautiful attack आने वाला भाई. Rook H3 भी भाई, Rook H3 is it's even a stronger threat in this position. That's true. Rook H3 incoming.
And chat Divya looks like she's going to win this one. बहुत मजा आने वाला है, टाइम बराबर है, कोई स्ट्रेस नहीं है. तो यहाँ पे हमारा let's assume ताने का ड्रॉ, यहाँ पे विन चल रही है. Vaishali, by the way, is slightly worse. Oh wow, much worse. Sahaj, what's happening here? Is it a worry? Bishop f4 penalty is very, very strong. Is this losing? Because I know +2 advantage generally means it's lost. So bishop f4 rook b7 में क्या हो रहा है भाई? Bishop f4, rook b7. It looks like too many pieces are on the same diagonal. Maybe it's not losing instantly, but कुछ ना कुछ tactical possibilities हो सकती हैं यहाँ पे. I'm thinking about a6 for black. But white क्या खेलेगा भाई? That's the question. वही तो question है. मेरा a6 का idea. I'm not sure white क्या कर रहा है यहाँ पे. Is it queen f5? I'm not sure. I'm actually not sure. It looks like a very difficult thing to solve here. Queen f5 or queen. Moving the queen somewhere seems logical. b3 also looks logical. Yeah, b3 maybe looks the most logical. Maybe not like queen b3, sorry, b3. हाँ, b3. मैं भी कहूँ यार भाई, पिन में लग रहा है. b3, yeah, b3 looks interesting because you can take back with the pawn. Also, I think rook can come to c1 next. C queen थोड़ी सी uncomfortable है, doesn't have many squares. ये पिन है, बहुत सारे पिन है. ये मारोगे तो rook c1 पे again there'll be some attack. So काफी यहाँ पे pressure है. So again, Vaishali also 5 minutes behind the clock. And यहाँ पे time difference नहीं, it's just the overall time that's remaining. And d takes c5, which was the first preference of the engine, has been played by white. And यहाँ पे ये पूरा break हो रहा है. What does black do? अगर यहाँ पे वो मारते हैं तो bishop f4 आएगा फिर से, and rook b7 के बाद I think we are going to see one of the rooks to c1, Sahaj. And ये bishop ना एक पिन में आने वाला है यार. Bishop भी पिन में है, queen भी पिन में है, rook भी पिन में है. I mean, yeah, this is not looking very positive for Vaishali. I hope she can survive this. Sophie Miller, I think, is a very experienced player. I remember seeing her play in 2016. कोई वो Thailand Open हुआ था, Bangkok Open, वहाँ पे देखा था, and she was very, very experienced. So I think कहीं ना कहीं पे this is not going to be an easy match for Vaishali. यहाँ पे कुछ अच्छी chess की तेजी से जरूरत होगी. तो साज भाई फिलहाल one board पे भी winning, one board पे worse, second board, third पे it's kind of in the middle. And Harika यहाँ पे we saw it till here, and this is the current position. I think it has improved by a lot for Harika. Yeah, it has actually. Yeah, उसने कुछ बिशप दे दिया क्या उसने ऐसे फालतू में? हाँ, I think after queen d7 we saw h4, bishop g4, 93, and वो bishop ही दे दिया भाई फालतू में. Oh, that was unnecessary, I think, from the black side. I think that was a bit unnecessary. उसकी वजह से I think the position is really bad now. But yeah, knight कुछ light squares पे कोई attack आते हुए दिख रहा है मुझे. I'm not sure how though. But yeah, it looks like a convincing victory for Harika. Yeah, मतलब Harika is looking good. Vaishali is the only one in trouble. Tania also looks good क्योंकि इनके opponent का time बहुत खराब है. Divya, how was Divya again? Divya was completely winning. Gukesh 3 आ रहा है वहाँ पे. So chat, we are moving towards potentially a 3-1 score if things go our way. So बहुत I think अच्छा लग रहा है women section में. Arjun, by the way, has not. I think his opponent played rook EB1. I don't see any issues with like rook A4 now. I think Arjun is close to winning. Yeah, rook a4 or Alekhine's gun. Yeah, we've been looking at this. So chat, as Arjun thinks, chat के लिए VD के game में time बहुत कम है. So let's go to that game quickly. Let's have the cameras off Vidit as soon as possible. Nirva will be back soon. वो I think 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं. And फिलहाल के लिए मैं जाऊंगा जल्दी से भाई. गुकेश की गेम I think कुछ चेंज नहीं हुआ है. So let's go to VD's game chat. And VD की गेम ये है currently. And यहाँ पे उन्होंने 95 rook c1 and 15 मिनट है ओपोनेंट के पास. भाई ये गेम तो लग रहा है अभी मिडिल गेम स्टार्ट ही हुई है भाई. And he already has 15 minutes. This is crazy. And भाई कितनी चालें हुई हैं अभी तक? 20 for white, 19 for black. 20 moves only. That means उसको 20 चालें और खेलनी है in 15 minutes with like half a minute increment. That's let's say 10 minutes. मतलब 25 minutes में उसको 20 moves खेलनी है, which I don't think is an easy task. Yeah, this looks extremely difficult, especially when what piece are you going to play next? भाई क्या हिलाओगे यहाँ से? मतलब कुछ भी straight forward नहीं है ना. That's the issue. You're absolutely right, भाई. You're absolutely right. Fairam जी पूछ रहे हैं, Indian women not being able to win 4-0 in any set is worrying. I don't think so. I mean, look, it also depends कि I mean, I think first round we were very close to winning 4-0, but I think it was 3.5 half.
Second game maybe I think it was 3.5 half. Third game I think we were like right there, but I think Harika had a bad game. But I think overall I think the women are performing really well. I don't think it's a sign of worrying क्योंकि टीम तो अभी भी जीत रही है भाई. टीम्स तो अभी भी जीत रही हैं. Yep. एंड साहिल भाई आपका इंटरनेट, आपका कैमरा. हाँ, हेलो मेरा हेलो कैमरा भाई, चैट. निधि भाई भी ब्रेक पे, आई एम सेटिंग द कैमरा क्विकली अप सून. एंड चैट ऑल्सो ध्यान रखो, वुमेन सेक्शन में क्या है कि बिकॉज द रेटिंग्स आर मच क्लोजर, इट्स समटाइम्स डिफिकल्ट. ओपन सेक्शन क्या है कि स्टार्टिंग राउंड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए 2700 अगेंस्ट वो इतना डिफरेंस हुआ था. दैट्स व्हाई यू सी 4-0 हैपनिंग मोर. आई थिंक वुमेन सेक्शन थोड़ा डिफरेंस कम होता है, दैट्स व्हाई यू डोंट सी इट एज ऑफन. आई थिंक 4-0 जरूरत नहीं है. 3.5 half is a pretty convincing score by, I think that itself is called domination. Yeah, I think it is very close to it. Yeah, I think Yeah. utter domination. And chat, यहाँ पे जैसे निधि क्या लगाएंगे वीडी का, आई थिंक विल गेट टू सी हिज ओपोनेंट क्रम्बलिंग होपफुली, जो मुझे लग रहा है एटलीस्ट कि देखने को मिलेगा. आई डोंट नो हमारा कैमरा सही पोजीशन में आएगा कि नहीं, विल गेट टू नो सून. एंड आई No, एम it's नाउ जीएम not. सहज ग्रोवर. एंड व्हाई एम आई नहीं, सो zoomed in भाई? मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता. नहीं, भाई मैं प्लीज इतना नहीं. जूम इन कैसे हो गया भाई? सडनली मेरी नीरी मुंडी इतनी भाई बड़ी हो आपको गई मैं, है. आप इतना मिस कर रहा हूँ आपको मैं इस टाइम पे नीरी भाई. Who Arjun Chat, played? I think I solved it. I think I might have solved it. No, 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 it is not. मैं flip हो गया बस इससे. No, आप flip already हो चुके हो आप, because I think you are on अच्छा my अच्छा. side and I'm on your side. But I think हाँ जैसे हाँ. वो आएंगे we can do it. Yep. And chat फिलहाल के लिए जल्दी से लगा देंगे. Chat, क्या लग रहा है भाई फाइनल स्कोर? मुझे लग रहा है कि यार ओके, सो विदित will most likely win, अर्जुन will win, and I think गुकेश will draw. मुझे लग रहा है कि यार 2.5 पॉइंट और आएंगे एंड आधा पहले का 3-3 हो जाएगा. नहीं भाई, एनएम सहज मत लिखो, अभी भी एनएम साहिल ही लिखा है वहां पे. दिव्या, जीएम सहाज, एब्सोल्युटली भाई, देख रहे हो जीएम बन चुके हैं भाई हम. भाई नीरी भाई. I have no words. I have no words. सहज भाई रीस्टार्ट योर कैम, इट विल बी. मैं रीस्टार्ट करूं क्या, एक बार ट्राई करूं? ट्राई करो, करो ऑन. अरे नाइस नाइस. अरे भाई क्या बात है यार. whoever you are भाई, you are amazing. You are भाई amazing. मेरी इतनी बड़ी मुंडी हट गई यार, थैंक गॉड भाई. चलो बढ़िया बढ़िया. मैं तो ना शहता भाई, मत शहो फिर. भाई मत शहो. एंड चैट फिलहाल के लिए 11 मिनट साहब. चल क्या रहा है नीरी भाई? वी नीड यू राइट नाउ. भाई ये चल क्या रहा है? 11 मिनट है उसके पास. 11 मिनट इज नॉट, ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट भाई, 11 मिनट 20 चालों में खेलने हैं उसे. 20 चालों में 11 मिनट, दैट्स इनसेन. अरे बाप रे. एक बार दिव्या का गेम, अच्छा नहीं, नो वी कैन सी इट व्हेन इट हैपेंस. बाय द वे आई थिंक अर्जुन डिड रिस्पॉन्ड एंड उसके बाद इंजिश ने भी कोई मूव खेली है. वी नीड टू चेक अप ऑन दैट एज वेल. सो लेट्स डू वन थिंग, क्विकली अर्जुन की मूव देख के आते हैं एंड देन वी कम बैक टू दिस. आई रियली वांट टू सी व्हाट हैपेंस. Rook a4 played by the way, and queen to c1. I see no reason why he just can't play queen a7 and just dominate the a file absolutely. And also Sahaj bhai, there's this plan of knight b5, which the Indian is a big fan of at some point, to put pressure here, force the queen back and then take control of the a file. So Oh, बड़ा मजा knight आएगा before chat. queen d to queen a7. Yep. Chat बड़ा मजा आने वाला है. आई थिंक अर्जुन इज अबाउट टू ब्रेक थ्रू समहाउ. कहीं ना कुछ तो पॉइंट आएगा जहां पे कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा. या तो क्वीन घुस जाएगी, या कोई पॉन मर जाएगा, या कुछ टैक्टिक तो आ सकती है. सो अर्जुन इज लुकिंग लाइक ही इज इन द ड्राइवर सीट. चलते हैं भाई वापस विदित गेम में, जहां मुझे विदित का कैमरा लगा दो नीरी भाई. आई वांट टू सी द ओपोनेंट्स एक्सप्रेशन बिकॉज़ उनके पास टाइम ही नहीं है. एंड ही हैज प्लेड रुक c7. तो सहज, इफ वी वांट टू गिव द आइसोलेटेड पॉन टू ब्लैक, दिस इज द मोमेंट. बिशप d5. Let's do it. Let's do it. Bishop d5 भाई. Bishop d5 looks very very good. उससे c file भी मतलब पूरी एकदम आपके कंट्रोल में आ जाएगी. You can capture on c7, play rook c1 again. That looks really good for me. Yeah. Really good for Vidit, sorry. Chess player things. हाँ भाई.
GM says loves the word insane. भाई या प्रभात भाई आप कैसी बात कर रहे हो? That I is think insanity. I think Sahaj bhai का favorite word है भाई, not gonna lie भाई. I think that's the favorite word. वो word थोड़े ना, वो तो sentence हुआ. Not gonna lie, I think that might be a favorite though. And I'm not gonna lie, Sahil bhai, but that was insane from you. yeah, yeah. Who has tied? Tied whom भाई? किसको बांधा है हम लोगों ने? Who drew? मतलब By the draw way, किसका chat. हुआ? मतलब draw किसका Prag हुआ? has drawn, so I think that's a pretty decent result because of position ही ऐसी हो गई थी जहां Black could have become potentially better if he had played on. And यहाँ पे Vidit now falling below the 30-minute mark. Come on, Vidit, जल्दी खेल दो. I think shall we go to the Arjun game, Sahaj? Because I think यहाँ पे अभी slow चल रहा है, so let's go back to the Arjun game. मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ crazy मिल सकता है हमें. Oh, it did happen. So after the move Queen C1, Queen A7 played. So Sahaj bhai, the fact that he did not play Queen A6, जहां पे ये Queen अंदर D3 पे घुस सकती है, tells me कि he has seen the Bishop D4 tactic. Of course, yeah, of course. So that is pretty obvious. And now after Rook takes A2, रुके 1 by there is Bishop D4 ना फिर से. Chat. तो CD4 भाई वो चाल दिख गया आपको? चैट ओके, Bishop D4 CD4 के बाद दिखा दो. अरे नहीं Bishop D4 की जरूरत ही नहीं है भाई. Black to play. Bishop D4 की जरूरत ही नहीं है. Don't play. Oh, chat. Don't show it. Yeah. Chat Black to play. दो तरीके जीतने के बताओ चैट. इनफैक्ट और दो से ज्यादा है, बट दो तरीके निकालो जीतने के. आई थिंक अर्जुन इज अबाउट टू विन दिस वन. व्हाट इज द विनिंग मूव फॉर ब्लैक चैट? कम ऑन. HM NM क्या होता है भाई? GM इज ग्रैंड मास्टर, NM इज नेशनल मास्टर, IM इज इंटरनेशनल मास्टर. सारे टाइटल्स होते हैं चेस के बेस्ड ऑन योर आई थिंक रेटिंग. क्लासिक जो आपकी रहती है 2500 पे GM, 2400 पे IM, 2300 पे FM and so on. Rook C1. Bhai, I think you mean Rook C2, and that would be absolutely correct because Queen C2 pe Queen A1 and Rook A7 pe Rook C1. That is a simple tactic to win the game, and this would be over. In fact, अगर आप थोड़े flashy हो, आपको style मारना पसंद है, तो Bishop takes D4 is the second move. अगर आप Knight से मारते हो, तो Rook A1 मर जाएगा, Queen trap. और अगर आप ये मारते, sorry check है, तो मान सकते हैं, अगर आप pawn से मारते हो, then again there is Rook C2. Queen यहाँ पे and Queen takes D4 with check, and then you pick up the Rook on A1. So बहुत, I think Rook C2 is the simple one. कोई calculate करने की जरूरत ही नहीं है. And यहाँ पे I think White कुछ और खेलेंगे. Maybe he might play King H1, get out of these tactics. But again, then we have Knight B5, kind of asking White to decide कि भाई तुझे spawn क्या करना है यार. Right. And by the way, I think Injich has already played a move. I'm not sure what Rook he has played though. B2. Bhai, but this looks incredibly risky on multiple angles. I don't know if there's a tactical refutation, but Knight C4, Knight E4, all these moves look very, very good for Black. Oh, Knight B, he plays Knight B5, yaar. Yeah, I think Knight B5 played, and I think C3 के pawn पे बहुत pressure है. Also C3 के pawn के साथ साथ, भाई, you can also go. Let's say if White goes. Wait, there is Knight C3 now, no? Yeah, there is Knight C3. Oh no, there is Queen E3 at the end. No, but this is crazy. He plays Rook B2 and then Rook B3. Why? This is, and by the way, Knight B5, I just saw it was the best move again according to the engines, and the only one to get a plus 4.5 advantage. Baap re. And Knight C3 is working apparently, Sahaj. Knight C3, Rook C3 सही कह रहा है. हाँ, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कन्वर्ट कैसे. ओ, Rook A1 आ रहा है, I think एंड में. Bishop D4, Knight D4, Rook A1 I think wins. Yes. And chat, we might be able to see the finishing blow and resignation coming in the next few minutes. Didi bhai, kar do bada sab kuch. Let's go. Let's see the full screen. Full action. Arjun destroying his opponent as India gets the first win for today. Let's go, Nidhi bhai. भाई मजा आने वाला है. Let's go. And he has taken on C3. He has taken on C3. Erigaisi Arjun is about to strike here. He's about to win the game. And मैं अगर कैमरा थोड़ा ऑफ करके चार्ज कर रहा होता उसको निरी भाई, ताकि कैमरा की बैटरी बचे रहे. मैंने बाय द वे मंगाया है भाई पोर्टेबल चार्जर इस कैमरा के लिए. इंडिया में मिलता नहीं है, यहाँ मिलता है, तो यहाँ मैंने ऑर्डर कर लिया है. तब तक के लिए भाई I'm going to charge the battery a little bit. And Knight C3 incoming soon, Saj bhai.
Yeah, knight c3 is in already आ चुका है भाई. Knight c3 has been played and now rook c3. I think he will just resign immediately. मुझे नहीं लगता कि maybe he goes rook c3 and bishop d4 के बाद he just resigns. But a resignation is on the way. I think this is a dead loss position. This must have been this is I think a very bad blow for Alex, because I'm pretty sure something went wrong somewhere after the opening and he's definitely not feeling good about this. I was literally about to ask you, Saj bhai, do you think it's potentially the reason could be he was playing very quickly? Well, in generally, अगर हम overview उठा के देखें, yeah, I mean that makes sense. But Injic हमेशा fast खेलता है. He's always been a fast player. So I don't think that's the reason. I think it's maybe the fact that your opponent is Arjun could be that. It also could be that maybe he missed something. My understanding is maybe he missed that EF6 का जो idea था ना opening में, जिससे ये structure है. I think he completely underestimated how bad it is for white. I think that could be a reason. I absolutely agree, Saj bhai. I think Arjun का positional, tactical imbalances create करना, all these skills are just on, like they're just out of this world. And कैसे हर गेम में यार, हर गेम में he's able to create these dynamic positions, white, black, pink, blue, कौन से pieces दे दो, he will create the chances out of thin air. And यहाँ पे he's just destroying a 2600 grandmaster. I mean, just look at this position. Also this 2600 grandmaster is this 5-time Serbian champion. He's a current Serbian champion. And he's also his peak was around 2650 plus, I remember. And beating a player like that in this fashion with the black pieces is very commendable. I don't think many players in the world can do that. निधि भाई पूरा बोर्ड दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है चैट, पूरा बोर्ड दिख रहा है. उसको हम शायद थोड़ा बड़ा कर सकते हैं भाई. We have space above, you make the board a little bit bigger, but पूरा बोर्ड तो दिख रहा है. And trust me, पूरा बोर्ड ओपोनेंट को भी दिख रहा है, उसको दिख रहा है भाई. 64 squares are not enough for me to save this game by. His king needs like at least 50 more squares दौड़ने के लिए. And यहाँ पे Arjun knows the game is over. He's just looking at his teammates' games. कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, मेरा तो हो गया. ये लोग इतना टाइम क्यों लेते हैं रे रोज. हाँ सेम. मैं कह रहा था मुझे बोर्ड 1 पे होना चाहिए था. That's what he's thinking right now. Man, Arjun is so goated. Yes, of course, man. I mean, this is an incredible game by him. You almost feel really sad for Injic, yeah. I mean, it's one thing to lose, and it's one thing, and it's another to lose like this with the white pieces. Surely, he's not happy about this. साज भाई, एटलीस्ट यहाँ पे एक नाइट सैक हुआ है. कल वाले ओपन को सोचो भाई, जहां क्वीन सैक करी थी, बेचारा पूरा मेट तक खेला था वो. सो आई थिंक ये ट्रॉमा बेचारा सिर्फ हर राउंड में प्लेयर टू प्लेयर जा रहा है बस. तो आई थिंक इंडिया गॉट स्टिल अ माइल्डर वर्जन भाई ऑफ दिस. ट्रू भाई, ट्रू. Yep. And we can see the Indian captain chat. He knows कि भाई जब अर्जुन ने नाइट सैक किया, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है काम कर रहा है कि नहीं. He has just moved on. उसने पोजीशन देखी, देखा नाइट सैक है, ओ जीत रहा होगा, चलो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड. क्या कर रहा है उसने कैलकुलेट कर लिया होगा भाई, उसने पूरा कैलकुलेट कर लिया होगा. अरे श्रीनाथ is also 2550 guys, let's not forget. Yeah. दीदी भाई, can we move the camera up? जो नीचे वो chess 24 का जो वो है ना, जो नीचे वो slab सी है, it's getting in way of the board. I don't know if we have more space like below this board. We would love to see the entire board if possible. थोड़ा अगर ऊपर हो सकता है, अगर जगह है तो कर देना please. Yeah, this is amazing. पानी पीने का टाइम आ चुका है chat. I think this could be the Indian team's वो मतलब ना वो ऐसे वो पानी पीते हुए गेम खत्म होता ही. साज भाई, कल तो राकेश भाई आ रहे हैं, क्या प्लान है आपके? प्लान, I mean, हम लोग यहाँ से स्ट्रीम करेंगे and बाकी सब कुछ we'll see how it goes. He's gonna be staying here for I think for a day or two, and then he goes off with the Indian team, but let's see.
Let's see what the plan will be. यार कैसे plans साहिल भाई, like we are working from basically the whole day. जब भी दिन खत्म होता है फिर नींद नहीं आती, but लेकिन still you are extremely tired. I don't know if you are feeling the same or not. Yeah, man. But I think what motivates, I think, all of us is the passion and the patriotism. Yeah, मतलब कि इंडिया जीत रहा है Hmm. भाई, and Of medal course, चाहिए of यार, course. gold चाहिए, and gold के लिए भाई I think it will all be worth it at the end. And जो players हैं वो justify भी कर रहे हैं भाई, like you kind of feel like, I mean, ऐसी गेम देखने के बाद you feel like अरे it's all like worth it man, like that's the best part. Look at अर्जुन भाई, क्या वॉर के भाई, मतलब खत्म हो गया भाई गेम, चलो चले. Hmm. And I think there is a resignation coming. Yeah. I think उसने And calculate सब कुछ कर ही लिया है, but now there is a resignation coming. By the way, in the chat, background you can see Miodrag हाँ, Perunovic, also known as the Butcher. He's a very very famous, I think, YouTuber. Um, he's also, I believe, from Serbia. Is he from yeah, Serbia or is he from yeah, like yeah, Slovenia? Serbia, he's from Serbia, yes. Serbia, yeah. Yeah, He's the captain of the Serbian team. I think मैंने उनसे कोचिंग भी ली थी बीच में. मुझे तो this was I think for like a week, Really? for He like was your 10 days. coach. That's so For cool. 10 days I भाई, mean, yeah, I think he's a pretty good coach actually. Like the way yeah, the way he carries himself. He has a very very big passion for chess. yeah, yeah. अनचार्ट मैं एक अपडेट आपको गुकेश की गेम पे देता हूँ, जब तक के लिए ये गेम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. दिस इज द करंट पोजीशन इन द गुकेश गेम, एंड उन्होंने A4 पॉन रख दिया है, एंड ही स्लोली काइंड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन द, यहाँ पे किंग साइड, यहाँ रुक B6 आ सकता है, एंड नाइट E4 पे है, सो ही इज काइंड ऑफ प्लेइंग ऑन एवरी पार्ट ऑफ द बोर्ड, लिटिल बिट, टाइनी बिट यहाँ, टाइनी बिट यहाँ. सो पूरा प्रेशर बना के रखा है. ही विल नॉट स्टॉप until he squeezes out a win there. So do not worry, वो पॉइंट भी अपने पास ही आना है. And of course, Vidit is also playing. So उसका भी मैं बोर्ड का अपडेट देता हूँ. This is the current position, and Vidit की evaluation थोड़ी बढ़ चुकी है because rooks haven't traded off, knight is on E5, and अब ये bishops उनके rook का रास्ता block कर रहे हैं. So it's like white has rook to C8 for example, which is not a move you can often play जब black के rooks on the board हो. So Vidit also slightly better, of course, combined with the 11 minutes on the clock. He also has some good chances. वैसे भाई. Let's say rook c8 आपने खेला, ठीक है? अब मैं black से खेलता हूँ. Can you just play rook c8? अब मैं black से खेलता हूँ bishop to h4, ठीक है? Chat. White to play and win. Let's go chat. I think बार की छलांग से लोग समझ गए. Fabi losing? क्या बात कर रहे हो? There is no way Fabi is losing, chat. There is no way Fabi is losing. I mean, that is impossible. Chat guess करो पहले, पूछे नहीं. Fabi is not losing. Chat मजे मत लो यार, मजे मत लो. देखो ऐसी उम्मीदें मत दो यार कि यूएस हार रही है भाई, फिर तो यार अपनी टीम तो भाई मतलब लिटरली नंबर 1 पे है. चैट तो निकाल रही है यार आराम से भाई, ये तो पीना से चैट के लिए यार. This is like, Yes, asking me about the London system, absolutely. guys. And chat, you're absolutely on point. Rook takes C8, rook takes C8, knight F7, king, queen, and जो भी चाहिए आपको सब बुफे में लगा हुआ है. And chat, that's why queen D6 है अभी, and rook C8 could be a deadly move. In fact, सहज भाई, यहाँ black के पास एक ही move है to hold the game. King G8 में तो rook 8 फिर भी आ रहा है. Bishop हाँ. Queen E6. Yes, Queen E6 is the only move to hold the game, and उसके बाद भी you have Rook C7, so it's not an easy game, and Vidit के पास high chances to win this with the time situation being as it is. So बढ़िया लग रहा है भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, and I think we are ready to see a lot of victories. Erigaisi अर्जुन की गेम जीतने वाले हैं. Vidit pushing and Gukesh also pushing, and Indich Alexander जो एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने जमा किया था, अब सारा इसी चाल में जा रहा है, सोचते हुए कि कहां मैं गलत हो गया, पता ही नहीं लगा भाई. हाँ भाई. I'm also not sure why is he still thinking. Maybe he's just digesting. By the way, that is Azerbaijani board number 3 or board number 4. His name is Suleymanli Aydin. Another like very young talent from Azerbaijan. Yeah. Also a 2650 player, very very strong. उनसे भी मैच लगेगा, when we play against Nijat, we will see something crazy. Yeah, and chat, he has taken on C3, घोड़ा मार दिया गया है.
अब आने वाला है भाई, आई थिंक बिशप टेक्स D4, मार दिया इंस्टेंटली अर्जुन ने, सब कुछ देख के बैठे हैं वो। अगर किंग हिलता है, आई विल सिंपली चॉप ऑफ दिस। इफ यू टेक विद द नाइट चैट, देन आता है यहाँ पे क्वीन D4, नहीं दैट माइट बी क्लोज टू इक्वालिटी, बल्कि रुक टू A1 एंड रानी को कह दो बाय बाय। एंड द प्रॉब्लम इज कि घोड़ा भी जा रहा है भाई, सो यू कांट इवन आई थिंक सेव द नाइट हियर। सो इसकी वजह से आई थिंक, I don't know what he does after bishop D4, Sajo. What does he do? It resigns. I think it's resigns. I mean, I think maybe he will wait until rook a1 and उसके बाद he will resign, because then you are just up a queen for a rook and bishop. भाई ये कौन भागते भागते गया? कौन गया भाई? हाँ, कोई तो देखा गया आपने? भाई, कोई तो गया। भागते हाँ, भागते गया एकदम। भाई आई थिंक टाइम वो, प्रेशर किसी के पास तो है बहुत ज्यादा, and he had to use the bathroom. या तो फिर वो एथलेटिक्स वाले चेस ओलंपियाड में आ गए गलती से। भाई भाई ओलंपिक्स हो गया है तुम्हारा, पेरिस में था वो, वहां जाओ। And he has taken on C3 भाई, and let's go Arjun, let's finish it off. भाई क्या ही प्लेयर है यार, क्या ही प्लेयर है यार बंदा। Chat, by the way, as Arjun wins, I'm going to throw a challenge. जब तक अर्जुन का ओपोनेंट रिजाइन करता है, ठीक है, अगर हमारे 2000 लाइक हो गए तो, विच इज पॉसिबल बिकॉज 2800 लोग देख रहे हैं, तो वी हैव द वॉचिंग, 2900 लोग देख रहे हैं, तो एक बंदे को गर्मा गर्म समोसे मेरी तरफ से, अरे चैट अरे अरे एक अरे बंदे घर में आएंगे। समोसेस। लेट्स गो चैट, जल्दी से कर दो, इससे पहले रिजाइन कर दे। 2000 लाइक्स, अगर इफ एवरीवन हु इज वाचिंग हिट्स लाइक बटन, तो एक बंदे के घर पे समोसे तो आएंगे ही भाई, कंफर्म है। लेट्स गो चैट, जल्दी से भाई लाइक कर दो भाई। स्कोर राइट नाउ इज 0.5 ईच, लेकिन अभी 1.5 बहुत जल्दी होने वाला है। हाउ स्वीट इज आवर कमेंट्री पैनल। अरे थैंक यू भाई यार, साज भाई बहुत स्वीट है, रख स्वीट है। हम लोग बहुत शुगर पेलते हैं भाई डेली यार, तो यार वो हमारे खून में है भाई लिटरली। अरे अरे थैंक यू सो मच कार्तिक भाई, रियली अप्रिशिएट इट। बाय द वे रुके वन प्लेड ऑन द बोर्ड राइट? यस, एंड चैट जल्दी करो, वो रिजाइन कर सकता है कभी भी। रुक के वन बोर्ड पे आ चुका है भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। 1540 हो चुके हैं, यू वेरी क्लोज चैट भाई। पेस था ये, 3000 वॉचिंग चैट, लेट्स गो। अर्जुन अबाउट टू विन हिज फर्स्ट मैच फॉर इंडिया। चैट को समोसे लेने का चांस है भाई, लेट्स गो चैट। 2000 लाइक पहुंचना है बिफोर अर्जुन ओपोनेंट रिजाइंस ऑन द कैमरा। लेट्स गो चैट, जल्दी 2000 लाइक कर दो। मोमोज का वक्त है Yep. भाई, मोमोज, समोसा या पाव भाजी, जो भी होगा भाई, जो बंदे की डिमांड होगी वो मिल जाएगा भाई, लेकिन समोसा इज फायराम द। जी, फायराम जी पूछ रहे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी, फायराम जी पूछ रहे हैं कि इज इट मैंडेटरी टू राइट अपोनेंट्स मूव बिफोर मेकिंग योर मूव, or you can move and then write that down both together? I think you can do both, but lekin what's better is that you write down your opponent's move and then you do your own. By the या way, resignation is there. Arjun has चैट won. चैट चैट चैट, कैमरा पे आने वाला है, जल्दी हिट द लाइक बटन भाई। यू हैव लाइक 10 सेकंड्स, 20 30 सेकंड्स, कम ऑन चैट, जल्दी से भाई। 200 लाइक करने 1600 पहुंच चुके हैं भाई, जल्दी करो, जल्दी 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 भाई, जल्दी भाई जल्दी। भाई आई थिंक नहीं हो सकता, मिस कर दिया चैट ने भाई। अगर मिस हो जाएगा तो हम एक और में करेंगे, आई थिंक तो जल्दी कर दिया उसने, तो वील गिव चैट अनदर चांस, ठीक है। एंड दोस आर लाइक्स पे करेंगे, डोंट वरी, वी विल नॉट इंक्रीज द लाइक काउंटर, बट यू हैव अ चांस टू विन इट नाउ। फैबी लूजिंग, क्या बात कर रहे हो भाई। Let's see the handshake here first and then let's go to the Fabi game. And Arjun OP spam होना चाहिए जैसी opponent हाथ offer करेगा chat. Let's go. Offer the hand and that is it. Erigaisi Arjun has won the match. Let's go. Arjun OP in the chat. Spam कर दो भाई. अगले 69 seconds तक रुकना नहीं चाहिए. Beautiful game साज भाई. What a player man. What a player. And chat, you are correct. Fabiano Caruana is also worse. भाई उनकी भी लगी हुई है, तो यूएस टीम का जीतना गारंटेड तो नहीं लग रहा। एंड अपेरेंटली गुकेश हैज आल्सो इंक्रीज्ड हिज एडवांटेज। विदित ने भी इंक्रीज कर दी है। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स गो टू गुकेश गेम क्विकली। लेट्स हैव द गुकेश कैमरा एक बार फुल स्क्रीन में लगा दो नीरी भाई। लेट्स गो। अर्जुन ओपी इन द चैट, गुकेश के कैमरा पे हम लोग जाते हैं जल्दी से भाई। मैं भी अपना कैमरा ऑन कर रहा हूं भाई, बिकॉज भाई कोई भी सीन की रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकती है भाई। ये इंडियन प्लेयर्स ने आग लगा दी है बोर्ड के ऊपर यार। साहज भाई, आर यू देयर?
Saj bhai, you are muted, Saj bhai, I think. Can you hear me? हाँ, now I can hear you. हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. That's weird actually. Okay, yeah. So rook c8 हो गया board पे. We are at this position 16 minutes versus 12 minutes. I think Gukesh looks a bit more comfortable. Yeah, H pawn एकदम खाली. Is that a free pawn? हाँ भाई, he's just a free pawn up. भाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये pawn कहाँ गया? Gukesh has just won a pawn. How did this happen? ये कब जीता वो? हाँ. What? He just gave the pawn back. The pawn back, a pawn दे दिया. Knight h2 apparently was the move. But okay, that's a difficult one, but a necessary one. Board लगा दो, board लगा हुआ है. And let's go to Gukesh's camera, Nidhi bhai. Can we have the Gukesh camera close up? Let's go. And g5 देने के बाद Gukesh has simply a pawn figure खा लिया. Knight e5 square के लिए उन्होंने sacrifice किया था. Rook c8 and Gukesh is now simply a pawn up. वो आके वीडियो गेम देख रहे हैं कि क्या इंडियन टीम सही पाथ पे है. India is absolutely on the right path here. Sahaj so from bhai, the looks of it, I think a 3-1 or a 3.5 half is not, I think, unbelievable. Already एक डेढ़ तो हो गया है. I think Gukesh also wins. I'm not sure Vidit के board पे क्या चल रहा है. I know he had a crazy attack, but we probably need to check, what's going on there, just to see कि वहाँ पे मतलब कुछ updates है कि नहीं. But I think 3-1 या 3.5 half would not be unbelievable here. I agree. Saj bhai, that looks very, very probable, especially when the other teams are struggling. Ye score kind of is a big statement, as Rakesh bhai said earlier, and यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है. One look at the Vidit board. He has, by the way, played. I think he played Rook Queen f5 first, and यहाँ पे he played Queen f5. Got it. So instead of Rook c8, he plays Queen f5. Controls the c8 square with his queen as well, and यहाँ black के पास he has a couple of moves. Bishop f6 could be a move, and king g could be a move. But yeah, I think rook c8 still a potential option. Saj भाई लग रहा है भाई हमारा स्कोर बढ़िया रहेगा भाई. आज बहुत बढ़िया लग रहा है. फील आ रही है. फील तो आ रही है भाई. एंड आई थिंक वेरी वेरी इम्प्रेसिव. या आई मीन सर्बिया की टीम को इतनी बुरी तरह हराना इज डेफिनेटली समथिंग. या that's a statement for sure. That's by the way, big statement. Yeah. By the way, Arjun is exactly 2785 on the rating list. Exactly 2785. So he's only 15 points away from hitting 2800 rating. Bhai, that is so crazy to me. Bhai, that's amazing. Bhai, Sahaj bhai के on point calculations, राकेश भाई के on point suit पहनना, और मेरा भाई cheer leading with pom poms as chat. हम यहाँ पहुंच रहे हैं भाई 2. An Indian win in round 4. A very, very convincing and crushing. And कौन से adjective लगा सकते हो भाई? लगा दो भाई chat में. India doing really, really well today. And we have the Gukesh cam. Thank you. And board थोड़ा बड़ा कर दो निधि भाई. Let's have it slightly bigger if it's possible. Bigger the better. And यहाँ पे Gukesh का tense moments हमें दिख रहे हैं. He knows. Bhai, let's go to his board as well. I think Vidit का board लगा हुआ है. Sorry about that. Let's go to the Vidit board. Gukesh board and see how he converts this. Oh, by the way, look at this. After rook c8, he played f3 and knight d2 check. And king को move number भी बता दो एक बार. Move number भी बता दो. Move number is 29 chat. So अभी 11 move दूर है. And Predke को basically minute a move खेलना है. He has to play roughly a minute a move here, which is not super difficult, but also not super easy when you're a pawn down. That's true. Also, endgame में moves fast खेलना थोड़ा ज़्यादा easier होता है. So I think he will make the time for sure. But he's just a pawn down for basically no compensation. It looks like he gave the pawn to get that e5 square for the knight, but doesn't feel like it is much. Yeah, it doesn't. And also, Saj bhai, it's a passed pawn on the h file. I already have a passed pawn, and I can also kind of pressure this. Rook f8, g4 ideas incoming. Knight will now, I don't know, maybe we'll go to b3. Bhai, it's एक और अपडेट है. विदित के बोर्ड पे उसके अपोनेंट के पास अराउंड 5 मिनट पड़े हैं फॉर 16 मूव्स. बाप रे बाप, that is crazy. 5 minutes for 16 moves is a lot of time, bhai. That's a lot of time.
Sorry, that's not a lot of time. It's the Not opposite of what I'm saying. Not a lot of time. I बहुत forgot the word not. बहुत मैं बड़ा इतना नॉट। शॉक हो मैं ये पोजीशन और सिचुएशन देख के इतना शॉक हो गया, मैं नॉट वर्ड ही भूल गया। सही में भाई, वही मैं भी भूल जाता है। मैंने डेट पूछा, बंदी ने नॉट नॉट, मैं सुना ही नहीं भाई, कई बार हो जाता है मेरे साथ। एंड आप फिलहाल ही के नहीं लिए सुनते चैट, जब आप बोलते हो, हाँ, हाँ जब वही होता है भाई। लड़की Why नो can't you बोलती है guys sync with नहीं। camera? यार it's coming from FIDE, ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीछे बंदा लगा हुआ है वो sync कर रहा है। It's directly coming in from FIDE, so there's nothing we can do. But chat, if I'm being honest, because of this, we've been able to capture so many impressive moments which we might have missed, because board पे होता है, we get another chance to see it in action. So I'm not the guy complaining. Actually, we get to see so many iconic moments here, and it's amazing to have a heads up. And chat, बाय द वे 2K लाइक्स पे किसी बंदे को समोसे मिलने हैं। आई नो कि आपको वो चैलेंज थोड़ा, नो इट वाजंट एग्जैक्टली फेयर बिकॉज ओपोनेंट रिजाइन नहीं कर दिया। सो आई विल गिव यू अनदर चैलेंज इन द नेक्स्ट 30 सेकंड्स, द समोसा चैलेंज इनकमिंग सून। रुको, पहले किस गेम में जा रहे हैं साज भाई? आई थिंक वी स्टिक टू केस गेम फॉर नाउ। बाय द वे 3 मिनट्स है ओपोनेंट के पास, आई डोंट नो वेयर टू स्टिक। I think let's stay here. Well, let's stay here. 3 minutes is we'll see a little dance just now. अभी डांस देखने को मिलेगा So chat. Let's stay on this one. Nidhi bhai, can we have Vidit's camera then? I think because 3 minutes hai, let's see his opponent's reactions. Oh, Magnus has won, by the way. You looking at Magnus winning. I've not seen the results, but I don't want to. Not required, I feel. Not required. Already I जीत feel. गया। Yeah, अच्छा जीत गया, already yeah, जीत he गया। won. He won. He won. He is won. Can we have Vidit's camera, by the way? There you see it, the greatest player of all time. Opponent को दोनों जूस पीने का टाइम भी नहीं मिला, ऐसे ही गेम खत्म कर दी उन्होंने। Yeah, and again he won. And there you see it, women's section का भी हमें दिख रहा है एक राउंड अप चैट। हर बोर्ड में बार is somewhere in the middle, slightly better for some side, but no crazy results just yet. Even the Divya game has somehow become a bit difficult, and now we are back to the Vidit game. Thank you for the round up there, Nidhi bhai, for the board's eye view. And now we are here. We are here with the clock. Look at 2 minutes, chat. 2 minutes 45 seconds for 15 moves. This is crazy. Vidit is on the... Wow. That is insane, bhai. That is absolutely crazy. Come on, Vidit. Let's go. Come on. Vidit is about to strike yet again. Moving towards low. Oh, he kind of played. I think 5 minutes. I think he sometimes can also show 5 minutes. It's not 5 minutes. I think it is 3 minutes. He has less than 3 minutes. I can see the clock on time on his clock, Saj bhai. Chat. Diva, I don't know if there's a possibility to shift the camera, like if there's some camera like downward, bata dena mujhe. Come on. Let's go. No, didn't understand. Change what? क्या हो गया निधि भाई? What do you want me to change? Okay, something happened. I think Sahaj bhai has vanished for some reason. But I am still there, chat. I am still there. I'm कि अगर बोर्ड अगर थोड़ा शिफ्ट हो जाए, अगर नीचे का जगह बाकी है बोर्ड देखने के लिए, पीसेस देखने के लिए, तो उसको थोड़ा सा जूम आउट करके ऊपर कर सकते हैं। बोर्ड नीचे चाहिए आपको? हाँ, मुझे बोर्ड का पार्ट देखना है। बोर्ड दिख नहीं रहा है। नहीं, जो नीचे वाला 3D बोर्ड है वो नहीं दिख रहा है भाई, अगर जगह है नीचे तो। 3D बोर्ड। Chat, by the way, मेरी आवाज सही आ रही है ना? Let me know if something has changed. I think my audio should be okay. And फिलहाल के लिए chat, उनके हाथ पैनिक कर रहे थे. His hands were panicking. Perfect, नीरज भाई, perfect. His hands were panicking as he played knight f6. Come on. Vidit Gujrathi on the verge of getting the second victory for Team India. All good. Badhiya hai bhai. Badhiya, all good. Come on, let's go. I checked the audio. It's fine. Let's go, bhai. Vidit, let's destroy him. And to be honest, chat, yahan pe endgame mein jana is absolutely fine. You can just pick up this queen. Bishop takes f6. You will take the 7th rank with your rook, and doesn't matter. Aap chahe ye bhi maar do. You will exchange a lot of pieces. You will try to save this opposite color bishop endgame. But now you have bishop c3, rook on the 7th rank. e6 could be a huge threat yahan pe. For example, let's say black plays something random. I don't know what does black even play. Koi tarika hi nahi hai. मान लो यहाँ खेलता है वो
rook to e8, लॉजिकल चाल, doesn't matter. यहाँ पे e6, f4, g4, king f2, king d4 ला सकते हैं. Looking amazing. Come on, come on, come on. What is happening, chat? What is happening is India is cruising. Chat यार, मुझे नहीं पता यार, chat तुम्हारे लिए कैसा है? But if I'm being honest, ये गोल्ड जीतना ना भाई, it comes so close to my heart भाई. कितना जरूरी है ये मेडल जीतना यार. It's so important. It's not just about the players. It's not just about like a game of chess. It's about the country भाई. It's just so important. And ये moment is one of those जहाँ पे, yeah, I think this is such a statement जहां पे you're kind of saying कि you know what, US team is struggling, China team is struggling, Uzbekistan is struggling, but we are winning. Welcome back. साज भाई, क्या हो गया था भाई? इंटरनेट भाई, इंटरनेट, मेरा इंटरनेट इतना एक्साइट हो गया था पोजीशन देख के, मैंने कहा मैं भाई मैं जा रहा हूँ. I couldn't reconnect back in time. I can relate भाई. Sometimes मैं एक्साइट हो जाता हूँ, दिमाग काम करना बंद हो जाता है. लेकिन I would also say कि अच्छी बात है कि भाई तीनों एक जगह पे नहीं है. ये अच्छी बात है भाई. That's good news हाँ भाई, that's good news भाई. But sometimes it goes away. Yeah, sometimes it goes away. It happens. Happens भाई. Let's do it. Okay, f4 played by Vidit is completely winning now, or what? This भाई, it's good you like that position because that is very likely to happen now. This is the current position. Just queen takes, bishop takes, and rook c7. And even though it's an endgame, I think rook on the 7th rank should be good enough to have a huge edge against somebody who has 2 minutes on the clock. 2 minutes on the clock is definitely not ideal. Also, kitni chale bachi hai? 9 moves, I think, something like that. No, 15 moves. 15 moves, bhai. Oh, bhai, this is the game. I think is more or less over now. Bhai, that's so cool. Bhai, Arjun already winning, and then uske baad, Vidit is also winning, and Gukesh also is looking. He's a pawn for basically no compensation. Bhai, 3.5 आधे से हराएंगे हम सर्बिया को. That is so crazy, bhai. That is amazing, chat. And मेरा आपके लिए challenge का time हो चुका है भाई. Promise नहीं भूलता मैं. Chat, your next challenge is, ठीक है? मैं challenge करूंगा समोसा challenge when we hit the like number 2121. I don't know why. I am 32 but I feel like 21. तो 2121 number आया. जल्दी से अगर आपने अगले 6 मिनट में 2121 likes hit कर दिए तो हम करेंगे समोसा challenge instantly भाई. जैसे विशी आनंद इंस्टली जीते भाई. लेट्स गो चैट, लेट्स हिट द लाइक बटन. 2121 पे समोसा चैलेंज इनकमिंग. ओपोनेंट ने तो मुंह बंद करके रखा है, उसको तो नहीं खाना शायद. साज में लग रहा है मुझे. I think उसके पास खाने का टाइम ही नहीं है भाई. उसके पास कुछ करने का टाइम नहीं है. He just has to play भाई. He has to play really fast. समोसा का एक बाइट लेगा भाई, बेचारे का टाइम खत्म हो जाएगा. तू भाई चिल कर भाई. Also chat में बहुत लोग लिख रहे हैं कि Divya has lost. But Sahil भाई, you don't have to move. I will quickly take a look if this is actually true. And I will see. 1 second. हाँ, बताना भाई. I don't think she's lost. I checked it. It's equal now. It's not lost, but yes. नहीं भाई, Divya is not lost. She's not lost at all. Equal है position. Yeah, I mean उसका advantage बहुत ज़्यादा था, and it definitely looks scary for Divya. That's for sure. But it's not lost yet. भाई, एक piece के बदले 4 pawns हैं उसके opponent के पास. Looks a bit risky. Yeah, that's for sure. Yep. By the way, Vaishali का draw हो गया already. Oh, so Vaishali managed to save that position. What? Wow. Okay, now we are comfortably winning. Now there is no stress whatsoever. If we can save this game, I think we are winning this match. I don't see any problems here. That's amazing. So Vaishali holding the fort. That's beautiful. नहीं भाई, I think सारे boards पे जो भी advantage था, it has more or less disappeared as far as I can see. Yeah. So I think it's looking very balanced in the women's section right now. But hopefully we can still win. But Mitra versus Divya जो game चल रहा है, that is the one to see. But right after, maybe we can take a quick look there and see वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सारे boards are looking really crazy. By the way, another update, Tania versus जो Natasha का game है, वहाँ पे there is 13 moves to be played and her opponent has, guess what? Guess how much time she has? 1 Take a minute. guess. 43 seconds. What? Can we go to the 43 seconds. Let's go to Tanya quickly. Tanya game. Can you Tanya 33 seconds now. 33 seconds. भाई हर जगह पे टाइम खत्म हो रहा है. दिव्या के पास भी apparently she has only 1 minute. That's what chat is telling us. So हर गेम में कुछ ना कुछ 23 seconds for Tanya's opponent. Will she blunder? First Tanya's scam and 19. then we go to Divya's scam. 19, 18. 15 हो गए भाई, खेल लो.
She Then we see played the Tania move with Sachdev. 11. Why she played the move on 11 seconds on the clock? That is crazy. Oh, Tania Sachdev, she knows she has the upper hand. Clock definitely is used to put a lot of pressure. बहुत फर्क पड़ता है when you can see seconds ticking down. Tuck, 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 tick, tock. It plays with your psyche. You don't think logically. You just want to get rid of that feeling of losing on time. Come on, let's go. And also, by the way, I'm also going to check the Divya game, jahan apparently Divya has no time on the clock as well. So it's kind of turning out to the last seconds. Divya has 2 minutes and she's slightly worse now. So chat, things are turning in each board. So women's section mein to kuch samajh nahi aa raha hai who's going to win. Harika lost her edge. Vaishali's opponent lost her edge. Divya lost her edge. And this is just turning out to be a complete mess. Sahaj, filhal ke liye, 3 boards are dead equal and Divya is worse. So Tanya might be in a must-win situation here. If they even want to tie, forget winning. So is Divya much worse here? Is that the situation? Yeah, because she has 2 minutes and she's worse. And Black's plan is simple. She just has to push the past pawns. So looking at that, it might be a situation. And just one look at Harika's game, because this is important, because that game might actually decide the end result of this match. It's very, very complicated. I don't know what the current evaluation is. It's saying it's equal. Anybody could take this game still, yeah? Yeah, anybody can. Anybody can. But also Going back 2 minutes on the clock is not ideal, that's for sure. Yep. Tanya, by the way, 11 minutes है उनके पास क्लॉक पे. दिव्या भी सोच रही है वहां से. दिव्या के पास बहुत प्रेशर है. चैट, दिस इज जस्ट इनसेन. वहां विदित के ओपोनेंट के पास 2 मिनट है. आई थिंक chat, you tell us, Divya, Tanya or Vidit. I think all 3 boards are on absolute fire right now. बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही. Also, someone in the chat asked भाई स्कोर क्या? अभी ज्वाइन किया होगा आपने शायद. By the way, in the open section, 2 matches खत्म हो गए. We've scored 1.5. Arjun has won his match and Prag drew his match. And then उसके साथ साथ Vidit seems to be almost winning and Gukesh seems to be in a clearly better position. तो वहाँ पे 3.5 का स्कोर बहुत possible है. And in the women's section, Vaishali has drawn her match and Tanya, I think, it might be in a must-win situation क्योंकि बाकी दोनों boards पे doesn't seem that positive. Yeah. Doesn't seem that positive. So we'll see what happens there. I think maximum लोग कह रहे हैं कि विदित के बोल चलते हैं. तो let's go to VD's game. We'll keep checking chat. Not to worry. हम सब कुछ check करते रहेंगे. Let's have VD's camera there. जहाँ पे we have a lot of moves, by the way. So chat, Rook C3 के बाद Queen F6. Black is under time crunch. Queen F6. Brilliant move by Vidit. Bishop F6. Rook C7. Bishop. That was the mistake I was hoping, Saj. Apparently Bishop B5 was the active try, but yeah, Bishop E5, Pawn E5, and he thinks he's going to opposite Bishop ending game. But Bishop C3 के बाद Pawn F4, G4, King will sit on D4, E6 threats दिमाग में रहेंगे, and long term ये जो pawn majority king side पे है, this should be a huge advantage and enough to win potentially. Let's zoom out the cams. Perfect. नीरी भाई on fire as well. Indian players के साथ 3 मिनट है black के पास, 8 मिनट VD के पास. I think इस end game में VD should win. What do you think, Saj भाई? I also agree, and also playing against Vidit in this type of a position is he's probably the worst player in the world to be playing this position against, because Vidit is so technical, and this is exactly the type of position जहाँ पे positional chess बहुत काम आएगी, strategy बहुत काम आएगी, because as you said, king d4 पे, bishop d4 पे, pawns just push हो रहे हैं. It's like white की position improve होती जाएगी, but black just has to sit there and wait, and उनके पास time भी नहीं है उतना, Wow. I can hear you, Nidhi. By the way, chat might hear you, so वो देख लेना. And Divya's only winning. What happened? How did the tables turn? Let's quickly rush to Divya's game. How is she suddenly winning? What was the blunder? Is she really winning or not? So I think this was the position जहाँ Bishop E2 था. But also she played the move on 7 seconds. Oh. She played the move on 7 seconds. No, but that was impossible to find. I think Bishop h6 with such little time. I think it's very, very unlikely she would have. Rook g4 उन्होंने खेला, which looks like a logical move with the idea of queen to g3, putting pressure on the g7 pawn, and with the idea of Bishop h6 next. ये भी risky लग रहा है मुझे white के लिए. Black के लिए, sorry. Can we have Divya's cam, Nidhi bhai? And apparently Bishop h6, Bishop here, Rook takes g7 was the plan. Bishop takes and then Queen g3 was apparently winning for Divya. Not an easy plan to find when you have 7 seconds on the clock. I think Nidhi bhai में 2 board दिखाने वाले हैं. Nidhi bhai, let's go for VD on one side and let's go for Divya on the other. फिलहाल के लिए एक बढ़िया सा सीन है आपके लिए. Chat पसंद आएगा आपको. Let's go.
उसमें 2 मिनट लगेंगे चैट, लेकिन फिलहाल जब तक के लिए हम देखते हैं रुक G4 रानी अटैक. व्हाट कैन ब्लैक डू सहज भाई? व्हाट इज ब्लैक्स प्लान हियर? I think she has to move the queen and then queen g3 is incoming and then g7 के pawn पे बहुत pressure आने वाला है, तो I do not think she can do much here. Yeah, queen a3, probably queen c2. I don't know. She has to move the queen somehow. But queen g3 का threat मुझे इतना dangerous लग रहा है यहाँ पे. Oh, maybe queen c2 can work because if you play queen g3, then your e2 bishop is hanging. So queen c2 I already like. And that's Queen interesting c2 I really like. because rook G7 comes with check, but the king moves away. And is there a finishing blow after that? I'm not sure. She should be, right? Rook F7, King F7, Bishop H5. Something should be there. Yeah, but then but the problem is that I can play queen takes c2, so he has to move the bishop. Bishop f3, बिल्कुल सही बोला आपने. Bishop f3 and then maybe queen c2 played. Okay, bishop f3 now. Bishop h6. Okay, bishop f8. Goes for this. Bishop And f8 is the only move here. Okay, she plays it really fast. By the way, Divya का cam लगा दो यार. I mean, हाँ निधि भाई ऐड कर रहे Divya हैं. का cam लगाओ. You will see both cams now, chat. Vidi and Divya at the same time. Hence, there's taking a few seconds. Nidhi bhai setting up a beautiful scene for you. Dekhna bhai, ये Nidhi bhai का magic है. बहुत जल्दी लगा लेंगे वो scene, and then we will see both at the same time. Aryan Tari drew, not surprised. I think बहुत draw कर रहे हैं वो. Harika apparently has a slight edge as well. That's amazing. So things are turning out well in time pressure. And chat, not to forget, time pressure में ही गलतियां maximum होती हैं. And if you are the stronger player, you are less likely to make a mistake. So सब चंगा लग रहा है. जैसी निधि सेट करेंगे, we'll come back to Divya's game. फिलहाल के लिए she has 26. Okay, let's stick to the 26 seconds. भाई, we have to stick here यार. We have to. भाई वो कैमरा बस वो दिव्या का कैमरा देखना I think थोड़ा जरूरी है. I know he's setting it up, but it would be nice to have it, right about now. Yep, and Queen G3 played, by the way, Divya, so putting pressure, but that's a blunder. That's a huge blunder apparently by Divya Deshmukh. Apparently, Queen takes C2 is winning for black. Oh, she missed rook g7, king h8. She missed. I can just move my king to h8. That's what she missed. Yeah, king h8 is winning for black. She has made a blunder, huge blunder. Style by the problem is after rook g7, king h8. If I play rook e1, there is queen to h5. That saves the day. And Queen c4 bhi actually, now that I think about it. Queen e1 bhi hai. Queen e1, bishop g7 is also winning because of the passed pawns. Divya has underestimated the counterplay black has here, and a tactical mistake might cost her the entire game. This is not because I think this is just a straight blunder because of time. That's the only issue. Kuch underestimate nahi kiya, usne just blunder kiya because I think she missed king h8 is possible. Sahaj, do you think black finds this? That's the main question, course. right? 8 minutes left. Of course she will find this. There is no way. I mean, Mitra is a very strong player. She's a French women's champion. Of course, she's more than capable of finding a move like this. I think 100% she plays it. Chat, let's see the crunch time. If black takes on e2, then she is likely seen that she's winning the game. And we will go down for the first time, by the way. Not the first time. I think Harika lost yesterday. But today, we might have our first loss. And we might be 1.5 down in the women's section. And that means, Sahaj, to win the match, both Harika and Tania have to win. That is the only way we can maintain a perfect score at the top. Otherwise, we will go down in the rankings and we will drop our first points. Yeah, unfortunately, that's how it looks like. It's not ideal, of course, but let's hope Tania can still pull off a win. And I think Harika definitely has a good position, so she can as well. Still the match is not over. There's lots of chess to be played. So let's hope. Let's send our prayers. Oh, Black has taken it. Black has taken the bishop. Divya is struggling. And do you think Divya has realized the mistake, Saj, right now? Yes, I think so. Because I think she sees king h8. Because of course, rook g7 ke baad bishop g7 pe the mate in one hai. King h8 is the only move left. And rook e1 played, by the way, Saj. We will see. Oh, she plays rook e1 first. That's an interesting try to not allow queen h5. But do I have queen a2? Do I have queen a2? Oh, wow. Do I have queen a2? Because queen a2 mein rook g7, king h8 is the same thing. I feel. The problem is I have too many pawns. Yeah, I just have way too many pawns. Yeah, queen a2 I think is decent. Sahaj, queen a2 is the best move. You are absolutely spot on. As usual, Sahaj mechanics is perfect. I literally. Dusra move hai crazy wala. Queen g4 also wins. That is also winning.
You Queen just G4, sack the queen. You just sack the queen for nothing, or what? yeah, and played D5, and that's apparently winning. Okay, I don't think she plays that. Yeah, I yeah. don't think she will play that. I mean, if she plays that, I will be shocked. That's, But I mean, Raj, of course, there's yeah. one good news. There's only two moves that Black can play that give her the win: Queen A2 or Queen G4. Otherwise, Divya is back in the game. With this situation, it is possible she misses both. I don't know, Sahil bhai. Even having, usually 6 minute extra hona is not a big deal, but when it's zero, when you have 1 minute and your opponent has 6 minutes, that's a very big difference because those minutes matter a lot in the end. And I feel even if Divya was playing black here, I mean, there is no chance she doesn't play Queen A2 because it makes a lot of sense. Now, right now, materially, black is just 4 pawns up, and all four of the pawns are passers. उसके सामने कुछ नहीं है तो आई थिंक शी विल मोस्ट लाइकली प्ले क्वीन ए2 और कोई चाल ही नहीं है भाई क्वीन सी2 में तो f7 का बिशप कर सकता है तो आई फील क्वीन ए2 इज वेरी लाइकली हियर Chad, by the way, I think I'm going to give you a challenge now. I think you missed the previous Samosa challenge. This is the Samosa challenge. Before Divya's game, and that's I think too vague. I'll give you exactly 7 minutes, chat. If we touch 2,500 likes, मैं समोसे के साथ साथ कोक भी एक बंदे को भिजवाऊंगा भाई, गर्मा गर्म समोसे और ठंडी ठंडी कोक. If we touch 2,500 likes in the next 7 minutes, let's go chat. जल्दी से नंबर हिट करो. Let's go quickly. And she plays Queen A2 on the board. The best move according to the engines. And Divya Deshmukh right now, unfortunately, is objectively lost. After Rook takes G7, we will see the calm move. King H8. I mean, that's the only move because if you take the Rook, then there is mate with the Queen. So it's not like Black will not see it. There's no chance of that now. यूएस तक आएंगे समोसे भाई, देखेंगे भाई. आई थिंक इंडिया में तो कंफर्म है. यूएस का देखते हैं भाई, डिपेंडिंग ऑन डिलीवरी चार्ज. कहीं किडनी अगर सेल बिक जाएगी टाइम पे तो भाई कर सकते हैं वो भी. भाई एयर गैम्बिट यहाँ आई थिंक इट्स अ बिट लेट for it to work. Yeah. I think it's a bit late for it to work. Bishop G7. I think I can just take that, right? Rook yeah, G7, Bishop G7, just Bishop G7, Rook G7, King F8. Yeah. Then 4 pawns abhi bhi hain. They are all passes, and I mean it's looking very, very dangerous for Divya. Yeah. VD game chat check here. Maybe this is time to move to the VD game chat because this game is just lost. So there's not much point. I mean, we'll come back to this, but I think filhal ke liye Divya is dead lost. So going to the VD game, I'm going to just look at the board. Nibhai, are amazing. This is the scene I was talking about, chat. This is what I was talking about, bhai. Exactly my point. Exactly, bhai. Ye hai jadoo. And jadoo kar diya hai. Wapas laga dena scene, Nibhai, whenever we are ready. And we are all set to watch both the games together. Yeah, I think Divya is completely busted here, sadly. Yeah. मैं कैमरा की बैटरी चाहता हूँ. And Divya, by the way, has taken on G7 camera में भी. And yeah, we are going to see the move soon. Yeah, takes King F8. Oh, King H8 she played, by the way. She went to the corner, which looks a bit more risky because of checks, but I don't think there's anything there. Bishop on F7 does a great job of controlling important squares. There it is, chat. There it is. And now you can see both भाई. Chat scene कैसे लगा भाई? अगर scene बढ़ लगा तो नीरी भाई open the chat हो जाएगा यार. बहुत बढ़िया scene है यार. बहुत ही बढ़िया scene है. क्या बात कर रहे हो यार? This is amazing. Also that arrows, right next to Vidit versus Ivich. You can see it's on the left. This is on the right. Looks really, really nice. Amazing. And chat यहाँ पे you can see Vidit there with the, I think वो board flipped है भाई. वो Vidit black लग रहा है. It looks like he is worse. वो please भाई flip कर देना भाई. हम सदमे में आ जाएंगे. And chat, Rook G5 only move for VD opponent. I am not shocked, chat. VD बहुत बढ़िया खेल रहा है यार. He's just playing fabulous chess right now. And chat फिलहाल के लिए ये है current position. You can see the Vidit's board. I know we have Divya's cam there.
But Vidit के board में Sahaj भाई +2 आ रही है evaluation अब. This is just completely winning, and this is how we reached here. ये pawn f6 खेला उन्होंने. Rook d5, rook takes rook h5 and f3, a beautiful move. Rook g5 is the current position, and now I think bishop d2. Why not just pick up this pawn as well? Chat directly मारेंगे तो there is bishop takes f3. That's why Sorry, you first. I feel objectively this is winning for white after bishop d2. अगर h6 का pawn बच गया तो maybe it's not winning objectively, but I think h6 का pawn मर गया तो I'm pretty confident. But maybe you have to give up the beat. Like bishop d2 खेलोगे तो I'll play rook b5, and if you go rook h6 then rook b2. So it's like you have one pawn technically more, but लेकिन वो pawn हमारा जो a5 का pawn है ना वो a6 और b7 को पकड़ के बैठा है एकदम. So I think Vidit's chances are really good in that position. Yep. And chat, we are only 4 moves away from the time control here. So Vidit ko time perfect moment pe milega. And now you can see both the games, chat. This is, I know thoda our board flipped at chat. I think, oh, now it's perfect actually. Now it's perfect. I think ulta ho chuka hai. So chat, we are all set. And jaise hi ek game khatam hogi, then we'll go to the full board again. And ye scene bahut hi amazing. I love this scene. And look at the expressions, man. Kitna tense moments are Sahaj bhai. They know they're playing for their country. Yeah, I mean, it's supposed to be nerve-wracking, these moments. Time pressure moments. Yeah, must be, bhai. And also 4 moves left to be played, and also 51 seconds for his opponent. But I think the moves should not be that difficult to play here. So let's see what happens. And chat, Divya case mein bishop h5 is a very tricky try because you remove another piece there. And ek baar wo knight bhi jayega, then the king also opens up. Queen trade ke chances. I think Divya, unfortunately, will not survive in this game. We are going to lose on board number 3. That means, agar hame match jeetna hai, we need Tania and Harika both to strike. Good news is Harika is apparently winning the game. So we'll come to that soon when we cross that bridge. But filhal ke liye, board number 4, Tania Sachdev pe, I'm going to take a quick check. Wahan pe game is roughly balanced. So Tania's game becomes super crucial. And Sahaj bhai, by chance, if we drop 1 point there, मान लो tie हो जाता है match, is that a huge blow for Team India and their gold chances? I think she can, yeah. 2 minutes versus like 30 seconds. I mean, I'm hoping the time will definitely play its factor here, but difficult to say. Yeah, difficult to say for now. But let's hope she can pull this one. Let's really hope, because we need her to win this. Yeah, we really need that. And filhal ke liye chat yahan pe you can see Vidit still thinking kitna time pressure hai bhai. 3 minutes for him right now. Opponent ke paas 51 seconds hai. 4 more moves to go. He needs to find the move bishop d2. The idea is to not allow to capture both these connected pawns. Connected pass pawns, chat, are super strong in opposite color bishop end games because king आराम से उनकी आगे पीछे दाएं पीछे नाच के छुप सकता है, and therefore the bishop and rook cannot create a blockade. That is very important. h6 pawn मारो, bishop b2 मर जाए, and then just start pushing these pass pawns. That seems decent. ये दिव्या का देख के तो थोड़ा खराब लग रहा है यार. Yeah, it is heartbreaking. Yeah, because I think she was winning throughout. I mean, what a crushing opening it was, and it just didn't work out in her, for her. But that's just a bit sad. Yeah. And chat, by the way, there is queen takes f3 coming in the Divya game. She could have taken it. Tactic है ना भाई. Queen f3 में queen f6 rook. अच्छा, you sack you sack it and then you just win. Sack it and इतने सारे pawns हैं हमारे पास. It should be winning. Yeah, that makes sense. I think that would have been a quicker victory, but I think she kind of Black didn't want to risk that. Time pressure is becoming an issue, so yeah, makes sense. Wait, the bar just went up in Divya's game. What? Oh my God, King G7 was a blunder. Chat, Divya has a saving move, knight to d2 and 94. It's draw. Come on, Divya. You have the move. 92 चाहिए हमें. Sahaj, what a turnaround if she can she find this move? Tough to say. उसके पास भी सिर्फ 16 seconds पड़े हैं, तो we're not sure.
90 to Come 94 on. does seem like very, very attractive to me क्योंकि F6 का pawn सीधा मर She रहा है. finds it. She finds it. Divya is going to hold the game. Oh my God. What happened, Sahaj here? This is a complete turnaround. Queen F3 was tactically winning by force. And suddenly Divya is drawing the game. Tania is winning. Tania is also winning now. This is turning out to be a complete dream come true for Team India. Suddenly. Oh, Tania's opponent just blundered, by the way. Yes. Tania's opponent just blundered, by the way. That was a huge. What a turnaround, by the way. What a turnaround. एक चाल का blunder किया तानिया के opponent ने. By the way. Same here, by the way. -5 position goes into 0-0-0, by 90 to 94 incoming. By the way, just so you know, Sahil, I just want to add one more thing. There is a very big possibility that Divya ends up winning this game. मैं यही कहने वाला था. Now, there is a tilt factor. There is a tilt factor. You have to add that because you just went from being dead winning into a draw position, and now वो accept ही नहीं कर पाओगे यार. Yeah. I was about to say the exact same thing. I think chat Divya could win this as well. So chat, एक बार Divya OP, Tania OP, एक बार spam कर दो, and I think Harika OP as well because they are coming up with some amazing comebacks here. I think at one point we were really worried कि हार ही ना जाए, but suddenly we might just have 3.5 half या 3-1 at least. So chat, let's go. बनता है भाई, what a comeback यार. By the way, King H2 वहां विदित ने खेला है चैट. So opponent के पास 15 सेकंड है. He has to play now. Six seconds, 5 seconds. Okay. Why is he taking so long? By the way, Ivich के game पे क्या हो रहा है? Okay, Rukesh check played with 9 seconds on the clock. And chat ध्यान रखो, maybe Divya doesn't know that this is a draw. So maybe she might still feel she's worse. She might think she's winning. So she doesn't have the bar to tell her key what is the evaluation, and she has seconds on the clock. So we still don't know what the result will be, but that's a very good sign here for us. By the way, Tania का game 1 second के लिए हम लोग लगा सकते हैं just to show everyone what the blunder was. Because I think that was OP. I mean, that is so clutch. Because C5, we need to show that just for a second, bhai. I think Divya, if we can go to a Tania like full screen for 1 second and then come back, then we can show whenever it's possible. तब तक के लिए we will of course stick this, and फिलहाल के लिए now Saj bhai, look at the time of Divya's opponent. She suddenly realized, what have I done? Now I don't know how do I get out of this. And I mean the nerves of Divya also. She must be feeling so good. Finding that last blow. You know this is the only thing she had in the tank. Yeah, it's over. I think 94 ke baad, I think she is going to win this game. And chat, I mean, this is just insane. This just tells you chess kitni hard hai bhai. It's not easy. You can play well for 5 hours and then one move can take it all away. Chat, aapke liye, you know what? कुछ crazy करते हैं यार. साज भाई, I am going to do one challenge. ठीक है, crazy है, ठीक है. Chat 4000 लोग देख रहे हैं. क्योंकि कमबैक क्रेजी हुआ है, तो अगर इन द नेक्स्ट 5 minutes वी टच 2500 लाइक्स तो समोसे मिलेंगे. अगर 3000 टच किए तो पिज्जा मिलेगा भाई एक बंदे को सीधा. तो भाई चैट, अब खेल आपके हाथ में है. इन द नेक्स्ट 5 minutes इफ वी टच 2500 लाइक्स तो एक बंदे को समोसे गर्मा गर्म मेरी तरफ से. अगर हमारे 3000 हो गए तो एक बंदे को मिलेगा भाई पिज्जा मेरी तरफ से, बिकॉज ऑफ दिव्या कमबैक. भाई लेट्स गो. Crazy भाई, crazy. And by the way, look at it कि follow up बताओ. इसका follow up मतलब there was, yeah, let's look at this. C5 was the blunder, by the way. Yeah, C5 was the big blunder. E5 takes takes, bishop distract. Now यहाँ पे bishop takes E5, and unfortunately this is over. आप चाहे bishop D4 यहाँ पे खेल दो. There is rook takes B3. And you just, I think, I don't know, king E4, rook B4 looks winning. The bishop will be pinned. And now the knight on A7 is trapped, bhai. That's the point. Yeah, the knight on A7 is trapped. Yup, and now Tania is a piece up. So Tania is sure shot to win this game. Let's go to the Divya game again. See if she can somehow not only draw, but win. And by the way, I think she's winning because King H8 is the only move for black. Can we go to Divya's game? And she has blundered. Divya is better now. Let's go to that game quickly. Nidhi, back to the double camera quickly. Let's go. It's by crazy. The way, this also came at a perfect time because King F8 was the 40th move. तो दिव्या के पास आधा घंटा है सोचने के लिए to find the win.
perfect, just perfect chat. And just to point out, यहाँ पे देखो King F8 गया अभी last move. King H8 was the equality, but it's very hard to play King H8 in that position, especially जब आप वहीं से आए हो. And now Divya is much better. I think उनको move G3 निकालनी है, and then she can focus on grabbing these little pawns on F6 and D6. And Black King बेचारा कह रहा है मैंने क्या किया लाइफ में यार, क्यों निकला मैं घर से बाहर, अच्छा खासा घर में बैठा था, लेकिन मैंने कहा मैं भी भाई लड़ने जाऊंगा मैदान में, और भाई फालतू में लोल हो गया. By the way, Harika is also completely winning. Harika is basically won. Tania is just a piece up for nothing. And I think Divya might also win. Women's team में भी 3.5 हो सकता है. Yeah, very likely. We went from 1.5 to 3.5 in like 2 minutes, Raj. Basically, yeah, basically. Also, Vaishali also with that clutch save. I mean, everyone's looking fantastic. VD का टाइम 5 सेकंड है भाई, चल क्यों नहीं रहा भाई, चल भाई, चल भाई, चल. अच्छा 40 में हो गया, अरे बाप रे भाई यार, भाई 40 में हो गए भाई. टिक्कू भाई मेरे कानों पे दया करो प्लीज. भाई मैंने देखा ही 40 में हो गए. मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं. भाई सोचो ना भाई, मेरे को लगा भाई बंदा भूल गया लॉक के बारे में यार. नहीं 40 मूव्स हो गए ना भाई, 40 मूव्स हो गए. डॉट 40 मूव्स हो गए. तो चैट उनको टाइम मिल चुका है एक्स्ट्रा वीडी को. नाउ ही विल हैव अ डीप थिंक. So everything looks okay भाई. Sorry for the panic there. And now I think Divya के टाइम में भी हो चुके हैं. Next game, which one do you think will finish, Sahaj भाई? I think next मुझे लगता है तानिया की गेम खत्म होने के chances maximum है, because she's just simply a piece up now. Yeah. I think Tania just is a clearly winning. Tania is going to win. मेरे को just I think the only unsure game I am is Vidit's game. क्योंकि ये पोजीशन विनिंग तो मतलब बेटर तो है फॉर श्योर, बट विदित इसको ग्राइंड करेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फील. सही बात है भाई, ग्राइंड करने में मजा आता है भाई, पूरे टाइम बस खेलते रहो अपन के साथ भाई, तो उसको कुछ कर नहीं सकता वो. मतलब थियोरेटिकली तो लॉस नहीं है ये, पर लेकिन डिफेंड करना ब्लैक से बहुत मुश्किल हो सकता है भाई. Yep. And Nidhi bhai, I think it's time to switch games, because I think एक समय गुकेश मारना बहुत जरूरी है, because you've not looked at that game for a while, and he is actually gearing up for another victory. So chat, Gukesh again I think is going to win the game. Let's go quickly to that game, Nidhi bhai. Full screen Gukesh camera along with his board. I think you're going to see उन्होंने कैसे squeeze किया है, because यहाँ पे सहज भाई, now Divya will think, Vidit will think, and Tania is of course a piece up. So I think games will finish. Of course, let's keep an eye out for Tania's game. जैसी खत्म होगी, love to look at that. But फिलहाल के लिए, I think where we left this is somewhere around here, right? And knight D2 आया था, याद है? So knight B3, rook E2, rook C7, knight G4, rook E7 थोड़ा डिफेंस करते हुए, rook H1, knight H4 check, king G3, and king G3 करके apparently king F2 was the way to play for some reason. King G3, H5, knight E5, knight F5 check, and धीरे धीरे करके ये पॉन्स ब्लैक की जिंदगी में आने वाले हैं और एक नई रानी बनाने वाले हैं भाई. गुकेश also all set to win the next game. Chat, क्या खेल रहा है गुकेश भाई, crazy. Yeah, Gukesh also looks like to be, he's completely winning. G4, H4 कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है. Knight D3 और E5 एकदम फालतू बैठे हैं, मतलब कोई पर्पस ही नहीं है उनका. But I'll just keep pushing my pawns, and I think I think actually H4 खेलना may not be as good, because white can play knight G4 check और दूसरा knight E5 पे बैठ सकता है. H4 खेलना may not be appropriate, so maybe he has to find a way to break through without giving up that square. जो important होगा भाई. Absolutely agree. And chat ने एक update दी है, and chat, you are absolutely correct. Apparently Uzbekistan is all set to lose to Vietnam there. They are down 0-1. They are worse in 2 of the boards, and in fact all 3 of the remaining boards they are slightly worse. So Uzbekistan, the defending champions, might go down to Vietnam today, and that tells you how difficult it is. Harika, by the way, has won apparently, chat career. Let's quickly shift and check it out. I don't think she's won yet, unless we are missing something. No, A4, A5, A6 भाई, A4, A5, A6 pawn बस बढ़ाते जाओ. A4, A5, A6. If she ever takes on knight H5 or something, I also like E5. वो knight भी H5 के लिए permanently बाहर वहां से, और just A5, A6, A7 भाई push करते जाओ बस. Yeah, I mean she's going to win something. No, she's going to win a knight or something.
ये आप कदम कदम I think. बढ़ाए जा, वो गाना था ना, बड़ा याद आ रहा है मुझे इस टाइम पे Hmm. भाई. Yep. And by the way, chat, also, Divya Deshmukh is still thinking. So I think this is a very good moment for her to literally just finish the game till the end in her mind, at least. At least go way deep, calculate everything. Oh, she played G3 the best move. Wow. So she has done it quicker. Probably doesn't need as much time. Yeah. She probably calculated much better than I can. So yeah, she is ready. G3. Done. Yeah, but of course G3 is also logical. No, you were Yeah. there was a mate in one ka threat and she just guards that, and now her opponent is the one who has to think. Yeah. I think the follow up for Black is very 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 risky. I mean, she will be so unhappy with this, yaar. Just like 2 moves ago, 3 moves ago. I mean, Divya ke paas sirf seconds pade the. She had like some 6-7 minutes on the clock. The bar was just -5. Of course, you had 4 pawns. There was basically no compensation. And ek Hmm. move ki wajah se, सिर्फ एक मूव की वजह से everything just changed. Chess can Yeah. be so brutal. Yeah. साल भाई, विन इन वन मूव बताओ भाई, बोर्ड उठा के फेंक दो भाई. दैट्स द ओनली विन इन वन मूव भाई यू कैन हैव. एंड फिलहाल के लिए बाय द वे, नोदरबेक, सॉरी, उज्बेकिस्तान इज अबाउट टू गो डाउन 0-2 राइट नाउ. सो उज्बेकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है. एंड चैट, किस गेम में हमें जाना है? आई थिंक हरिका हैज नॉट finished the game just yet. Neither has Tanya. So किस गेम की तरफ हम जाएं यार? बाद में I think let's go to Gukesh's game, and also I want to have a look at the US team, because कोई chat में कह रहा था कि they are about to draw, which is not what I think. Oh yes. So chat, Caruana wins his game. Dominguez has drawn. So that is 1.5 in the favor of the United States. Wesley So is in a drawn position right now. Let's assume that as a draw for now. But Ray Robson is getting destroyed. So if US draws, Uzbekistan loses. And as I remember, China was not doing so well either against Armenia. Oh, China will win 2.5, 1.5. Barely scraped through, bhai. Oh, 3 draws already. Board 1, 2, 4 are draws. Board 3 is winning. So it's not over yet. It's not over yet. सिर्फ हमारे बोर्ड पे ऐसा लग रहा है कि it's like a very very convincing win. I mean, so far from what it looks like. I mean, Yeah. worst case scenarios I think is a 3-1 win. I mean, Yeah. which is a very very good sign. Yeah, already सारे के सारे, I mean, सारी teams are more or less struggling from the looks of it. यार हमारी क्या टीम है भाई. मतलब साज भाई, भाई बिल्कुल at यार. this point क्या ही टीम है हमारी भाई. And to be honest, it's amazing यार. मतलब we are looking towards the future जहाँ पे world top 10 में से I don't know 5 प्लेयर इंडियन होने वाले हैं. There's only one guy, I think Magnus Carlsen, जिसको अब पता नहीं कौन ओवरटेक करेगा, and likely to be Indian as well someday. But उसके अलावा I think it's pretty clear कि the future is going to be Indian भाई, at least in chess भाई. It looks amazing. Ding third draw in a row. Yeah, Ding is not really about. He's not able to win. उन्होंने 3 ही गेम खेली है, डिंग तीनों की ड्रॉ हुई है. रेटिंग कितनी हो गई भाई अब? डिंग की हाँ, रेटिंग कितनी हो? मैं चेक करता हूँ एक सेकंड यार. डिंग की रेटिंग is 2732 now. He is world number 18. बाप रे. I think Oh, Sahaj भाई. do you wanna know fun facts, हाँ Sahil bhai? हाँ हाँ. Hans Niemann has a higher rating than Ding Liren right now. You know another fun fact भाई. I want to make Yeah. world championship predictions now. मुझे लग रहा है कि I'm ready. I think I am prepared now. I have enough data to understand कि भाई कौन जीतने वाला है. मतलब Hans has a higher rating than Ding. I mean, ये कभी नहीं सोचा मैंने था भाई ये होगा. भाई यही क्लिप होगा और वो ट्विटर में डालने वाला है. By the way, Gukesh taking his time, all the time in the world. मतलब उनके ऐसे, वो आइंस्टाइन ने कहा है ना भाई, क्या था उनका वो एक प्रिंसिपल था ना, यू नो क्या उसका वो some principle whatever, एक था कि like light bends around a massive object like a black hole. If you move fast, then time flows slow. Black hole के आसपास it flows slow. And when Gukesh is playing, then time flows slow. ऐसा कुछ रोल था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा. But yeah, I think I have Gukesh no का idea बहुत भाई. टाइम है भाई. बहुत टाइम है, हाँ exactly. China women have China ने अपनी strongest team field नहीं करी अनिशा. So they are not really the strongest team in the women's section. उनके top 4 प्लेयर चारों नहीं खेल रहे.
टिकू भैया भाई टिकू बोल देते सीधा। भाई क्या ये बोल क्या था रहा भाई? है? ये इसको क्या था क्लिप भाई? करो, चैट ये क्लिप करो। भाई इसको डालो भाई, ट्विटर पे। मेरी शक्ल नहीं है भाई, दिस इज एआई भाई, एआई का गलत इस्तेमाल किया हाँ। जा रहा है। तो शक्ल माँ, क्यों नहीं है भाई, क्या हो गया? अरे मैं क्या बैटरी चार्ज कर रहा हूँ भाई? अच्छा ना, फुल स्क्रीन देख रहे हैं, फुल स्क्रीन है तो मैं बैटरी चार्ज कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली अब बैटरी ना है मेरे भाई को लगता चार्ज। है आप ना वो वाला कैमरा ले लो, आप लॉगिटेक वाला, वो बढ़िया नहीं नहीं, है, नीरी भाई के पास भी सेम है। नहीं मैंने मंगाया, अभी मैंने मंगाया है, पोर्टेबल चार्जर मंगाया है जो इंडिया में मिलता ही नहीं है, तो मैंने अभी मंगाया है। तो इट विल रीच मी अच्छा ऑन अच्छा 16th, तो उसके बाद फिर आसान हो जाएगा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे। एंड चैट, फिलहाल के लिए दिख रहा है गुकेश पानी पी रहे हैं भाई। पानी पीना यूजली साइन होता है कि 5 मिनट में गेम खत्म होने वाली है, सो दैट्स अ गुड साइन। ब्रेड की अलेक्जेंडर विदित ने हराया था इनको टू क्वालिफाई फॉर द कैंडिडेट्स, एंड गुकेश हराएंगे टू गो टू द नेक्स्ट राउंड इन द ओलंपियाड। Vidit had it on for the first time. I think हमने कल शायद बीच में कमेंट था जहां पे he was there. I was still watching this चिकन टिक्कू मसाला। अरे भाई यार, चिकन टिक्का मसाला बहुत टेस्टी होता है। चिकन टिक्कू मसाला में कभी टेस्ट नहीं किया, प्लीज टेस्ट मत करना यार, विल नॉट बी नाइस। तो या ये ना, I have read this so many times, but it never ceases to be no, not funny. It's always funny whenever I read it. ये साहिल टिंगू कौन लिख रहा है यार भाई, बस करो यार। साहिल साहिल टिंगू लिख रहा है कोई। are all the rounds knockouts? नहीं नहीं, they are league stages, but of course, like if you win, you play the winners. आपका tie break अच्छा, you have more points. Every point matters. नाइट कहाँ चला भाई, कोने में यहाँ पे कौन है इसका रिश्तेदार भाई, किसको मिलने जा रहा है? I think if White is just playing anything at this point. नहीं, I think he wants to bring his other knight to e5 to get some activity. But yeah, what else is he supposed to do? कुछ करने को नहीं है ना भाई। True, true, true. Come on, let's go. चैट बताइए चैलेंज क्या हुआ भाई, तुमने मिस कर दिया चैलेंज, ऐसे कैसे चलेगा चैट? आई गिव यू द चैलेंज भाई, तुमने पिज्जा मिस कर दिया चैट, देख लो। टिक्कू, ये क्या है भाई? दिव्या गेम, बाय द वे आई वांट टू चेक हर गेम, हैज समथिंग हैपेंड? नॉट येट चैट, जीती या कुछ हुआ नहीं है। दिव्या's opponent is now thinking कि कैसे हारेगी वो। यस यस, माइंड स्पोर्ट भाई 15 पॉइंट्स अवे है अर्जुन 2800 से। क्या हंस रहे हो साज भाई, मुझे बता दो। नहीं नहीं, आपके कमेंट पे हंस रहा था मैं। अच्छा ओ, what's happening in all the boards? Chat, I will give you a roundup. ठीक है, first of all, open section, we have lot of upsets in all the teams happening. First of all, Indian team लेकिन flawlessly खेल रही है। Praggnanandhaa drawing the game. He has drawn his game very quickly. Arjun crushing with the black pieces. So 1.5 points आ चुके हैं हमारे। Gukesh is right now close to winning as well with the black pieces. Pawn up है, and he's doing really well. Vidit also doing really well. He's also up on material. Pawn up है, opposite के लिए bishop endgame है, but very good chances to convert. So फिलहाल के लिए we're looking at least 3 points I'm hoping. And women section में एक टाइम पे थोड़ा नर्वस से आ गए थे हम लोग, but अभी के लिए Tania is simply a piece up, and that should be a simple victory. Divya is also close to winning. Vaishali has drawn, and Harika is also just about to win in a few moves. So I think वहां पे भी 3-1 तो confirmed लग रहा है मुझे, 3.5 के भी काफी ज्यादा chances, and coming back to the Gukesh game, and बाकी सारी teams, चाइना, उज्बेकिस्तान, यूएस स्ट्रगलिंग, यूएस के ड्रॉ होने के चांसेस, चाइना barely escaping through, उज्बेकिस्तान already almost lost, so it's turning out to be well for team India. बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। और ऑल्सो अर्मीनिया वर्सेस चाइना इज गोइंग टू बी गोइंग टू बी ट्रिकी वन, क्योंकि तीनों बोर्ड्स पर ड्रॉ है, बट इट लुक्स लाइक चाइना माइट विन ऑन द थर्ड बोर्ड, बट Yeah. बाकी सब ऑलरेडी वाज अ ड्रॉ, तो इट्स वेरी वेरी क्लोज। या चेस ओलंपियाड जीते सिर्फ 8 चालों में, नहीं यार 8 चाल में नहीं हो पाएगा। आई थिंक 11 राउंड में हो सकता है, जिसमें से हमने भाई 3 राउंड तो निकाल दिए, अब सिर्फ चौथा राउंड चल रहा है भाई। चौथा राउंड भी ऑलमोस्ट निकल गया, ऑलमोस्ट। हाँ हाँ आई थिंक वन मोर आवर एंड आई थिंक वी आर देयर। ठीक है भाई, कहाँ रहते हो भाई? मैं फरीदाबाद में रहता हूँ भाई, एक अच्छी सी सिटी है जहाँ बड़े बड़े लोग निकले हैं, मतलब इतने महान लोग निकले हैं, जैसे कारी मिनाटी, वो भी उसी शहर से है भाई। रियली? कैरी मिनाटी इज फ्रॉम फरीदाबाद? आई डिडंट नो हाँ दैट। भाई, वही तो भाई, हमारा स्कूल यूट्यूबर्स का है भाई, प्रखर भी स्कूल से है, कैरी मिनाटी स्कूल से है। रियली? अच्छा। वाह।
Can knight d6 played, by the way, with the idea of knight c4 or knight f7? I think either is possible. Yep, नाइट को घुमा रहे हैं. I think that would be nice. अगर नाइट King d5 आता है. f5. King f5 का भी idea है. King f5 just to advance the king. Maybe it helps him play g4 even, with more force. Also, Sajbhai, if you play knight e5, then knight c4 attacks the b2 pawn. So you will need something to defend here. No, I don't think he will play knight c4 then, because I can take and put the other knight back on e5, and then आपका b3 का knight एकदम मतलब फालतू में, I feel like that's going to be like a piece that is completely out of place, उसको को उसके लिए कुछ करना होगा. knight f1 knight c4 maybe. True. Kapil Sharma फरीदाबाद से नहीं यार. Samosa is love, I agree भाई. Samosa is indeed love, true love भाई. And chat, बहुत मजा आने वाला है भाई. And I'm also checking the women's section games, by the way, simultaneously. Has Tania's game finished? She is a piece up. So do you want to switch to that game? I think it should finish soon. Yeah, let's do it. I will ask Nidhi bhai to switch to the Tania game quickly. एक बड़ा interesting question है सहज भाई. In a tight match, would you prefer to trade knights for bishop or bishop white? I'm not sure, but it depends on the position भाई. भाई position इसका कोई hard and fast कोई rule नहीं होता कि कि एक ही चीज करनी है. There's no like एक तरीका यहाँ पे, बट लेकिन it depends, जो भी सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है. जैसे नाइट्स लाइक क्लोज पोजीशंस, बिशप्स लाइक ओपन पोजीशंस. तो it depends. I can't agree more. I think position में बहुत कुछ डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आप लेट के चेस खेल रहे हो, पता है एक कहानी हुई थी. I was playing and there we have it chat. Tanya's game about to end soon. Let's place the board correctly Nidhi, and बाकी सब बढ़िया. मुझे याद है एक बार मैं एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा था, I think from Thapar, and I went to Chandigarh to play it. And वहां पे बैडमिंटन की टीम थी साज भाई. And they were like, यार तुम्हारा स्पोर्ट ना बेस्ट है. मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार, चेस में तो ना कोई क्रेज, ऐसा क्या क्रेजी है भाई. मतलब जो लोग खेलते हैं फिजिकल स्पोर्ट्स इतना टीवी फ्रेंडली है, हाउ इज चेस बेटर. कहते तुम लोग तो प्रैक्टिस लेट के कर लेते हो भाई. मैंने कहा भाई बात तो सही है यार. मतलब बाकी स्पोर्ट में तो पहले 1 घंटा तो वार्म अप ही लग जाता है भाई, जस्ट टू बी वार्म्ड अप टू प्ले द गेम. चेस में तो लेट के प्रैक्टिस हो सकती है यार. I don't think कि आप लेट के आप प्रैक्टिस कर सकते हो चेस. I mean you can prepare I guess, but majority of the things I don't think you can. हाँ, but by the way तानिया rook d8 क्यों नहीं खेल रही? I don't know, maybe she doesn't want to go into the end game, like वो जो rook d8 में तो नहीं, come on, that is completely winning. rook d8 is just finished. Yeah, it absolutely is. There is this interesting move Sahaj by the best move, that is bishop d8 and bishop g5 check. Nah bhai, rook d8 is lost. there is come on bhai, rook d8 गेम खत्म है. just रुक हटा दिया आपने तो अब क्या करोगे? आप पॉन कैसे पुश करोगे? या अश्विन जी कह रहे हैं कि वो पागल हो गया. अश्विन जी यार कोई बात नहीं है, चलता है. मैं भी पागल ही हुआ. Let's go. Tanya, let's finish the game. Tanya commentating. नहीं, I don't think she's commentating today. Well, at least एक चीज है कि यार हमारा पैनल सेम है भाई. तानिया at least स्क्रीन पे तो है. That didn't change. Tanya won. She's about to. I don't think she has won yet. I think opponent उनकी खेल रही है. I don't know why, because I will move the bishop and then I will pick up g2. Then we'll start pushing the pawns. I don't see any reason why it should continue. I think it's just a tilt factor कि आप तब से खेल रहे हो तो you just won't want to resign. बिल्कुल. But I don't understand why she's not playing rook d8. That is, rook d8 के बाद, I feel white will just resign there. I think that's what she's calculating, Saj. I think that's exactly what she's calculating. I think g3 पहले खेलना पड़ेगा. Yeah, I agree, but like like there is, unless white का king बहुत ज़्यादा advanced है, then there can, now bishop f6 check. Why king e6? अरे हाँ भाई. Go back. Just bishop f6. जितने pieces exchange कर सकते हो उतने pieces exchange करो, and then it's over. So rook d8 is just me saying कि भाई ये position तो winning है ना भाई. At the end, आप b7 push करोगे, I'll take that pawn with my bishop and I'll sack it, and मेरा king already queen कर चुका होगा. Yep. कोई कह रहा है तानिया इज लाइव ब्रो. डूड एक चीज ध्यान रखो कि ओवरऑल वहां से और यहां से भाई वो 15 मिनट का डिले होता है, ठीक है.
तो वही 15 मिनट का डिले तुम्हें लग रहा है कि वो कहीं पे लाइव है और कुछ नहीं है भाई। बट हम तो देखेंगे भाई फिनिशिंग मोमेंट यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई वहां पे कोई पाप हो रहा है बिल्कुल। पीछे यार। ओके सॉरी। पाप हो रहा है? ओ पेत्रा। that was funny। साहिल भाई इतना टाइम हो गया, शक्ल नहीं देखी आपकी। यार शक्ल भी लगानी है क्या? अभी तो बढ़िया ना, आई थिंक वी आर हैविंग फुल स्क्रीन, आई थिंक अच्छा है, आई थिंक दैट्स द परफेक्ट एंगल देयर एंड focus is always on the players. Mark my words, Arjun will be world champion कह रहे हैं ललित जी। अरे यार I think that is going to happen. I think most of these players are going to oscillate between becoming the world champion. I don't think we are far away from a situation जहाँ पे we are going to see India versus India world champion there. It will be amazing championship. It will be amazing भाई। Could be भाई, could be। Come on, let's go. Bishop c7, okay, h2 pawn के पीछे, बढ़िया है, I love that move. Boys की गेम देखो, चलो भाई, I think we can. I think I want to see the final moment though. I think I know लोग कह रहे हैं live है, but I think that means the game is about to finish. I would love to first see the final moments of this game. Then we go to the next game. I think Divya's game might be about to finish as well. She's completely winning, chat. Completely winning. And Harika also completely winning. So Sahaj, 3.5 incoming in the women's section. That is such a stark contrast to what we thought कि होगा यार, हम तो panic कर गए थे एक बार। हाँ भाई, 3.5 in the women's section, and from the looks of it, looks like 3.5 मतलब men's section में भी होगा भाई। It's I feel like it is going to happen। भाई कोई चैट में कह रहा है यूएस लूजिंग, दैट इज इम्पॉसिबल। आई एम जस्ट गोना वेरीफाई No, वेरी no, क्विकली no, बिकॉज़ they're not losing। because Wait, she just played। She didn't play rook d8, she but played why no not? she's not played yet। नहीं खेला तानिया ने। आप खेल दो rook d8, बात हाँ तो rook एक ही है। d8 I think works। bishop f4 check also works अब by the way। bishop f4 check के बाद, लेकिन why keep the rooks? No, like if you have more in material, just rook हम्म exchange the rooks, game खत्म। yep कोई Gukesh no मेट on ढूंढ रही है time। क्या? आई थिंक तानिया मेट ढूंढ रही है यहाँ पे। check Yeah, she's looking for a mate। king d1 let's go। I think rook g7 आ रहा है, have to be a bit careful। bishop e5 yeah takes care of that। USA, how is USA losing, chat? Just to confirm, Caruana है। Oh, US is losing! No way, US is losing. They are right. They are right. क्या हुआ क्या हुआ Absolutely क्या हुआ? right. Sahaj, bhai, You Caruana has oh won. Dominguez has drawn, but Wesley and Ray Robson are dead lost. It's over. Oh my wow, God. The US, the mighty US team is about to crumble in round 4 itself. Uzbekistan is about to crumble in round 4 itself. Sahaj, what is happening? wow, that is unbelievable actually। Wesley and Robson Ray losing, wow। Didi bhai, can we have the US? ब्रेक किसने लिया था? या इनकी टीम में रेस्ट कौन कर रहा है? रेस्ट कर रहे हैं अरोनियन आज। That's a fair rest, I Oh think. right, that's a fair rest। Yes। Oh, that is a very very bad sign। Niri bhai, if we can have the Wesley So cam, galti se agar possible hai, would love to have it because I think okay, Tania is completely winning. She's a piece up. We might miss the final moment, but I want to see the US team. If they are losing, that is crazy. And chat, tab tak ke liye main जब तक के लिए कैमरा ढूंढते हैं, I'm going to update you on the Divya game. This भाई is rook the d5 Divya. check। भाई rook d5 check in Tania's Yep, game। Oh, the yep. what? This is Divya's game, chat, and she is completely winning. Queen s6 check, king e7, and this. Can we have the US team, Niri bhai? I think we need the full camera of Wesley So now. Wesley So, super important. Thank you, Niri bhai. This looks better. Vidit game with the he's also pushing right now. And Sahaj, US team losing. How is it possible? I am completely at a loss of words। यार US is, I mean, it's the best team on paper। This is absolutely unbelievable। It goes to show यार किसी भी दिन मतलब कुछ भी हो सकता है।
किसी भी दिन कुछ भी बाप हो रे सकता है. That is insane, यार. That is absolutely insane. भाई, this is insane. That is I also after Fabi delivered a win, yeah? Fabi did deliver. भाई, या I cannot believe it, chat यार. ये तो पिन करने लायक मैसेज है. I still can't. I am seeing it. I am still not believing it. I'm still not believing it, Sahaj bhai. That's how like unbelievable this is. By the way, Tanya का गेम खत्म हो गया क्या? People are saying it's over. I'm going to check quickly. No, it's not over, I think, but yeah, I Okay, think it but was, this is let's stay on this, no, because we can capture the handshake here. yeah, but I think I think we have the different scene, but I really want to rush to US bhai. Nidhi bhai, I don't know, जब भी कैमरा तैयार हो जाए वो लगा देना भाई. Really want to check that out. USA Wesley So second board, Nidhi bhai. Second board we need for USA. Come on. But I mean, Tanya is okay. There we go. Let's capture the handshake. No, she should resign any second now. पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश. अरे आपस में खेल रहे हैं लोग. बढ़िया है भाई, इतना दूर जाके भी. बढ़िया भाई. Bangladesh is a much stronger team than Pakistan. That's for sure. Yeah. Oh, there is nobody on the US table, by the way, Sahil bhai. What? No, that's the women's table. No, is that the open table? No, I don't think that's. He said nobody's on there. No. I just. क्या बात कर रहे हो? Nobody on US table. Have they finished their games? Oh, probably so chat, not. Probably I'm going to not. show you the games. Nidhi bhai, can we have, let's say, Tanya's cam, let's say, and just the board? Yes, thank you. Let's look at Wesley So's game then, because जो मुझे लग रहा है, I'm going to go. Yes, this is perfect. बस Tanya cam लगा देना. This was the position, chat. And कहीं ना कहीं कोई blunder हुआ है. I don't know where it happened. Yeah, somewhere here, no? And this rook e2 move is the blunder. And after rook b7, it is actually going to be mate very, very soon, chat. Oh, and he missed rook b7. Maybe he thought rook b8 hoga, but rook b7 he missed completely. Oh, wait, there we have it. Handshake, and Tanya wins. Yeah, Tania Sachdev has won her match. That gives India a 1.5 lead with Sloan. We're going to reach 3.5.5. Beautiful victory by Tania Sachdev there. She's as flawless as always and just leads India there with a victory. Divya Deshmukh will join her very, very soon. She has grabbed a knight on f6, pawn on f6 with her knight, and the black king is going to struggle. And soon we will have Harika joining them as well. This looks like also, a perfect team effort. You know what's really sad is that Natasha was like she had such a good position, but you know वो एक move की वजह से c5 he just dropped like a whole piece. It was like a one blunder and the game is over. So sad actually, because she was technically pushing in that position as well. I agree, Saj bhai. This is yeah. It's just amazing, man. It's just amazing, and the comeback itself is just noteworthy. And Saj bhai, भाई कोई कह रहा है रेस में ड्रॉ करने लगा है, लेकिन दीदी को तो कैमरा पे कोई दिख ही नहीं रहा है. ये क्या चक्कर है यार? नीरज चेक करना है भाई. मैं तब से अपने आप को देख रहा हूँ कैमरे में. हाँ, क्या आपका कैमरा लगा लो यार. नहीं, मैं अपना कैमरा लगा लेता हूँ, उसमें कोई चक्कर नहीं है. आई कैन ऐड दैट कैमरा. वो तो मैं ऑन कर लेता हूँ. आई थिंक चार्ज हो गया है ना अब. हाँ, मैं कर लेता हूँ. बट निधि भाई, आई थिंक वी कैन हैव एनी सीन यू वांट नाउ. आई वुड से कि बोर्ड लगा दो एंड लेट्स कीप मी एंड Sahaj also there, ताकि थोड़ा easy रहेगा आपके लिए भी. I think I'm back on the camera and let's just kind of have the board, full board, and if possible अगर US team दिखती है तो बढ़िया, वरना भाई let's go to I think Divya's camera and I will play around the US games at the bottom. Oh, there we go. भाई ये कौन सा है भाई? टी-शर्ट चेंज, साहिल भाई टी-शर्ट चेंज कर ली क्या आपने? नहीं भाई, यही पहनी थी भाई. कैमरा लगा देना साथ में यार. हाँ, परफेक्ट. There we go. भाई शर्ट तो यही थी भाई, कुछ किसी ने उतार देखा. टी-शर्ट गैम्बिट भाई, टी-शर्ट गैम्बिट. मेरे कपड़े कौन उतारा है बता यार. एनीवेज, चैट अब ना चैट में लोग पीछे जाके देखेंगे, कोई ना कोई पक्का देखेगा पीछे जाके. हाँ, चैट बाय द वे ये कैमरा किसका है निधि भाई? इफ पॉसिबल वहां दिव्या कैम लगा दो. We'll go to her game, we'll capture the handshake and साथ साथ मैं US गेम देख रहा हूँ
Chat, this is the current position for Wesley So. He's absolutely busted. And अगर हम rare option की game में जाएं, I'm going to have a quick look against Korobov. This is the current position. By the way, Harika has just won her game as well. The game is over. Oh, awesome. One look at the Harika game. Harika has won, chat. That is an amazing result. So Indian women's team has already won the match. 2.5. Amazing victory by Harika there. So great victory. And let's just see Divya's camera as well. And let's see her win in the final few moves. And साथ में हम देखेंगे. Let's do it. US camera. Sahil bhai, I'll be back in just 1 minute, okay? Sure, bhai, sure. Chat. भाई यूएस हार रहा है भाई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी आंखों से चश्मे का नंबर बढ़ गया भाई चश्मे का नंबर बढ़ गया कि मैं सही देख रहा हूँ। चैट सवाल है, यस नंबर देना, ठीक है? और भाई दिल से नहीं, दिल और दिमाग दोनों ने सोचना, क्या यूएस टीम आज हारेगी, यस और नो? मुझे लग रहा है इट इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, लेकिन अभी चल रही है गेम। यस या नो, क्या यूएस टीम आज हारेगी? बताओ भाई। India is number 1 in the points table, Dev, after 3 rounds. ये भाई चैट तो सब यस लिख रहे हैं, कुछ लोग टाई लिख रहे हैं, कुछ लोग नो लिख रहे हैं। दिस इज भाई, दिस इज क्रेजी भाई। उज्बेकिस्तान लूजिंग, ओह आई कांट बिलीव इट भाई, कितना बढ़िया चल रहा है इंडिया के लिए यार। नॉट ओनली आर वी क्रशिंग, बाकी टीम्स आर पैनिकिंग। Yes, 3000. And chat, because इतना कुछ चल रहा है, I think I will also look at the Indian boards. You know, दूसरे का दुख हो के हम खुश हो रहे हैं, अपना भी देख लेते हैं भाई. And if something has changed, and Gukesh chat is still much better, and I think he will win. This is the Gukesh game. Black से कुछ खास change नहीं हुआ है इसमें. And Vidit game जो है, that's an important one because time प्रश्न में थे, time मिल गया था उनको. He is also pushing. This can end in a draw, but still that's the best Black can get. तो 3-1 तो होगा ही होगा. बाकी देखते हैं क्या होगा। आई थिंक गुकेश और विधि में से एटलीस्ट एक कन्वर्ट कर लेगा एंड एक का शायद ड्रॉ हो जाए, तो 3-1 मिनिमम। एंड साज भाई, वेलकम बैक भाई। यूएस टीम को क्या हो गया यार? हाउ कैन इट हैपन? Crazy भाई, I mean I did not expect this turn of events. यूक्रेन ने यूएस को हरा दिया, that is so crazy. Also, Aronian Korazena was actually good. I mean, ये भी नहीं बोल सकते कि भाई, you know, कि गलत टीम पे आपने बैठा, क्योंकि Aronian, you know, we know he was struggling a bit in the previous rounds. So yeah, I mean, वो भी नहीं कह सकते, but yeah, very crazy. And chat, this is also a sign कि any team can lose on the day. उनकी टीम में कोई 2700 भी नहीं है यूक्रेन में भाई, 4,2600 है, and they are taking down the mighty US team. And it's just again what I said, Saj bhai, on day 1, कि मतलब US team ना, they players on the decline to some extent. Wesley So losing today, Dominguez drawing, Ridopson losing, Caruana again winning. So he alone is unable to carry the US team, and I think यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ, and even he was worse at one point. So are you saying कि you know, Caruana, you know, US की team is a lot like Norwegian team right now? क्योंकि वहाँ पे भी Magnus एकदम carry करेगा. हाँ, but they're better than Norwegian because इसमें क्या है कि their mistakes will happen once or twice in the event, but I do think they will have a similar problem. I think they will face a similar problem though. Fair enough. By the way, बाकी की games में क्या चल रहा है? By women's team, I think Divya game बची है बस, and this is the current position. Check दिया है Black ने. I think King H1 and King G2 both are winning for Divya. King F1 नहीं खेल रहा है because then there is Queen C4. And अगर Queen C4 आया तो वो हार भी सकते हैं भाई. वो हार सकते हैं. वो हार सकते हैं. King हैं. F1, Queen C4 would be a queen trade, and that's how you lose a winning game. So हम attack कर रहे हैं. There is no way she plays Queen C4. I think she will go King G2 or King C1. Yeah, King H1. Yeah. Full faith. By the way, 20 minutes for Divya, 9 minutes for her opponent. Yeah. India total points. Chat, India is doing really well. 6 point total maximum होते थे, 6 point India के थे, and आज भी जीतने के बाद उनके 8 हो जाएंगे. And so far, I'll tell you how many teams had perfect number of points. I think it was 16 teams after 3 rounds. I'll confirm this. Yes, 16 teams के पूरे 3 में से 3 wins थी. And of course, वो कम से कम 8 तो हो ही जाएंगे. So India was ranked number 1 after 3 rounds. And of course, इस crushing victory के बाद वो change तो नहीं होगा.
भाई 2500 लाइक हुए नहीं, समोसे कहां से भाई, लाइक भी तो बनने चाहिए. China points are also like not full points, but today I think they have 3 draws and they're fighting in the last round. They're better, but might just win there. Is this a boost for Gukesh that he's doing well and Ding is doing? Of course it is. Why he's crushing right now. Ding is having a few. Ding ने कोई weakness नहीं दिखाई. So far it's not that impactful. But if Ding loses a game or two, या India China का हो जाए, then कुछ भी possible है. That's true. That's true. मतलब इंडिया को वो यूक्रेन के साथ मतलब थोड़ा केयरफुल रहना होगा यार. Like that team is quite dangerous. I think the moral of the story is कि हर साल एक या दो टीमें बहुत खतरनाक खेलने वाली हैं जो अंडर एस्टिमेट कर रहा है हर कोई. Last time it was Uzbekistan and Armenia. This time it might be Ukraine or some other team. Ukraine, by the way, has won a medal. मेरे को याद नहीं कौन साल था, but they actually won like I think gold one year. मेरे को याद नहीं है. वो ट्रॉम्सो वाला ही था ना शायद, जहाँ पे they won gold. I might be wrong here, but they won gold I think in one Olympiad or something like that. So they are very strong team. 2014 में हमारा 2012 में आया था मेडल सबसे पहले. नहीं 14 में आया था, 14 में आया था हमारा. 14 जहाँ हमें ब्रॉन्ज मिला था वहां पे चाइना जीती थी. आई रिमेम्बर दैट. तो फिर 16 या कुछ होगा. आई थिंक आई रिमेम्बर कि एक ओलंपियाड में दे हैड गोल्ड और समथिंग. दे प्लेड फैबुलसली वेल. तो एंड दे फिनिश्ड अहेड ऑफ रशिया एंड यूएस. सो दे कैन पुल इट ऑफ एंड तो लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि कोई भी टीम अब से अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. मान के चलो दे कैन बीट यू. True. Absolutely right. And chat, yes, knight d7 is a threat, but right to play में check लगी हुई है. तो पहले किंग को साइड स्टेप करना पड़ेगा and then we threaten knight d7 check. Wesley drawing. Wow, really? That would be a actually huge that is unbelievable to me. Why are the pieces not moving here? I don't see it. I still see it in this position. No, he's not drawing, chat. I think he has found a good move. That is rook to e5. And now white has only one winning move, chat. Diva, do check कि by chance Wesley camera में मिलता है by chance कभी. Is this rook f7? Rook f7 ही move है ना? Yes, rook f7 is the only move and it's winning by force. But it's the most obvious one. So I don't see him missing that. Yeah, I mean हो सकता है maybe there are some drawing chances. Rook knight versus rook अगर ये आ गई without let's explain to the chat as well. अगर white का h4 का pawn ना होता ना, तो this is a theoretical draw. तो black has to do everything he can to take away that pawn. कि वो एक बार वो मर गया तो ये position theoretically हम बचा लेंगे. पर लेकिन giving up that pawn, I don't think Ivanchuk is going to allow it. Yeah. चक्कर ये कि चैट रुक f7 के बाद रुक h8 मेट का थ्रेट है. सो ब्लैक को इनफैक्ट रुक टेक्स f3 मारना पड़ेगा. दैट इज द ओनली मूव टू सेव द मेट. एंड उसके बाद बेसिकली यू आर प्लेइंग 2 रुक्स अगेंस्ट 1 रुक एंड एनी होप यू माइट हैव हैड कि भाई ये पॉन क्वीन करेंगे, वो एक्स्ट्रा पॉन की वजह से गो डाउन टू 0. So and it is g5 played, but I think there would be a mating net somewhere here. I just think it's not going to be pawn takes, right? Because rook can take. Yes, pawn takes तो नहीं मारेंगे. Rook h8, rook g8. एक second, कोई mate है यहाँ पे. Oh, it is. There is a mating net. मत बताओ. हाँ. Chat, white to play and win. Oh, what's the दिख गए. Only move. अरे भाई h pawn की मूव बता दोगे तो भाई एक ही मूव है यार. नहीं, but लेकिन 2 moves है ना. एक मूव खराब है, दूसरी मूव अच्छी है. Is the last move rook f6? Chat, white to play. What is the winning way for white? Winning way? What's the white to play and mate in 3 or take the rook? Mate in 3 or take the rook? Yeah. Let's go, chat. And yes, chat, it is h5. You do not take because मारने के बाद rook takes g5 comes with check, and in fact black is the only one who will win this. h5 and threat वही है rook h8 का. And if you take, हमने कल एक ऐसा ही पैटर्न देखा था साहज भाई, याद है? हमने देखा था rook to f4 followed up by h4 mate. And this is kind of similar. Rook f6 cutting the king, rook h5 mate and no defense. You have to give up the rook for the knight. And of course, I mean, this is just an elementary win at that level. I think Wesley will resign. So h5 खेलते ही, I think it's resigns for Wesley So, and the US team is going down. Do you think, Sahil bhai, do you think Ivanchuk is looking at the ceiling right now? Do you think? He must be. No, he must be calculating like, क्या चल रहा है यहाँ पे?
And Ivanchuk, by the way, is such a big fan of chess. Like उनको मुझे याद है World Rapid Blitz का कुछ silver medal मिलना था Magnus के बाद, and he was busy playing like Blitz chess. भूल ही गए थे award के medal के बारे में भाई. So he loves chess a lot भाई. Wow. Chat, we'll go to that board as well. I think with Gukesh board we देखेंगे. Let's just finish this. Wesley So, by the way, board number 2 for the United States. Vidit Gukesh में हम अभी गए थे. Nothing is happening there yet. So अभी के लिए Gukesh is still grinding it down. He's pushed the pawn. Vidit also grind. So वो बहुत लंबी end games है chat. So it will take some while for those game to reach the conclusion. ये वाली game एक मूव में खत्म होने वाली है. H5. Easy. Yeah. I mean, निकाल लेगा यार तो. This is very simple, I think. पर ये छोड़ो ना यार, उनका क्या कहते हैं, दिव्या का देखते हैं, विराट का देखते हैं, क्या चल रहा है? हाँ, चलो दिव्या का देखते हैं एक बार. Divya game, वो by the way, देख ही she लेगा has तो. played king g2, queen c2 check and king to g1. She's repeating once. नहीं, वो just बोल रहे कि देख मैं भी रिपीट करूंगी, and then it's like no, हाँ, fooled you. Check. Okay, let's see. Made you look. ये ना वो वाला फ्लेक्स होता है, जब आपकी विनिंग होती है ना, तो आप एक बार आप रिपीट करते हो अपने ओपोनेंट के सामने, जस्ट उनको बताने के लिए, देख भाई ड्रॉ मेरे हाथ में है. देख अभी भी मेरे हाथ में है, बट मैं लूंगा नहीं. हाँ, और वो ओपोनेंट थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है कई बार कि यार ओके अब शायद ड्रॉ मिल रहा है, तो दे माइट नॉट कैलकुलेट दैट वेल एज वेल. True. And king h1 done. Yeah, there it is. Queen f2. Well, she's threatening a lot of things, but I'm going to guess Knight queen f6 is the d7. move. Knight d7, king e8. मैं कुछ मेड ढूंढ रहा हूँ, रुक e5 क्वीन e7, बट कुछ हो नहीं रहा होता. अच्छा, रुक भी तो है, भूल ही गया था भाई. भूल ही गया था, रुक भी है. Knight h7 में भी, Knight h7. Knight h7. Oh, king अच्छा, king g7. Oh, king g7 है आपके पास. Okay, that's a good move. ठीक है, that's a good move. Okay, so she has to find some mating pattern here. Knight d7 पे king e8 आपके पास. If I just play rook c1 or something. Wait. मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ. Queen f3, queen e3 check है आपके पास rook c1 के बाद. Knight h7. King, I don't know. g7. Knight d7. King g7 King बोला e8. King g7 में तो queen f6 mate है. King e8 forced है. I don't like this knight if I have to play knight f6 check again now. Yeah, it's the only move actually. So I think यहाँ पे नहीं. Wait. There must be a mate. Queen h6 check. Queen h6 check. Oh, because if you play rook g7, then I can simply move. ये बड़ा clever चाल है. Rook g7 just rook c1 no? Yeah. You stand. क्योंकि अब आप queen f3 check दोगे ना, तो king g1 के बाद queen e3 check नहीं है आपके पास. Yeah, great point. That's the idea. Yeah, I think now this must be winning. भाई मुश्किल है ढूंढना. This is not so easy. Okay, but she has enough time, so I think she will find it. She has time, but there's only one winning sequence now, chat. It is queen h6 check. Everything else is not winning, so she has to find queen h6. The good news is India women's team has already won. So अगर draw भी होता है, तो it is okay. But if she wants to win, तो queen h6 is the only way. Yeah, I think she will find the win though. Let's go, chat. सब बढ़िया लग रहा है यार. चलो एक राज भाई, do you want to go to the open section? Because ये गेम लंबी चलने वाली है. It's not going to end soon. जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है. So let's go to the open section maybe. Nidhi bhai, first of all, by the way, h5 has happened. So we are going to see Wesley So go down. That's the first thing. Second thing, Ray Robson GB हार रहे हैं बुरी तरह. तो US टीम हारने के लिए तैयार है. इसके साथ ही हम जाएंगे इंडियन बोर्ड्स पे one by one. Let's go to the Gukesh D board क्योंकि वहां exchange हो चुका है. Let's have his camera in the center and let's have a look. So last we saw was somewhere here जहां पे I think knight e5, knight c6 खेल रहे थे वो. Rook h2, knight c4, rook h1, h4. Sahaj, he finally went for this. It does allow him knight g4, but of course you have to push the pawn at some point, no? It does allow him knight g4 check, knight e5 check वाले ideas, but like I think it was necessary. Yep. And now king f2, king e7, rook g2, मार दिया finally. Pawn takes, knight takes मार सकते हैं दोनों से. So finally a piece exchange. So ये game भी I'm not sure if he'll win this, but knowing Gukesh, he should, yeah? I mean, theoretically, maybe it's not winning, but practically, I mean, he has so many chances.
I mean, why is he thinking here though? You're not gonna play d takes c5 for sure. Yeah. There is no way white plays d takes c5. Yeah. White has to go Yeah. knight takes c5. So I think not sure why he's thinking. By the way, Wesley So has resigned. So Saj bhai, US team is 1.5 First board Caruana wins, second board Ivanchuk wins, third board draw, and fourth board Ray Robson is dead lost, and the US team is going to lose. That is insane. So India will be on board number 1 tomorrow, chat. So Niri bhai, camera angles links will change. Arey, seriously? Because that happens board every 1, time. right? Board 1 पे होंगे हम लोग, and Hungary will stay on board 2. And by the way, VD blunder लिख रहे हैं लोग chat. ऐसा क्या कर दिया भाई उसने? Why VD cannot resign? इसमें इस क्या position में blunder करना impossible है इस position में. The only thing he can do is play king g3 and lose the rook, भाई. That's the only blunder he can do. उसके बाद भी हार रहा है क्या गेम? I don't think उसके बाद भी हार रही है गेम. भाई VD हार ही नहीं सकता यार. कैसे हार सकता है भाई? It's literally impossible. Chat सामने है VD गेम भाई. सामने VD गेम है भाई. Can we add his camera भाई? पता लगे VD बेहोश नहीं हो गया भाई. क्या चल रहा है भाई? हार कैसे जाता है? अगर नींद पड़ जाएगी तो पॉसिबल है. By the way, he just played something. Do you mean Vidit or Gukesh? I just saw. I think it was Vidit's opponent, but maybe that was a cam delay that we saw. And this is perfect. We have these two boards there, and we have Gukesh separate. So Niri bhai, we can keep switching between these two scenes. ये perfect है भाई. And we can see Divya there, Queen F2 के बाद सोचते हुए. That's an important moment for her. 9 minutes remaining. So this is the moment जहाँ पे उनको पूरा end तक calculate करना है. And दूसरी side we have Vidit chat Rook D4. And I think Vidit को he just has to keep squeezing until we have time trouble for his opponent, and then he can go for some critical lines, right? That's how you would win this. Right. But I mean, there is no critical line. He just has to find a way to get the king across. King ko just maybe you have to also play g4 at the right time. But yeah, I mean, I think Vidit should have a bit more time in order to convert this comfortably. But I don't think maybe it's gonna be enough. Yep. And chat, a bit unsure. Samosa challenge नहीं किया है. I agree, Saj bhai. Let's go for Samosa challenge. So chat, आपको like करने हैं. सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा likes नहीं करने. Only 150 likes in the next 5 minutes, and हम करेंगे Samosa challenge. Let's go to 2669 likes. I don't know कुछ magical इस number के बारे में. 200 like कर दो in the next 6 minutes, and we'll do the Samosa challenge instantly, bhai. And by the way, Uzbekistan has lost apparently. So that is a huge update. Let me just check. Uzbekistan lost against who? Against Vietnam. So let's do an update. Board 1. Nodirbek has drawn against Kwangle Liem. Board 2. Nodirbek Yakubov loses to Nguyen Gok Trong Son. Huen. Sindarov loses to Tua Minle. So they have already lost 2.5, and board 4 pe draw chal raha hai. So the best they can do is win that and go. Yeah, wow, so they lost like 3-1. The defending champions lose to Vietnam 3-1. Bhai, it's so crazy, US losing to Ukraine, and then the defending champions also losing on the same day. What is going on? This is insane, man. This is insane. I can't believe it. Harikrishna is not playing today. Bhai, Prag has already finished his game. Chat, kya maze le rahe ho tum yaar? What a day of upsets, chat. And by the way, chat, 100 likes in 5 minutes and we'll do the challenge. Let's go. China का मैं अपडेट कर लेता हूँ यार. China का आई थिंक देखना चाहिए हमें क्या चल रहा है. Will they win the final round? Because उनका 3 ड्रॉ तो हो चुके थे. China has won 2.5, 1.5. Sahaj bhai, barely. भाई युयांग ही ओपी हो गया. युयांग ही आज बहुत अच्छी नींद सोएगा आज वो. He must be feeling like so good. वो तो आज का हीरो युवांगी चाइना के लिए. एंड कोई कह रहा है विद का ड्रॉ होगा. इट डजंट मैटर यार. इवन इफ बोथ Gukesh and Vidit draw, we still win the match. But the thing is, we are cruising. Like, we are kind of like dominating on every board, and maybe we won't convert both games. I would still expect Vidit and Gukesh to convert both, to be honest, Sahaj bhai. If I had to bet money, I'm betting them on winning.
Personally, I feel Gukesh has a slightly better chance क्योंकि वहाँ पे I think pieces थोड़े ज़्यादा हैं और opposite colored bishop नहीं है यहाँ पे because of the opposite colored bishop factor I feel Vidit has a less chance also but Vidit is also playing a completely risk-free position वो हार ही नहीं सकता इस position में तो there is a plus side to that as well. By the way, Rook F4 check played by Vidit and it's now black to move. यहीं पे थे I'm sorry I'm पहले I think we didn't move. कोई कह रहा है ओलंपियाड स्क्रिप्टेड भाई ये ओलंपियाड है बिग बॉस नहीं फेडे चाहती है कि उज्बेकिस्तान टीम ये गेम राउंड हार जाए ऐसे नहीं होता है भाई ये ओलंपियाड चल रहा है भाई सीरियस स्पोर्टिंग इवेंट है भाई बट व्हाट इफ अगर फिडे चाहती होती कि उज्बेकिस्तान जीते फिडे यार बहुत कम ठीक पहले वो वीजा ले आया सबके लिए वो काफी है बाद में China should have ये क्या है भाई When is Prag versus Magnus भाई that is a potential match but उसके लिए हमें देखना है कि नॉर्वे जीती कि नहीं By the way, Norway has one chat. Norway convincingly जीती है आज 3.5 से. So Norway kind of making a statement as well कि हमारी team form में है. So tomorrow we might see India Norway and now there's a much higher chance because US और ये सब टीमें निकल गई. उनका मैच किससे था? उनका मैच था अगेंस्ट कोलंबिया. कोलंबिया ओके. कोलंबिया को तो 3.5 बनता है यार. धूम टिकू क्या है भाई अर्जुन का गेम खत्म हो गया. अर्जुन का गेम खत्म हुए मतलब बहुत साल हो गया अर्जुन का गेम खत्म हुआ. उसका गेम 2 घंटे में खत्म हो गया था. He won. By the way, Norway ने half a point drop किया already. We can't play Norway tomorrow. They actually drew one game already. So that's why they won because they were on 5 points, not 6. So it's possible actually that we might play Ukraine tomorrow. Chat, I think the teams who will win are likely to be India, China. We won't play China because they are the next seed. So they are unlikely to play us. Vietnam can be one. Vietnam can be one. It can be, I think, Azerbaijan, Poland, Spain, Ukraine, Armenia, Lithuania. ये सब 6 पॉइंट पे हैं. आधी टीम हारेंगी. हंगरी से भी मैच नहीं होगा. हो सकता है actually. I don't know. They are on second board. Could be the case. Let's see how it turns out. Divya blunder really? Did she? Oh, she played knight h7 check. No, Sahaj, that's a big mistake by Divya. Now it's again equal. King g7 था ना पे हमने चेक किया था. King e8 पे. King e8 पे क्या? Sorry, King g7 खेल भी दिया. King e8 again a check by same check, so you get one more chance there. But कोई नहीं. ये मैच तो हम ऑलरेडी जीत गए राइट? हाँ. ये मैच तो ऑलरेडी ठीक है तो we can chill here. We can chill here. Okay भाई कोई नहीं होता. हाँ. Chat, I think this is okay because we are completely dead lost by. Oh, you know what he missed Sahil भाई? Queen f7 check King h6. She missed King h6. उसने रुक g7 सोचा होगा. उसने रुक g7 सोचा होगा. वहाँ पे Queen h5 रुक c1 सीधी मेट हो रही है. साथ में मेरा सवाल है कि has black seen King h6? I mean, let's show the chat also. If you play Rook G7, which seems like the most logical move here, you have Queen H5 check, King G8, and just Rook C1, and the game is over. भाई, I think हम लोग board पे नहीं है. भाई board लगाओ ना बढ़िया. नहीं, I think live board है. We have the actual current position right now. So Rook G7, Queen H5. हाँ, पर लेकिन वो नहीं वो analysis वाला board नहीं है ना भाई. हाँ. तो हम जो देख रहे हैं वो chat को नहीं दिखेगा. नहीं भाई वो दिखाओ ना यार. Right, let's go to the full board on Divya's game and we will know soon whether she's winning or will it be a draw. I think this move will decide. It's either mate in 7 or a plus 0.3. What? Because ज़्यादा ही difference नहीं है भाई move में. हाँ 0.3 और and what's the other one? Mate in 7. Like, wow. Black is literally like playing for her life in this game right now. Yeah, so there we are. Now Rook G7 here is the most logical move. तो Queen को attack कर रहे हो, आपको तो Queen Rook को भी attack कर रहे हो. Queen H5 check, King G8 and just Rook C1 wins the game क्योंकि Rook C8 mate हो रही है सीधी. Yeah. And also White हमारी जो Queen H5 पे very smartly doesn't allow Queen F3 check. वो भी दिखा दो एक बार. That was the point of this. Oh, she played Rook G7. She played Rook G7. She plundered the game. I told you, Sajve, King H6 खेलना आसान काम नहीं है. She played Rook G7. Now it's mate in 9. It's mate in 9 for Divya. She has played. Oh, she's repeating the moves once. Queen 5. Let's play Rook C1, Divya. It is completely winning. Rook C1. She should not repeat. That will be a draw. She has to find Rook C1 now. No, I don't think she will do that. Wow.
Wow, that is unbelievable actually. देखा होगा उसने दे तो यार. That is Come actually on, very Divya. sad. She'll play this. She'll play Rook C1 now. I think she'll play Rook C1. 100% she's playing Rook C1. Come on, come on. Rook Chat C1 incoming. just checking on the United States game there. उनका फोर्थ बोर्ड पे क्या हुआ? अभी भी जीत रहा है वो. कोई कह रहा था ड्रॉ हो गया, नहीं ड्रॉ नहीं हुआ है. Let's go Rook C1. Divya, come on, Rook C1. कैमरा में Rook G7 हमें अभी दिख रहा है. We'll see a couple Oh, of you checks. can see with sorry, मैं विद्या कह रहा हूँ. Divya was so relieved after seeing Rook G7. I think Divya ने देखा होगा King H6 right after. हाँ. She must have seen it. Yeah. Come on, let's go, Chad. We are going to win 3.5 in the women's section as well. Crazy. That's a convincing victory at the end. But okay, it's not over. Rook C1 खेलना है भाई. There's still one move to go. अरे Rook C1 तो दिख जाएगी यार. Come on. Yeah, it's very simple, Chad, because there is no check. If there was a मुझे couple लगता है साहिल भाई, I mean आप भी एक ये मूव 1 मिनट के, अगर आपके पास आधा मिनट भी होगा तो आप Rook C1 खेलोगे इस पोजीशन में. भाई सही भाई, like a एक भी check second. नहीं है. And she कुछ has check नहीं है played ना. it भाई. Rook C8 मेट सीधी हो रही है भाई. खत्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो साहब ने कहा, ये चेक कंट्रोल्ड है चैट, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो काउंटर प्ले एंड इट इज गेम ओवर. देयर इज अ मेट इन वन थ्रेट एंड देयर इज नो डिफेंस. इन फैक्ट इंडियन फर्स्ट प्रेफरेंस है क्वीन F1 चेक, एंड आई थिंक वी विल सी रेजिग्नेशन राइट नाउ. Wow. Bote's gambit, Queen F1 check. Yeah, but I don't think Black wants to play that. Trust me, she doesn't. So, chat, we are going to see resignation soon. And Jessie will resign karegi. We want to see Divya OP spammed in the chat like crazy with the Indian flag. चैट कहां से देख रहे हो? अरे हर जगह से भाई, तुम तो हर जगह भाई, दिल में हो भाई तुम. And she plays it on the camera as well. And chat, it's going to be over soon. Yeah, I think यहाँ पे कुछ नहीं बचा है. There is a mate in one. अगर वो उसको बचा दे तो there is a mate in. I mean, there is like a mate in. I think queen E1, queen F1 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. But if you don't sack the queen, then I think it's a mate in 3. I think max. Mate in 2 actually. Rook C8, queen G6, game खत्म. I think the only way is you move the rook somewhere, give the G7 square. I don't know, for example, rook E7, but then check. King comes to, I don't know, G7. Where Queen else? G6, Why? yeah. And then Queen G6 is mate. So it's going to be a mate in 2-3 moves. I think she will probably play rook E7 and probably play it in the end, knowing how she was winning at one point. She was a piece up. I think the tilt will carry her till to the end of the game. Look at Divya exhaling. She was like, "Bach gaye bhai." I mean, it was a topsy-turvy day, but I think 3.5 we'll take it, bhai. We'll take it. Yeah, absolutely. And Chad, I know 2550 like हो गया, मैंने 2669 कहा था. So let's get to that like number and we'll do the challenge. What's you thinking about Prag versus Magnus? I think it's going to be an epic match if it happens. I think we won't play them tomorrow because हम एक आधा point आगे होंगे उनसे. But yeah, will happen most likely. I think very, very likely to happen because Norway will, of course, win the next few games. Oh, by the way, there's one move maybe. Rook C7. Queen G6 check maybe, na? Yeah, but it's a good try, bhai. Would work against. Queen E8 check, bhai. Queen E8 check. Queen E8 check is over. Chat, आपसे सवाल पूछता हूँ. I mean, why not Rook C7, bhai? यार, Rook C7 बढ़िया चाल लग रही है. मैं तो यार, साज भाई free का Rook. What's wrong with this move? I don't know, bhai. I think it's because you can play B4, I think, or E4. क्या लग रहा है chat? Queen E1 check looks really. Queen E1 check देखे थोड़ी perpetual नहीं आ रही क्या? नहीं, I think engine खराब हो गया भाई. ये तो white के लिए completely winning लग रहा है मुझे. Completely winning, bhai. Completely winning. Yes, Arpit bhai, you are absolutely correct bhai. Queen F1 would be checkmate in 1. So you have to be careful here. Chat करिए, Gukesh blundered. How is it even possible bhai? How is that? He is not blundered, chat. मजे मत लो यार. भाई यार, हम शरीफ आदमी के मजे लेते हो यार, तुम chat ऐसे कैसे चलेगा? Maybe she plays Rook C7, ना? Queen E8 के बाद फिर वो resign कर देगी. Because you know, then you can capture the Rook with a check. And yeah, it will be over. Yeah, if you take chat, that's lost, but you can simply play Queen E8 check.
किंग को ऊपर आना पड़ेगा एंड नाउ यू ग्रैब विद द चेक. सो आई थिंक वी विल सी रुक c7, दैट्स द लास्ट ट्राई, एंड रुक c7 के बाद क्वीन e8 पे चेक पे शी विल रिजाइन. आई थिंक दैट्स हाउ द गेम विल एंड. ये कह रहा है अबे गधे टिकू, अरे ये क्या लॉजिक हुआ भाई यार. हम तो पेंगुइन मानते हैं अपने को भाई, अंटार्कटिका भाई हमारा होमलैंड है. गुकेश ब्लंडर नहीं है रे यार, मैं अभी देख के आया भाई. ये तो पोजीशन है भाई, बढ़िया लग रही है. क्या क्या ब्लंडर क्या है इसमें भाई. बोर्ड देखो भाई, बोर्ड की नजाकत देखो, क्या चक्कर है. अब विद ब्लंडर, हाँ अब विद ब्लंडर भाई. गुकेश देख लिया विद ब्लंडर भाई. तुम्हें बोर्ड से बोर्ड घुमाना है, मुझे सीधा बोल दो ना भाई. विद ब्लंडर कर ही नहीं सकता भाई. इट्स इम्पॉसिबल फॉर विद टू मेक अ ब्लंडर यार. विदित ने ब्लंडर कर दिया भाई. बिशप f3 मर रहा है. ओह नो. चैट, बिशप f3 क्या हो रहा है बिशप f3 के बाद? Why is bishop f3 bad? इट्स नॉट बैड साज भाई. फ्री का पॉन इच मिल रहा है अपन को. हाँ, I mean, it looks like white. I mean, बार को क्या हो गया? Why is the bar dancing so much? भाई बिकॉज यू नो उसने विदित की रील्स देखी है भाई तभी. प्रग ब्लंडर भाई, प्रग तो अपने कमरे में होगा अभी भाई. वो जीत के चला, ड्रॉ करके चला भी गया Also, भाई. लोग लिख रहे हैं अर्जुन इज लूज भाई. अर्जुन को खत्म हुए हुए मतलब 10 साल हो गए भाई. चार यहाँ पे रुक f6 आएगा एंड द बिशप बी लॉस्ट. तो कोई ब्लंडर नहीं है, अपने इंडियन प्लेयर्स बस जीते ही जा रहे हैं. एंड बाय द वे यूएस टीम का भी अपडेट दे दूं भाई. इट इज टर्निंग आउट टू बी अ नाइटमेयर. आई थिंक इवन a 1200 player will convert this to a victory now. So I think rare option is going down. It is over. So going back to the Divya game, oh, it's happened. By the way, exactly that happened. So she played rook c1, rook c7 on the board, queen e8 check, king g7, rook takes e7, and her opponent has resigned. Let's see it on the board. I think we're going to see it in the next 30 seconds. All happen. Let's see. अगर चैट आपको मेरा सीक्रेट जानना है तो मैं बता सकता हूँ कि वो कब खेलेगी. I can let you know that. ठीक है, I can let you know कि वो आप कब शायद नहीं खेलेगी. बता पाओगे साज भाई. बोलो क्या टाइम है. अभी वाला थोड़ा मुश्किल है. उसके पहले वाला नेक्स्ट वाला बता सकता हूँ मैं. नेक्स्ट वाला बता सकता हूँ. देखो नेक्स्ट मूव वो चलेगी. देखो बताता हूँ. रुक c7 ऐसे नहीं हो तो रिजाइन ही कर देगी ना सीधा. अच्छा, she'll play king g7 and like in 7:15 पे खेलेगी वो. 7:15 पे देखना चैट. 7:15 पे खेलेगा. 7:16 there. So साज भाई परफेक्ट प्रेडिक्शन करता हूँ. आप वो ज्योतिष हो जो 2 दिन बाद का फ्यूचर बताता है, 1 दिन बाद का मुश्किल है. एग्जैक्टली हम एकदम पूरा फ्यूचर में देखते हैं सब कुछ. हाँ दूरदृष्टि से. एंड दैट इज इट. दिव्या देशमुख विद एन एपिक कमबैक. मैंने क्या कहा था चैट, दिव्या ओपन द चैट स्पैम होना चाहिए विद द इंडियन फ्लैग. शी इज लाफिंग, शी नोज हाउ शी सर्वाइव्ड दैट गेम. ग्रेट गेम एट द एंड. एंड ऑफ कोर्स लाइक I think she needed a bit of luck to go her way, but that's how pressure works. That low-rated players sometimes struggle to finish off the game, and वो pressure डालती रही. वो 9d2 का maneuver was a great find in like 30 seconds. So great game by Divya. We have won 3.5 in the women's section, and now it's time to head to the open section. Niri bhai, let's go. It's time to rush. I think US team तो हार ही चुकी है. तो एक बार हम इंडियन टीम को जीतते हुए देखते हैं. आज का दिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई. लेकिन गुकेश हैज नॉट वन येट. एंड साज भाई, गुकेश विडी दोनों की गेम्स आर मूविंग क्वाइट स्लोली, बट अब टाइम प्रेशर फेस आ चुका है. 3 मिनट है गुकेश के पास, 9 है अलेक्जेंडर के पास. क्या लग रहा है क्या होगा. निधि भाई बोर्ड थोड़ा लगा देना सेंटर में बस. बढ़िया भाई, परफेक्ट. बोलते लग गया अपने आप. एंड गुकेश इज नाउ थिंकिंग. साज भाई क्या लग रहा है, विल वी विन दिस और नॉट. यार जब भी गुकेश का टाइम प्रेशर आता है ना तो आई वरी अ लिटिल. एंड अब 3 मिनट है, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं है इसके बाद. दिस इज इट, दिस इज ऑल ही हैज. तो it's getting a bit tricky. I think Predke has really nicely held this position for such a long time. I am not sure. I'm not sure how he will hold it for longer. If I just play rook c1, rook e1, rook c1, rook e1, like आप improve कैसे कर रहे हो इस position में? That's my question number one. And I think वो सोचते Gukesh has, I just really don't like him being so less on time. I just don't like that. I agree. White ने क्योंकि candidates में हमने देखा था, कि there were some issues like that. So I'm just worried about that. याप आई थिंक चक्कर है कि उन्होंने एक वीकनेस पकड़ लिया. जब भी आप इन नाइट को ट्रेड करने की कोशिश करते हो, इफ यू डू दैट,
तो e6 pawn might be hanging, तो white is keeping everything safe, kings थोड़ा सा कोने में tucked in, and ये queen side तो काफी solid है, difficult to get in via this path. I do think कि knight को यहाँ हटाना is essential. Until then I don't see Gukesh somehow winning, but maybe he has a plan. Let's figure it out, because you can't go g4, you can't go h3, so थोड़ा सा भी कोई tight down ब्रेक है. थ्रू नहीं है ना मेरे हाथ में, मेरे हाथ में कोई ब्रेक थ्रू नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम अ बिट वरीड अबाउट दिस. Glad to know Zoyan Malik chess खेल रहा है. And chat 2669 likes आपने कर दिए हैं, तो समोसा चैलेंज इनकमिंग इन द नेक्स्ट 2 minutes. तो भाई चैट तैयार है ना? गूगल से खोलना है, खोल लो, सवाल आने वाला है इन द नेक्स्ट 2 minutes. कमेंट्री कौन कर रहा है? कमेंट्री 2 लोग कर रहे हैं, हमारी शक्लें दिखते, बट द कमेंट्री इज बीइंग डन बाय जीएम साहिल टिकू एंड एनएम सहाज ग्रोवर भाई. बिल्कुल बिल्कुल, इन दैट ऑर्डर. The titles may appear flipped than usual भाई. कई बार मिरर में रखता है, ऐसा कई बार होता है. तो समोसे अब आएंगे भाई. कैन आई आल्सो पार्टेक? हाँ भाई, डन. अगर लेना पार्ट तो कर सकते हो, बट लेकिन यू विल नो इट फर्स्ट, राइट? बिकॉज इट विल बी, you will know it 5 seconds prior. So I think that would be unfair. So chat will only be a part of this. Oh, that's unfair यार, that's unfair. मैं 5 सेकंड बाद भी रिप्लाई कर सकता हूँ. नहीं नहीं भाई, मैं आराम से सोचूंगा. I might Google something, but it will be unrelated to your question. अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस नाइस नाइस. छोले भटूरे ब्लेंडर नहीं करता लोग भाई, वो पेट में जीएम आता सहज ब्लेंडर क्यों लिख रहे हैं भाई? इतने सारे GM लोग सहज भाई ब्लेंडर क्यों लिख रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. मैं खेल भी नहीं रहा हूँ. और यहाँ oh by the way, rook b1, is he planning to play b3? I don't think he should do that, right? फालतू में वीकनेस क्रिएट करना है a3 पे. नाइट f6. ओके, स्लोली स्लोली भाई. 3 मिनट बचे हैं गुकेश के पास. हम थोड़ी सी टेंशन हो रही है. विदित का गेम तो चल रहा है ना, वो कभी कुछ वहां पे कुछ उल्टा हो नहीं सकता. वो पुश करता रहेगा, मेरा अपोनेंट सफर करता रहेगा. वी नो दैट. गुकेश के बोर्ड पे आई एम अ बिट मोर वरीड नाउ. Chat, just to point out for a second, Vidit की ये position है, opposite color है. I think this will go on for a long. Oh, he's apparently just winning. What happened? Oh, rook e1 was a huge blunder. After f4, he's just winning. f4, f5. Oh, rook h7 check incoming. ठीक है, easy. Chat, Vidit is now winning. So Sahaj, where do you want to go? I would say let's go to Vidit now, because I think we might see this finish first. Yeah, let's stay here. I mean, Gukesh का गेम थोड़ा bit tense, ज़्यादा tense लग रहा है. I mean, you know, this game feels like it might end a bit faster. हाँ हाँ हाँ. And beautiful conversion. This is वही होता है भाई, टाइम प्रेशर में खेलना बहुत मुश्किल. AB de Villiers blundered भाई. रिटायर्ड प्लेयर्स कहाँ से वापस आ गए. 2.5 हो गए. बिल्कुल समझ आने वाला है कभी भी चैट में. You know, also I just want to inform someone inform the chat at this very moment Rakesh bhai is taking his flight to be here. Rakesh bhai is going to be here in about 3 hours or so. So he might be in at the airport, you know. He might be watching us right now, Rakesh bhai. Nice. Come on, do you think he plays f4? I think he does. I think f4 looks very logical. Makes hanging भी है ना pawn, so I mean you have to take care of it. I know right now we have check to cover it up, but at some point you have to do something about it. I think he might just go for it. Come on. Yeah, we're still thinking. Rook d1. We're in deep thought. I mean, f4 तो यार, I mean, I think he will play very, very easily. You know, f4 जैसी चाल ना, I mean, it's not easy to make because, you know, opposite color bishop में you are taught कि जो भी आपके bishop का color है, उसके opposite color पे अपने pawns को रखने चाहिए ताकि आप ज़्यादा board को cover कर सको. तो f4 is like, it feels a bit unnatural. You can also play, for example, rook f6 check and king takes h5, right, Sahil bhai? I think he is debating कि भाई rook f6 check देके just pawn मार दे सीधा, या फिर हम f4 f5 खेल के यू नो एक्टिविटी के लिए जाएं. यप एंड चैट तैयार हो चैलेंज के लिए? चैलेंज है, ठीक है. माय एक्स ब्लेंडेड, ये क्या चल रहा है भाई? आपकी एक्स भी है बहुत बता था. हाँ, एनीवेज, सो द क्वेश्चन इज
जो पहला बंदा आंसर करेगा ही विंस समोसास फ्रॉम मी पर्सनली भाई, ठीक है? सो क्वेश्चन ये है कि मुकेश, अनी अरे भाई गुकेश क्या है भाई? आई जस्ट गेव द अनीश आंसर, जैसे चैट अनीश बोलती है ना गुकेश। नहीं नहीं नहीं, अनीश गिरी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो बॉलीवुड मूवीज देखते हैं। उन्होंने कहा था मुझे हिंदी मूवीज पसंद है, और मतलब मेरे को बहुत एंटरटेनिंग लगती हैं। और उनको मूवीज का उन्होंने एक नाम दिया था, जो उनको एक मूवी का नाम, एक बॉलीवुड मूवी उन्होंने कहा था मुझे बहुत पसंद है। वो मूवी का नाम क्या है भाई? दिल वाले हिंट ये दुल्हनिया रहे, ले जाएंगे। नहीं भाई इतने रोमांटिक मूवी नहीं है। हिंट ये है कि उसका रीमेक बन चुका है और रीमेक का नाम उन्होंने लिया था समथिंग टू। ओ, आशिकी 2। अरे बाप रे, आशिकी टू, लॉल्स। आशिकी 2 है क्या? ओ माय गॉड, आपको तो समझे देने चाहिए भाई इतने घटिया आंसर के लिए भाई। आई डोंट नो। फुकरे 2। और कौन सी है? ओके और साज कौन भाई सी मूवी? एक पिज्जा अपनी तरफ से दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सच डिजास्टर्स आंसर्स। ओके, हाउ इज फुकरे दिस वाज अ आंसर? गुड मूवी। फुकरे वाज अ गुड मूवी, जस्ट सो यू नो। इट वाज अ नो, ग्रेट मूवी, आई लव्ड इट। नहीं मूवी की बात नहीं है भाई, उसने फुकरे कहाँ देखी होगी भाई? जस्ट थिंक अबाउट, अनीश गिरी है भाई। देख सकता है ना भाई, ही मस्ट, आई मीन इफ ही हैज गुड फ्रेंड्स लाइक मी, ही वुड शो हिम फुकरे रिटर्न्स। इट वाज अ ग्रेट मूवी। धूम धूम 2। Yes, Doom 2 is the correct answer and the first person to answer Doom नहीं, Doom 2 बोलना पड़ेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए। Let me quickly check, मैं ऊपर से स्क्रॉल कर रहा हूँ। Who was the first? Firearm ने धूम लिखा है, of course he's Doom 2 लिखना है। यथर्थ शर्मा, बाप रे, the legendary Yatharth Sharma is the first one to write Doom 2 and that is the correct answer. यथर्थ भाई प्लीज डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपको समोसा भिजवाता हूँ। तो वेल डन यथर्थ भाई, यू हैव वन द समोसा चैलेंज फॉर टुनाइट भाई। भाई यथर्थ भाई लेजेंड है भाई, कभी हार नहीं मानते। तो यू नो यथर्थ भाई, आई शुड जस्ट टेल यू कि आप इतने लकी हो, क्योंकि आपको मतलब समोसे भिजवा भी रहे हैं मुझे। मतलब तो 6 महीने हो गए और मुझे अभी तक मैगीज नहीं मिली है मेरी। यू आर सो भाई लकी कि आपको भाई तो वो मिल अपने भी रहा है। भाई आप इतने घटिया आंसर देते हो ना भाई, तो आपको नहीं मिलता भाई। भाई, भाई आई फुकरे स्टिल फुक आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। फुकरे रिटर्न्स इज अ गुड मूवी। भाई कम ऑन यार, मतलब अनीश गिरी ने फुकरे कहाँ से देखी होगी यार? देख, हो सकता है यार, हो सकता है। मे बी ही नोज हु भोले पंजाबन इज, यू नो। ओ, F4, लेट्स गो। By the way, F4 has been played by Vidit, so we are looking towards a victory. He has only 1 minute on the clock, chat. So yes, by DM me on Instagram. Chess assist मेरा आईडी है, chess assist आईडी है मेरा, वहां पे डीएम कर दो मुझे and I will send you the samosas and chat। अगला समोसा चैलेंज हम करेंगे आज, एक और कर सकते हैं अगर हम कुछ क्रेजी 3500 लाइक्स होंगे तो तब कर सकते हैं एक और, वरना उससे कम पे नहीं होगा भाई, ठीक है? वो तुम्हारे हाथ में अब चैट, लेट्स गो। एंड फिलहाल के लिए भाई अद्विक भाई आपकी मेंबरशिप ऐड हो चुकी है, चेक कर लेना। एंड फिलहाल के लिए भाई F4 हैज बीन प्लेड, लेट्स गो। 3 minutes फॉर हिज ओपोनेंट। F4 by the best move in the position. F5 King G5 incoming. Yep, And yep, I King think G5 this incoming। is close to being winning. By the way, Vidit played that with 50 seconds on his clock. So Yep, already yep, time pressure दोनों को बढ़ गया है. But I think उसके opponent को position का भी काफी pressure है. I mean, I believe he's theoretically lost here already. yep, Even with yep। best play, this should be lost. Check and king moves to G5 भाई, so this is the black king is all alone, बेचारा अकेला तन्हा F7 पे बैठा हुआ है। Insert sad song here, Bollywood with some rain in front of a window, let's go। What if I play Rook G1 यहाँ पे? I think Rook G1, probably one of these checks, not sure which one though। H7 ही होगी ना फिर तो. Has to be H7. Oh yeah, Rook H7, Rook G7, and then you go King H6. ओके, एज ही थिंक्स, मैं एक नजर सिर्फ ऐसे वो ना बोर्ड फ्लिप करके एक बार कुकी की गेम पे जाने वाला हूँ, जस्ट टू चेक कि वहां पे क्या सिचुएशन हुई। एंड वहां पे चैट अभी भी इट्स काइंड ऑफ वाइट इज होल्डिंग, barely holding for now, so Gukesh trying to play around, wait for the right moment। You've seen him crumble in time pressure, so hoping कि वो ऐसा ना हो कुछ। 400 से कुछ तो True, true, इम्प्रूव, true. 400 से तुम फूक भी मारोगे तो इम्प्रूव हो जाओगे भाई। आसान है भाई, डोंट वरी। क्या 400 से? अद्विक भाई कल मेंबरशिप जीते ना, ही वन द मेंबरशिप यस्टरडे, सो ही वाज सेइंग कि बढ़िया भाई, चलो 400 तो कम से कम से ऊपर जाऊंगा मैं।
No, chat could not reach the number of likes, Anisha. We did the samosa challenge instead, just now. I think he Samosa will quiz play is... Rook J1. I think he will play Rook J1. Yeah, yeah. I think he had maybe Rook H3, maybe just to keep this pawn defended. Like one of Rook बात H3 तो is एक also ही है ना tying the भाई. rook down. Yeah. हाँ भाई बात तो एक ही है ना यार. Hmm. Come on. Let's go. Let's finish him off with it. Let's go. By the way, look at 1.5 minutes each. This is turning out to be an intense battle. Wait till the end. Come on. Also, bhai, Gukesh is on 20 seconds, by the way. That's 20 crazy. seconds. I just That's want crazy. to mention that again. 20 second pade. Bhai, maybe it's time to set up a scene with Vidit and Gukesh, if that's possible. If you can have both boards and cameras, that would be very, very helpful. So set up kar lo bhai, because we might be here for a few minutes at least. क्या भाई गुकेश क्या चल रहा है भाई? ये तो टिक्कू का भाई जो चैट में पहले से वो जानते हैं तो भाई को. And by the way, Rook H3 played, so he tries to attack the pawn, and now White has to make a choice. क्या वो pawn defend करेंगे? क्या वो pawn मार लेंगे? I don't think he'll take the pawn because check के बाद it might be close to a draw. Will he give this check, move the king back to g8, then give this check? Exactly. And then king h6 by next. By the way, mods कह रहे हैं कि भाई slow mode on कर दो. Should we do it? अरे चलने दो ना भाई. स्लो लाइफ में कुछ स्लो. चैट ऐसा कभी हुआ है चैट किसी ने कहा हो यार ये चीज स्लो कर दो बेटर हो जाएगा? I really can't think of I a think single that's because example. बहुत सारे just to avoid spams and stuff. I think that's अच्छा the स्पैम के लिए करो क्या? चैट स्पैम मत करो भाई. चैट मेरी बात सुनेंगे. देखो चैट मेरी बात सुनेंगे अभी. They will not spam now. हाँ clearly I can see that. अभी मैं देख रहा हूँ अभी चैट में पढ़ रहा हूँ कैसे है USA lost क्या? USA lost क्या? must be. मेरा लैपटॉप स्क्रीन था धीरे क्यों चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है. आई थिंक उसको विश्वास नहीं हो रहा है भाई. And chat, United States of America has gone down to Ukraine 2.5. That is crazy, bhai. Crazy. I can't believe it, bhai. That is indeed. हो गया official है. Yeah, they have lost. They have absolutely lost. भाई ये क्या मूव है भाई? King E8. Okay. Okay. हम पॉन सैक कर रहे हैं कि आर वी सेविंग इट? क्या सही स्ट्रेटजी है? दोनों ही विनिंग लग रही हैं. By the way, 5 सेकंड पे खेली उसने वो चाल. बाप रे. Oh, he's already made a decision, by the way. No, he's thinking. इससे क्या? The camera delay. मुझे लगा गेम डिले. क्या बोल रहा हूँ मैं अभी? Oh, he saves the pawn. He doesn't want to take the risk. Chat. चक्कर ये है कि maybe that is also winning, but he doesn't want to calculate it with 2 minutes on the clock. I think that's a very practical decision. Rook h1, bishop f2, and then if rook h2, then you maybe play bishop c5. You at least bring the bishop to a better square. It's controlling the f8 square now. So, you at least improve your position while black tries to win this pawn. Right. Which teams have the ability to team India? I think anyone now. Just keep in mind, chat, Ukraine ने US को हराया है. Italy ने कल Netherlands को हराया है. Uzbekistan lost today. So it's anything can happen. China barely won. Yep. And guys, जो Gukesh lost लिख रहे हैं chat में, please don't spam. Gukesh का game अभी भी चल रहा है. I think he's in a really good position, but he's playing in time pressure. एक बंदा है उसका यूजर नेम मुझे नहीं पता है. वो कह रहा है बैड कमेंट. भाई जब तुम्हें पता नहीं है तो काहे बोल रहे हो? Sorry भाई. Couldn't resist. Anyways, by the way, bishop b4. Now you can see the f8 square is controlled, chat. So जब भी ये pawn push होगा, everything will happen. We'll check now. Oh, this is a nice scene, bhai. This is a really nice scene. f4. अभी तक officially हम लोग जीते नहीं है, by the way, in the open section at least. Yeah. Officially, we haven't won. By the way, Niribhai, perfect. Two cameras, 2 boards. Now we don't need to change a thing. And f4 played by White in the Gukesh board. Sahaj. Yeah. So, that's what I was saying just now. Gf4, I think king f3 is the point.
गुकेश के पास 12 सेकंड है चैट, 12 सेकंड है गुकेश के पास, 7 सेकंड। नहीं भाई मेरे कान मेरे कान। Why is he not playing? Did he just lose on time? What happened there? I really don't know. Why H3 is winning for Gukesh? H3 is apparently winning. But he didn't play. Can we get a full screen on the thing? Can we get a full screen on Gukesh's board? He played. This is an update. It's coming. वो कैमरा टिल्ट हो गया वीडी का, कैमरा ही टिल्ट हो गया वीडी का। आई थिंक ओपोनेंट का हाथ लग गया भाई, सो कैमरा हैज टिल्टेड। भाई कैमरा टिल्ट करने से गेम टिल्ट हो जाती तो ओके देयर वी गो। टाइम बहुत है, टाइम 1 मिनट पड़ा है उसके पास, 1 मिनट पड़ा है। दैट्स गुड। आज यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, किंग F3 वाज द आइडिया, वहां पे H3 चेक इंटरपोज तभी करना था, डिस्ट्रैक्ट द किंग, बट नाउ it's apparently equal if white does take the pawn, which he absolutely will. Maybe Gukesh, this could go either way. I don't know if it's winning anymore. Is it not? Oh, 0.4 दिखा रहा है. Oh, okay. Maybe he's actually managed to save it. Divya, let's go back to two camera scene again. I think we should look at both साथ में. Thank you. Sorry, मेरे तो कैमरा बड़ा funny लग रहा है देख के. हाँ, वो actually का हाथ लग गया, उसके opponent का हाथ लग गया. He looked at the cam for a second. So ऐसा लग रहा है कि he's trying to tilt the board and hoping कि वो कैमरा से board में tilt हो जाए भाई. By the way, Hungary A team is also won the match 2.5. I think 1.5 से जीतेगी वो, because Peter Leko is losing. So Italy say they will defeat 2.5, 1.5. So Hungary maintains their full perfect score, and we still don't know whether we are winning the match for sure. Vidit को convert करना है, that will secure the victory for us. And उन्होंने खेला है Rook to H2 उनके opponent ने. I think it's time to play Bishop C5 and secure the win. Let's go. Come on. Oh, knight f4 already taken. यार white जो right side, ये क्या हुआ? Oh, blunder was knight f4 a mistake? Knight f4 was a mistake. Why? Oh, that was E5 is winning on the spot. Apparently, chat Rook se marna tha, Knight se was a blunder. Gukesh is now winning with the move E5, but can he play it in 28 seconds? This can be one of your videos, you know, chess की game जीते सिर्फ 4 चाल में, because E5 is that move, yeah. Oh, he misses it. अरे यार, अब तो नहीं बन रहा video. अरे यार. It's still better, but it's not winning anymore. But Saj, I mean, we're expecting like engine level play in 30 seconds. It's impossible. Of course. राकेश भाई फ्लाइट से टेक्स्ट कर रहे हैं, अरे बढ़िया. Please reverse the boards. अरे reverse नहीं भाई, सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया. I think it's okay. Come on. Saj, final prediction. Chat, final prediction. In 2 points में से कितने point मार रहे हैं हम? Is it going to be 2? 2-0 भाई, 1.5? 2-0. 1.5, 0. What's your answer? 2-0 भाई, 2-0. Chat क्या लग रहा है chat? Final answer. I think we are 5 minutes away from knowing both results. Rakesh bhai कह रहा हूँ. Sajay, what do you think? Yeah, 5 minute I think is more or less correct, because दोनों sides एकदम time pressure में. Predke के पास ही बस बहुत time है, बाकी सब एकदम seconds में खेल रहे हैं. तो 2-0 लेकिन मुझे logical लग रहा है. बहुत time है भाई, 2 मिनट बेचारे के पास. And by the way, chat, Rook E3. Vidit ने Rook रख दिया है E3 पे. He will play it now. And that's a great maneuver because कोई counter play नहीं है black के पास. Very, very professional play. And now he can focus on pushing the F pawn and also capturing the H5 pawn. So this is great play by Vidit there. Chat भी कह रही है 1-1. Clinical भाई, clinical. I think when it comes to like strategy, you know, I think Vidit is definitely, I think only person I would put above Vidit is Magnus. I think उस Magnus के बाद I think positional understanding में there is nobody who's better than him. There is no one, I think. Thank you, Magnesh bhai. Let's go, chat.
इंडिया ओपी स्पैम कर दो भाई जल्दी से, आई नीड इट भाई, वी इंडियन प्लेयर्स नीड इट, बिकॉज ये 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है. वी आर काइंड ऑफ विनिंग ऑन वन बोर्ड, वी आर बेटर ऑन वन बोर्ड. इफ लक गोज आवर वे वी आर गोइंग टू गेट 2 more points, एंड वुमेन सेक्शन के साथ साथ ओपन सेक्शन भी 3.5 हाफ जीत सकता है. दैट्स अ ग्रेट स्टॉम्पिंग विक्ट्री. जब यूएस हार गया, उज्बेकिस्तान हार गया, चाइना 2.5 से बेरली जीता है, वी आर प्रूविंग अर अथॉरिटी की भाई वी आर द बिग डैडी हियर. भाई लेट्स गो भाई, कर दो भाई, खत्म कर दो. अगर आप चाहते हो और चैट चाहती है तो ईयर गैम्बिट कर सकते हैं अभी. सहज भाई यूजली हम वो हारी हुई पोजीशन में करते हैं यार. आई थिंक इट्स आवर यही सेविंग ये ग्रेस इन ड्रॉ द हो लॉस. सकती है, गुकेश की गेम पे ड्रॉ हो सकती है भाई, ड्रॉ हो सकती है. एंड हमने कभी गुकेश के किया लिए है. ही करते हैं, गुकेश के लिए ही तो करते थे भाई हमेशा. चलो भाई फिर कर सकते हैं. कर दो यार, हिला दो भाई फिर. क्या हंस क्यों रहे हो भाई? ओके भाई, लेट्स डू इट भाई. कैमरा तो भाई लगा दो यार, भाई शक्ल तो कैमरा दिखा दो यार रुको, हमारी. मेरी शक्ल लगानी पड़ेगी भाई, जब तक मेरी शक्ल नहीं आएगी तो आप कैसे हिलाओगे? के चैट ईयर गैम्बिट इनकमिंग. रुको यार, मेरी शक्ल के बिना आपको हिलाने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ. चलो भाई, चलो भाई, मूव इट. भाई अभी तो दिख नहीं रहा ना यार. निधि भाई बीआर भी है भाई, निधि भाई बीआर भी है. ओ नीरी भाई नहीं है भाई, बट चैट रुके रहो. इन जैसे ही नीरी में वापस आते हैं, विल चेंज द सीन एंड देन ईयर गैम्बिट इज इन देयर. नीरी भाई के बिना नहीं हो सकती यार ईयर गैम्बिट. वाह, निधि भाई के बिना आप नहीं कर यो सकते यार. चैट एकदम क्या, एकदम जोश में आ गई देखते ही सुनते ही. द रिटर्न ऑफ द ईयर गैम्बिट. बाय द वे चैट, आई थिंक अब H5 पॉन मार लिया है, यहाँ 1 पॉन 2 पॉन कंट्रोल कर रहा है. दिस इज कंप्लीटली विनिंग फॉर विदित गुजराती नाउ. किंग D6 से कुछ चेंज नहीं होगा. ऑफ कोर्स गुकेश का मैच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, वी स्टिल होपिंग he can somehow convert that. We still need to see the move E5. Saj, E5. Oh, B4 is also winning. Apparently B4 is also बी winning. फोर क्या कुछ भी खेलोगे क्या? व्हाट इज बी फोर? I don't know ये भाई. तो मतलब कुछ भी खेलना है. व्हाट इज बी फोर? ये तो आइडिया पता है क्या ये साज, क्या? बताऊं बताऊं आइडिया बताऊं. क्या क्या? B4, 8x B4, ठीक है. एंड देन ई फाइव. You bring the king to B5, and then at some point either A3 or knight takes B2. भाई उस टाइम पे व्हाइट ताली थोड़ी बजाएगा यार. व्हाट इज भाई, भाई क्या भाई ये नहीं चाल है होगा. भाई, क्या ये चाल है? ये वाह ये वाह ये वाह. ये इंजन ये इंजन का है भाई, ये इंजन का है भाई. इंजन कह रहा है, ये इंजन कह रहा हाँ है. ये इंजन मैं कह रहा है फिर भाई. भी नहीं मान रहा इस बात को भाई. इंजन इट कह रहा फील्स है. लाइक. भाई एक बार इनको बता दो, चैट को समझा दो मेरे. ये कह रहे बी फोर ए बी फोर किंग सी सिक्स किंग बी फाइव. उस टाइम पे भाई हम बैठेंगे थोड़ी ना ऐसे. बट ई फाइव लुक्स भाई मच बेटर. इंजन ई कह फाइव रहा है लुक्स तुमने ताली बजानी है, तुमने क्या बजाना है तुम बजाओ. मैं जीत जाऊंगा भाई ब्लैक से. मच. इंजन कह रहा है फिर तो मान लेंगे भाई, इंजन की बात तो मान लेंगे. By the way, E5 is the second best move. I think that's the human move there. Maroge 95 attacks the rook. Makes a lot of sense. I think D5 pawn could be a weakness because now knight is attacking it. But I think check ये rook के attack से आ रहा है. So that gives us a very very important tempo. And black के rook भी बहुत check दे रहे हैं यहाँ पे. Rook G1, Rook G6 बहुत चीजें possible है यहाँ पे. Yep, true. Oh Sahaj, Rook G5 only move for white or he's busted. True, bhai, because if you go rook g8, then there is rook g1 or rook f4 is also hanging. Now, bhai, rook g5 is important because if you move the rook anywhere else, then the f4 knight is hanging. एंड 4,000 लोग देख रहे हैं. आपके लिए फाइनल समोसा चैलेंज, मैं एक चैलेंज देता हूं. अगर हमारे 3,3669 लाइक्स हो गए इन द नेक्स्ट 6 मिनट्स, बोलते ना 8:30 12 बजे 11 बजे तक 3669 लाइक्स हो गए, तो एक बंदे को गर्मा गर्म समोसे और मेरी तरफ से वो लाइक बटन दबा दो जल्दी से. लेट्स गो चैट, डू नॉट मिस द समोसा चैलेंज. जल्दी से भाई, लेट्स गो. आपके मुंह में गरम गरम समोसे जाएंगे भाई. इमेजिन भाई, चटनी के साथ. क्रेजी. check. Okay, now knight g2 apparently is the only move. Sahaj, rook g2 looks so tempting as white, but he has to play knight g2 and self pin his knight. I think if he doesn't do it, then you lose the f4 knight, no? Yeah, I thought rook g2 takes and then knight takes, but apparently rook f3 is very strong. Okay. Got it. But he finds it. He finds knight g2. So white fighting for his life here. Ooh, knight hanging now. Knight को move करना पड़ेगा. Maybe knight c4. वापस pressure on c4. भाई डाइट पे हूं, जो डाइट पे नहीं है वो कर ले भाई फिर.
Let's go मेरे को chat. Let's go. किसी ने मेरे को जस्ट अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया. आई थिंक इट क्या? वाज अनीशा जी टू से कि प्लीज स्लो मोड डाउन कर दो. नहीं यार, भाई आज पॉसिबल आज है नहीं तो होगा कर भाई. दो भाई. आज नहीं आई भाई. डिड. आज पता क्या है, आज इंडिया जीतने वाली है 2-0. तो आई थिंक आज चैट को फ्लो होने दो भाई. लेट्स गो. ठीक है भाई आई ट्राइड भाई अनीशा जी. By the way, chat, it is getting very, very intense. Knight on c4, d2 square control करते हैं. No pressure on d5. So black का ये weakness थोड़ा safe है. What a position. वहां से विदित पुश कर रहा है. साज, look at Vidit's position. यार 2 pawn push हो रहे हैं. I think it's almost winning. Yeah, I think Vidit is just completely winning. I think he's busted. Hmm. But Gukesh का अभी I'm not sure. Gukesh में गेम में अभी भी थोड़ी सी लाइफ बची है. Yeah, Vidit ka to I think is almost done, Chad. I think that will be the next game to finish and that will secure the victory for Team India. आखिरी ट्रैप है, उनको चेक शेक देंगे. अरे चेक शेक तो पुराने जमाने में बैंक भी दिया करते थे, लेकिन आज हम यूपीआई पे चल रहे हैं. तो चेक से डरना नहीं चाहिए, Chad. F6 खेलो and push the pawn. It should be over soon. Yep, that makes sense. That makes sense. This game is basically over. जिसको tilted कैमरा देख के पड़ते मतलब that's really funny. मतलब किसी ने मतलब किया होगा मतलब या तो you were trying to play really fast and वो कुछ हाथ वाथ लग गया होगा. So it's very funny actually. ऐसा लग रहा है मैं कोई मैच देख रहा हूँ लेकिन मुझे नींद आ रही है, तो मैं धीरे धीरे करके टिल्ट हो रहा हूँ. ऐसे भी लग रहा है मुझे. Come on, chat. 3.5 half चाहिए. We need 3.5 half. Let's go. 19 seconds of Vidit. He plays F6. Beautiful move. Come on. Chat, not to forget 3669 likes पे समोसा चैलेंज होगा. या मेंबरशिप, up to you. Whatever you want. वो हो सकता है. जल्दी से लाइक करो स्ट्रीम. एंड F6 के बाद रुक जी चेक पे. किंग हैज अ वेरी कंफर्टेबल स्क्वायर एंड वही है, 2 पॉन्स है तो कोई चेक नहीं है उसके बाद. आई कैन नेक्स्ट पुश G6 एंड इट्स जस्ट गेम ओवर. G6 F7 easy. वुमेन्स टीम हैज ऑलरेडी वन 3.55. भाई एक जमाने में डर लगा था पॉइंट 1.525 से हार जाएंगे, बट कम बैक किया दिव्या ने. तानिया आल्सो वन अ पीस एंड देन हरिका इवन हैड अ कमबैक. सो ब्यूटीफुल. दिव्या का गेम आई थिंक वाज द क्रेजीएस्ट. आई थिंक जो हुआ वहां पे शुरुआत में शी वाज विनिंग एंड देन शी वाज डेड लॉस एंड देन उसके एक चाल का ब्लंडर हुआ, फिर वो 0-0-0 हो गया, फिर उसके बाद शी मेड अनदर मिस्टेक, फिर शी हैड अनदर विनिंग पोजीशन एंड इट्स लाइक इतना अप एंड डाउन चल रहा था भाई. ब्रेक डांस कर रहा था भाई बाहर. या एंड chat, 2 games, 2 players, 2 legends, 2 candidate players. Such an important game. And he's going to soon, I think, I don't know if he'll give a check, push the king back. I think he should probably. Rook d3 check seems very logical there. Because chat, ye check aa rahi hai, and then you want the king to have this square maybe. So Sahil bhai, one more time, I just want to inform you कि जो आप analysis जो आप arrows दिखा रहे हो वो chat में नहीं दिख रहे हैं. We have a different scene. Yeah. On the board. Gukesh winning chat keh rahi hai. Chat, I mean, he's been winning for a while. Let's go, Gukesh bhai. Let's convert it. I'm not sure if this is winning though. Bhai, sure ho It's better for sure. I'm not sure if this is winning though. Sure हो जाओ ना. मैं बोलने वाला था I'm not gonna lie. फिर मैंने अपने आप को बंद कर, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया उस टाइम पे. Got it, Nidhi bhai. Got it. Chat, come on. I think Gukesh game में king is on c6. काफी 3 सेकंड विदित प्ले. भाई मैं डर गया था एक सिंगल यार. भाई विदु क्या हो गया भाई, नर्वस कर रहा है अपन को. थोड़ा लैग रहेगा आई थिंक. Oh, king c6. Yeah, this is. Yeah, I told you it might not be winning. कान नहीं हिलाया यार. I think we are banking on the players कि वो पीसी हिला लेंगे अच्छे से. लेकिन हिला सकते हैं कान. No worries. Okay, so he plays. Wait, rook h8. So white is activating his rook. So this is I've seen positions go ulta bhi, Saj bhai. Sometimes you never know. This rook g6 check.
but then maybe just king h2, I'm guessing. So white king, both kings could be okay. White king is clearly worse here. There's no doubt about it. Saji By the way, Gukesh Gukesh block सा बन गया. on 7 seconds. Gukesh on 5 seconds, 4 भाई seconds. चल गुकेश चल यार, ये ऐसे ऐसे नविया सा मत हो यार, प्लीज चल दिया कर टाइम पे. I think he played already, but वो update नहीं हुआ अभी तक. He played rook b1. That is with its board. I will also add. Nirvai, let's have the two board camera. I think that is awesome. I know we won't show the analysis, but I think that's awesome because this is important. Anytime anything could happen, और क्या ही analysis करेंगे भाई, seconds में खेल रहे players. Oof, such an important. I think Vidit's game is over. I think rook g6 f7 over. Vidit का time भी थोड़ा बढ़ गया. I think he's feeling really good probably. Yep. I think एक दो check देंगे शायद, वो rook c4 check आ सकता है पहले, but Red के time पे तो नहीं हार गया. अच्छा नहीं, 4 सेकंड पे खेला. ओके. कोई बंदा कह रहा है Prag drew. Glad to know कि Internet Explorer से भी लोग देख रहे हैं हमें. That's amazing. That's great, भाई. With it flawlessly just will put the rook on g7 on the camera. भाई आपको पता है इंडिया ने मोरक्को को भी हराया था फर्स्ट राउंड में. हाँ, जिसने भी लिखा है ये मैसेज, नहीं मैं वो जो अच्छा मैसेज अच्छा लिखा उनको बता रहा हूँ. गॉड तो इंडिया ने मोरक्को को भी हराया भाई. 4-0 से हराया हमने उनको. रुकेश चैट देखो, यहाँ मिस्टेक्स चलती रहेंगी. Just trust me on this. It's not easy to play in 30 seconds every single move, but दोनों players mistake कर सकते हैं. So do not worry even if the position goes to equal in the Gukesh game. I would not worry. पहला point क्या है हमारा, हमें मैच जीतना है. So let's have Vidit convert his game. That's step number 1. Once he does that, then उसके बाद Gukesh की game में जीतेंगे. That's a great bonus for us. Yeah, I think 3-1 is like minimum. That's what it looks like. Okay, rook c8 check, king d7, d6, b7, b6. So b6 of course not possible. Or maybe b7 can be possible. d7 is like, my instinct. Rook c5 आ रहा है, which I don't like so much. मेरे को भी He plays king to b7. Oh, rook c5. That's interesting. Rook c5 ही लग रहा है यार. और क्या खेलेगा यहाँ पे? Knight d5 with the idea of knight b5 next move. Oh, he activates the second rook, Sahaj. This is okay. I didn't want to see this. Bhai. अब अगर I think there is a forced perpetual incoming if he doesn't do anything about it immediately. Sahaj, the problem I feel is Gukesh will draw this. Yeah. This is the kind of position that can go wrong, horribly wrong for black also. You might miss something, because knight is joining on d5, rook b8 check, king c7, knight d5. I mean, of course, you would not blunder that, but he brings the knight. Knight is the king's best defender. So I think intuition pe khel ke, he has played knight d6 and the bar is going down in Gukesh's favor. Maybe this is a mistake. Yeah, because I think there is knight e4 check and rook f2 check, and I think you're winning something. But I can also play king g4, so I'm not sure why this is winning just yet. Firstly, the dono rooks pe attack hai. You have to play rook b8 check. That is forced. Yeah, king c6. Badhiya. Now there is no check on c8 anymore. Wow. Knight ने एकदम बढ़िया से उसको रोक के रखा हुआ है. And I think the rook is also attacked, so Gukesh will definitely gain a tempo in this position. Rook को move करेगा and black will get an extra move. This is amazing, chat. Gukesh showing some insane time trouble skills here. I mean, we saw him, make a mistake against Firouz and the candidates, but this is not that Gukesh. He's playing so well. By knight d6 was insane. I mean, that's not a move I even thought about, to be honest. Why? In that little time, I think, it's very impressive that he found it. Yes, that's for sure. And now he's completely winning. He's completely winning now. He's just pulling his shirt, he's completely ready. Yeah, he senses the victory. He's saying abao. And this is a great advertisement, a great statement towards Ding as well. I don't care. I might be in a time pressure. I'm still going to win this. And chat, for the stats nerds, it's -5 in Gukesh's favor now. Yeah, Vidit winning on the left, Gukesh winning on the right. Yep, 3.5 half incoming. भाई ऐसा ही रोज देखने को मिलेगा. Crazy, भाई, crazy. Let's just applaud the players also. Yeah, I mean, it's almost 6 hours that they're playing. 6 घंटे से ये लोग push कर रहे हैं to win.
And also, like, props to the Serbian team also for holding out for so long. Absolutely agree. And chat, I'll tell you one thing I noticed. Whenever Ukesh plays a move, the bar first jumps up in white's favor slightly, and then धीरे धीरे realize होता है अच्छा अच्छा, and then it goes down again. So his intuition is leading him the right way, even in time pressure. True. I feel like there is a blunder incoming by Ivic. Sorry, by Predke. Yeah. जो right side पे जो board है वहाँ पे I think there is a I think he will play knight d3 here. Sahaj, I think this is a great learning principle for people in the chat कि knight is the king's best defender. कभी भी king पे attack आए ना, if you can bring a knight close, it controls so many important squares. So keep this in mind. When under attack, bring the knight close. बिल्कुल 100% right भाई. Knight is the king's best defender. It's a king's best friend. Also, like, I think Gukesh game में 80 चालें हो चुकी हैं, guys. 80 moves. That is crazy. Yeah, this is amazing. Does he take on a3? I think he should. Yeah, there is nothing that I see. Does he take on a3? Knight e2. Why not just d4 here? Oh no, d4, knight d4 check. Sorry, my bad. This is how he loses. Knight d4 check, हाँ. But I think कोई check नहीं है ना, because king c5. There is no knight d3 anymore. There is no knight d3 anymore. King c5 looks pretty safe. By the way, look at Vidit's game. f7 आ चुका है. Nice. King f6 next, and he's उसका बस चले वो दोनों queen कर देगा. King c5, engine's first preference, played by Gukesh ji on the right. On the left, we are going to see the result in the next, I'm going to say, like 1 to 2 minutes, chat. Yeah, I think Vidit to जीत गया. King f6 now, and that's over. Bhai, this is amazing, Saj bhai. What a finish to round number 4 here. Oh, by the way, King c5 played. Yeah. Bhai, once both games are over, both, would love to see the standings agar ho, because I think we are going to see India on number 1 place yet again. अरे हम तो already number 1 पे थे यार after round 3. If we win this round, I think there is no one stopping us. Yeah. But the best thing is we will not see US there anymore. We will not see. अभी नहीं बनी, वो कैमरा लगा दो, बाद में देखेंगे. And Vidit Gujrathi has won the match. Vidit, crushes his opponent here in the opposite color bishop endgame. A beautiful victory. We will see the handshake soon. Let's keep this scene for now because Gukesh की भी चल रही है. And Jesse handshake आएगा. Let's go full screen on Gukesh's board. Niri bhai, this is an amazing result for Vidit. A beautiful conversion. Endgame में time pressure में squeeze किया है. Great victory, Saj bhai. Great. I mean, I think opposite color bishop, he just positionally squeezed him out with that extra pawn, got that king out, all the way to f6. I mean, it was a beautiful win. Yeah. I think to be honest, that those positions are always, theoretically defendable, but again, जब Vidit के जैसा level हो आपका, to squeeze your opponent, then you virtually have no chance. Absolutely agreed, Saj bhai. And यहाँ पे दिख रहा है हमें कैसे, मतलब यार, this is so good, man, so good. It feels so nice to see this. Let's hope so कि यार ऐसे ही चलता रहे बस. And this is just amazing. Oh, look at this. Rook c6 played in Gukesh's game. Oh, ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ? मेरा बोर्ड बंद हो गया था इसके लिए. अच्छा सीन वो था. Oh, snap लिखा हुआ था मेरे उस पे. Oh, by the way, Rakesh bhai just texted me that he has boarded his plane, bhai. So he's on his way here. Amazing. And Vidit Gujrathi has won the match. That gives India the victory in the open section. Nidhi bhai, let's go full screen on the Gukesh game because that's the final game remaining now. Congrats to Vidit for an epic victory, and he'll be back tomorrow as Gukesh is also in a -10 evaluation. Let's go. Bhai, crazy. 3.5, yeah? Easy. No, not easy, but yeah, still. It looks easy. It looks easy, bhai. It does look easy. Right? They made he makes it look easy. At the end, it looks easy, but during the process, it was not easy. Just like most good things in life. Yeah, I think Gukesh just looked at Vidit's board and he sees that
Vidit has won. By the way, this means that doesn't matter what happens in Gukesh's game. India has already won this match. Yes, but the best part is US lost, Uzbekistan lost, China won 2.5 say. So all the top teams barely scraped through or just lost. And India is saying, भाई तुम लोग दाल चावल खा रहे हो भाई यहाँ पे तो भाई बिरयानी वाला हाँ it's like India is saying bring the next, come on. And Gukesh D has also won his game. He is going to play King C4, my bold prediction, and Predke Alexander is going to resign the game. And that would give India a Sahil victory. हाँ साहिल भाई एक बार टाइम भी प्रेडिक्ट कर दो ना. टाइम आई थिंक आपका है, टाइम मेरा वो नहीं है, इट्स आउट ऑफ माय स्कोप. He will play 35 seconds. There we go. Done, bhai. And Sahaj bhai, you know what that means? What does this mean? 3.5 half. There we go. There it is. Gukesh D wins, and unki aankhein badi hui. He knew this was not easy. This was a tough match, and Gukesh D has won another game for Team India, and he finishes off with a perfect score for himself and a great score for Team India. 3.5 half. India is really crushing at the Olympiad, and with this win, Chad, do you know what just happened? What happened? Can you guess, Sahaj bhai? Chad, can you guess what just happened? Take a guess, Chad. क्या हुआ इस victory के बाद additional crazy? Take a guess. Gukesh is world number 5. Yes, he is world number 5 behind Erigaisi Yes. Arjun with the rating of 2772.7. So it is Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Erigaisi Arjun, and Gukesh D. So chat, this is looking like a great Olympiad for Team India. A 21-year-old sitting in world number 4, an 18-year-old sitting at world number 5. They both are moving towards the 2800 mark. And knowing that Gukesh is going to play these players like Carlsen, Ding, he also has a chance to potentially get very, very close to the 2800 mark. अगर 8 बाइट कर लेगा तो 2800 हो जाएगा भाई. You know, anything can happen, and that's a great victory for Team India. And look at Gukesh adjusting every single piece, signing the score sheet, being very calm with whatever he does. There is no hurriedness. I mean, I would rush out the playing hall. I have just won a crazy game. Do you think he's calm, or is he just exhausted? No, I think he's calm. उसने बोला ना, he said like he is अंदर से nervous, but he doesn't show it somehow. Like he has immense self-control. True. And we saw that in this match. He had basically the whole game in his control. He was a pawn up after like the first 2 hours, but he kept grinding on. He kept grinding for like, it's almost 6-hour win, 80 plus moves. What a game! What a game! And chat, यार निरी भाई, एक बार रिजल्ट सारे दिखा दो ताकि अब मजा आएगा देखने में कि टॉप टीम्स के साथ क्या हुआ. जस्ट टू पॉइंट आउट 16 टीम थी. सो टॉप 8 बोर्ड्स पे ही वी हैड टीम्स जो परफेक्ट स्कोर पे थी. समझ रहे हो? सो वो सारे स्कोर्स हमें दिख जाएंगे. एंड देयर यू हैव इट. लुक एट द टीम्स हु हैव क्वालिफाइड एंड किनसे हमारा मैच कल हो सकता है. One is Ukraine, Sahaj bhai. Second is Hungary. Third is China. Fourth is Vietnam. Fifth is Poland. Sixth is Azerbaijan. Seventh is Spain. Eighth, I think we are already out. I think Norway नहीं है वो team. Norway is, I think Spain हो सकती है. I think Spain हो सकती है. हाँ, Spain हो सकती है. So Spain, Azerbaijan, Poland, Vietnam, Armenia. हाँ, ये है. Thank you. Perfect, bhai. Perfect. So these are the teams, chat. ये है tied first place में. Sahaj, based on the standings, is seed? Standing फिर से लगाना. I think we can predict the match here. Chad, we can tell you the pairing right now. Fourth round का update नहीं हो रहा. अच्छा, fourth round update नहीं हुआ. Got it. ठीक है. So based on this, chat, I think it's going to be some team like, Azerbaijan could be the team. It could be Poland as well. So Azerbaijan or Poland is the likely pairing. And it's not going to be easy. But the best part, Sahaj bhai, हमारा 3.5 half है. ठीक है? कहाँ के हमारा score भाई? I can't see our score. हाँ, there it is. और सिर्फ स्पेन का ही है. बाकी no other team has that score. So India is really cruising right now.
Absolutely. And also, I mean, we did it against Serbia. I mean, unki average rating was 2650. I mean, think about it. हाँ, That is हाँ, crazy. That is absolutely. I mean, Spain ki average rating उससे कम है. yeah, yeah. The team we just beat Spain की average rating उससे कम है. That is crazy. And chat, बहुत मजा आने वाला है कल से the stakes are going to be higher. Maybe we won't face US or China tomorrow. I think that is US तो हार चुकी है. And I mean, what a shocking loss for the United States, Sahaj bhai there. Yeah. I mean, I think today was full of surprises. Yeah, US losing. I mean, उसके बाद I think it was Uzbekistan that I mean the defending champions losing 3-1 against Vietnam. Wow. That is a big upset. Yeah. So I mean, I think there is still a lot of chess to be played. I mean, there is also a sign कि हमें कुछ भी for granted नहीं लेना चाहिए because anything can happen on any day. But for now, I think we are doing perfectly. यार सिर्फ एक ही draw हुआ है. Actually, 2 draws हुए हैं पूरे tournament में total. That is insane. निधि भाई, can we have the same stats for the women's section as well? एक बार अगर हम देख पाए, अगर है हमारे पास, तो would love to see that as well because आज women's team ने जो comeback किया है, it was really inspiring. I think Divya's game was just maybe it was like the comeback of the tournament so far for me personally. Yeah, for sure. It was very toxic of you. मतलब वो बार ही just break dance कर रहा था वहाँ पे. Like पूरे game में like +5-0-0, +5-0-0. Yeah, and chat, there you see it, 3.5 half crushing score. Hungary also winning that score. China 4-0 से जीती है. बाप रे, China की B team, मतलब they are not fielded the top 4 players and still they are cruising. Then we have, Netherlands losing to United States, who's a strong team. We have Ukraine, Turkey drawing. So chat, कल इंडिया का वुमेन सेक्शन का मैच भी बहुत बहुत टफ होने वाला है. And Sahaj, one last question, maybe we can have the board and Sahaj and me on the scene nearby. Do you think India's women team and India's open team will have any changes tomorrow? I think मेरे हिसाब से दोनों होंगे. I think there will be a change in both because already 4 rounds have passed and I mean there are a bunch of players who have played 4 rounds. So I mean there is that we are still humans, you get tired. I mean you saw Gukesh play a 6-hour match today. Yesterday also we saw Prag play such a long game. I'm pretty sure the players are exhausted, so I think it's possible that they might take a break, but then again it depends on the captain and it depends on how the players feel, but we'll see what happens. But which player, Sahaj bhai? That's the main question. किसको आप रेस्ट दोगे? वो दोनों में. What I think is that Hari जरूर खेलेगा. What I think is Hari जरूर खेलेगा. I don't know कौन break लेगा. That I can't tell you. In the women's section, I feel maybe Divya deserves a break because this was so intense. I mean, I think maybe But Divya has also scored 3 out of 3. She hasn't drawn a single game, I think, if I'm not mistaken. So 3 out of 3 के बाद आप किसी को rest थोड़ी ना दोगे. Especially अगर after such a game, of course, the player is feeling कि भाई मैंने, of course, it didn't go her way, but she fought her way, to the win. But I'm not sure, yeah. But good thing is we don't have to think about these things. Yeah? Also, the captains can decide that for us. Because Divya is like higher rated, so I think Tania and Vantika might shuffle a lot now. We might not see Divya take a rest. That's also one angle. And open section, mein, if you had to give somebody a rest, let's forget the opponents now because we are not playing the US now. We're not playing Norway. There's no particular angle for a particular player, very likely. So which player would you rest? Because I think Gukesh has 1 round rest and so has Prag. They've rested for 1 round. So Arjun, or you don't want to stop Arjun, right? In this momentum. Arjun को मैं कभी stop. Arjun तो हर 11 में 11 भाई, 11 में 11 खेल. तो 2800 करके रखेगा. When the Olympiad finishes, he's going to be 2800. Yeah. No, I think probably, I mean, maybe Vidit. I'm not sure. But also Vidit just had such a spectacular game. सभी इतना बढ़िया खेल रहे हैं, I'm not sure. Also, if you think about it, Vidit will play black tomorrow. आज उसके white थे ना. Board 4 पे वो black खेलेगा. तो maybe it's possible कि ऊपर के बोर्ड को किसी को रेस्ट दिया जाए ताकि Vidit can come on white pieces on board 3 and then उसके बाद Hari can play with black pieces on board 4. That's also possible. Yeah, that's also an interesting strategy. I personally, if I'm going to rest somebody, it might be Vidit and then Harikrishna comes in for a round because I don't want Arjun to stop by. He's in that flow jahan pe it's just he's just crushing everyone. You just continue in that flow. And Vidit, of course, he might want to play. He had a fantastic game today. But if I had to rest somebody, I would probably choose Vidit there. So chat में spam कर दो. If you had to rest somebody, who would that be? Gukesh, Prag, Vidit, या फिर Arjun? And इसके साथ ही Sahaj bhai, I think it's time to say goodbye today. Day 4 was full of action,
full of drama. And kal, it's only going to get more exciting. And parso to we are almost guaranteed to face like, some super like 27 like level team. Like it's insane. Like US or maybe Ukraine Yeah. even, or like China. one of the top teams. China even. China One is of the still, top on teams. full points. China is still on full points. Hungary is still on full points. So it's not like कि US हारी है, Nordic हारी है, तो it doesn't mean कि बाकी teams नहीं है. They're still, बिल्कुल. yeah. There's still a lot. As you said, Olympiad में हर match के बाद, it just becomes more and more difficult. So yeah. And chat, for some reason हमारे कैमरा मुझे अटके हुए दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया. अटक चुके मेरे तो हैं. ठीक है. अच्छा मेरे अटके थे. But anyways, ठीक है chat. That's it, and we are going to see you tomorrow same time 6:15 6:20 करीब 5 मिनट ऊपर नीचे होता है तो भाई OBS में लगता है तो वो हैंडल कर लेना दिल पे रख के. We'll see you tomorrow. Thank you Saj भाई, thank you Rakesh भाई, and कल राकेश भाई साज भाई एक ही जगह होंगे तो डिस्कनेक्ट होंगे तो नीरी भाई let's have the one commentator scene also ready tomorrow. अगर दोनों साथ में डिस्कनेक्ट हो गए तो. And the 2 camera scene was amazing bhai. See you soon tomorrow chat. Take care, keep smiling. Good night. Let's hope India crushes. What's the best way to follow any chess event, from the World Chess Championship to the candidates, the Speed Chess Championship, Title Tuesday, and so much more? Chess.com/events has all of the top chess tournaments played both over the board and online. Analyze and review games from the world's greatest players with live commentary, cloud analysis, opening explorer, and table bases. Find all the key event information, including schedules, prizes, results, news reports, player bios, tie breaks, and more. Even compete by voting for your predicted results. Explore chess.com/events today on web or with our iOS and Android apps and experience chess like never before.